on record. skill creation and employment opportunities that these capex initiatives have generated in coal production regions like Telangana, particularly in enhancing local economic growth and supporting community well-being. I am respecting him more than what you are. Don't try to teach the share. Don't try to teach the share. I know I am respecting him more than what you are respecting. I am always respecting him. Yes, sir. Please, Honorable Minister. Sir, capital expenditure at any given point of time in any particular sector, including the country overall, is a very good indicator of the kind of progress that is being made. Sir, I would like to reiterate what the honourable member has said insofar as the coal sector is concerned. Sir, the capital expenditure incurred by the three public sector coal units. No, I will not allow you. I am not allowing you. Year on year, they have always succeeded in exceeding their targets. And last year, sir, it was 140% more than the targeted amount. Nothing should go on record. Nothing should go on record except the minister's answer. Sir, the issue today is that apart from the 31,000 crores of capital expenditure that has been incurred in fiscal year 24-25, we should see that it has gone up from 2020-21 when it was 17,500 crores. It has gone to 31,500 crores in these 2 years. Sir, in addition, the country has witnessed record production of coal. It has crossed 1 billion tons of coal production for the last time, and it has gone up from something like 500 million tons to over 1,000 million tons, sir. This has resulted in reduction of imports. Sir, apart from the capital expenditure incurred by the PSUs in the coal sector, I would also like to add that the budget which was presented by the Honourable Finance Minister indicated a massive increase in capital expenditure for the country overall. Sir, in 2014, the country's budget provided for something like 2 lakh crores by way of capital expenditure. Last year, sir, it had gone up to 11 lakh crores. And some people like me used to wonder, will we be able to absorb and spend 11 lakh crores? So this year, the capital expenditure has gone up by to 12 lakh crores. Add to that, sir, what is made available to the states through the Finance Commission, and you will see that's another 4 lakh 50,000 crores. It's something like 17 lakh crores. Then you add the sectoral capex by the PSUs. You have 30,000, 31,000 crores by the coal PSUs. Sir, in my own sector, the oil sector, the OMCs, our PSUs are called oil marketing companies. You should also maintain the discipline 1 lakh, in the house, then I am allowing anything. You don't have that 1 lakh discipline. 20 crore by way of capital. So it's a massive amount of capital expenditure which is being incurred in the country. Sir, this sustained overachievement from targets, despite coal sector being marred with various bottlenecks, makes the coal sector PSUs amongst the top performing PSUs in the country. Sir, insofar as the state of Telangana is concerned, as my honourable members are, one of the companies there, which is a PSU, is incurring at an annual 1,600 crores a year by way of You please go back to your seats. capital expenditure. This results in both direct and indirect employment. In fact, some various sums have been done. No, please, kindly go back to your seats. Continue. Honourable Minister, you please continue. Sir, whenever capital expenditure is incurred, no matter in which sector, infrastructure is built, modernization takes place, jobs are created directly and indirectly. In the case of the facility in Telangana, sir, I think if I remember correctly, they are employing 42,000 people directly and another 16,000 or so by way of contract workers. So it is direct and indirect employment. Sir, in capital expenditure, you used cement, steel, so the production goes up, employment there goes up. All in all, I can say, sir, that overall in the country,
you can see, apart from the central government's allocation of capital expenditure, which has gone up to 12.2 lakh crores, what is going to the states through the Finance Commission, another 4.5 lakh crores. What is being done by the companies in the coal sector, sir, 31,000 crores. And I would also like to add, sir, 18% of the coal production in the country is in the private sector. They are also incurring capex. So it's a situation in which the capital expenditure is contributing to the overall economic activity in the state, in the country also overall. And this has resulted in mining expansion and mechanization, first mile connectivity, railway sidings and logistics, thermal power capacity, renewable energy and coal gasification, and what is most important in a sector like coal, sir, it also helps in employee welfare and infrastructure, sir. Second supplementary, Dr. K. Lakshmanji. Sir, my second supplementary is very specific and pertinent, sir. Whether the investment in renewable energy by coal PSUs indicate a structured transition strategy rather than ad hoc diversification. No. Sir, Nobody can force the chair. Nobody has the right to force the chair. Sir, I think that's a very relevant question which the honourable member has asked, and I think the answer is also very clear, sir. In a sector like coal, Nothing will go on record except the minister's answer. sir, in a sector like coal, one has to ensure both safety, the cleaning of the current processes, and then also last mile connectivity, and also then transition, sir. And I think it's a very relevant question is asked, sir. In the diversification into renewable energy, the coal PSUs have already installed about 2 gigawatts of renewable energy capacity and have a strong pipeline of about 22 gigawatts across solar, wind, hybrid and solar projects. The NLCIL, Neyveli Lignite, leads with 1.6 gigawatts installed renewable capacity, over 2 gigawatts under implementation, and a long-term plan of 10 gigawatts by 2030. Also, sir, NLCIL, that's in Neyveli Lignite, CIL, is the first central PSU to cross 1 gigawatt and has achieved net zero. Also, sir, the same company is developing a 250 megawatt or 500 megawatt edge battery energy storage system. Sir, I could go on giving the contribution that the coal sector companies are doing for energy diversification. But I think this is captured and it is leading to transition. But clearly, sir, in a country which is on the move, if you look at the sustainability transition, sir, when the Honorable Prime Minister assumed responsibility in May 2014, we were only blending 1.4% of biofuels. Today, it has come to 20% biofuels. If you look at the area of green hydrogen, sir, we have a target of 5 million 5 million tons by 2030, and I believe even that will be met. So the question that the honourable member has asked and the details I have given about the green energy, or rather this diversification into renewable energy, these are all very valid. I personally feel, sir, there was a debate when you said close down coal, close down fossil fuel. There was an international thing that, you know, we should move straight to renewable energies. But, sir, to move from the current situation to renewable energy, which must be available. And I have seen global estimates, sir, whether it's in the International Energy Agency or the BP Outlook. They say that our coal demand is going to increase in the next few years. In fact, it's saying by 2030 or so, it should go up by 17%. So while simultaneously we are cleaning the processes in coal, simultaneously whilst we are producing more, saving foreign exchange, we are also doing green energy movement into solar energy. There is also a lot of work being done on coal gasification, coal bed methane, and the other areas. I thank you, sir. Third supplementary, Dr. Lakshmikant Vajpayee ji. माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस ऑफ द कोल PSUs ओवर रिसेंट ईयर एंड हाउ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल स्टैंड्स इन द कंपैरिजन ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज in terms of capex achievements? Honorable Minister. Sir, insofar as the coal ministry is concerned, sir, with all humility, I say that I'm standing in for my colleague,
Shri Kishan Reddy ji, who couldn't be here today, I want to pay him a compliment that in relation to the other ministries, the coal ministry has done very well. It has incurred 31,500 crores of capital expenditure, very good. But sir, with all modesty at my command, the coal sector is very different from others. So I should not compare that with the capital expenditure which my ministry, petroleum and natural gas, the ministry with which I am associated, ours is higher. It's about 4 times, 1,20,000. But sir, our operations are much larger. And I think it's very creditable for the coal ministry to have 31,000 crores as capital expenditure, and it is visible. It is visible in the last mile connectivity. It is visible in the railway processing. It is visible in the solar energy transition that they're making. Their companies. There are only 3 companies, sir, as far as I know, and all 3 of them are doing very well on capital expenditure. And to answer my colleague, the honourable member, they are doing very well in comparison to other public sector companies which are under different ministries. Yeah. 4th supplementary, Sriman Brijlal ji. Thank you, Chairman, sir. My question from Honorable Minister, whether the investment in renewable energy by coal PSUs indicate a structured transition strategy rather than an ad hoc diversification. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, it is a structured strategy. What invariably happens, sir, is that all PSUs, the ones I am familiar with, which are dealing with the energy sector, they declare a date for net zero. The companies with which I am more familiar, like the oil marketing companies, they have about a net zero target by 2040 or 2045. So when you adopt a strategy, it has to lead in that direction. That you start a process now. Now I know in the coal sector, some of those net zero targets are a little closer. They are in 2030. So if you look at the overall figures, they may appear small now. But sir, if you look at the solar energy supply chain, it also is very cumbersome. So I am very confident. One, I can be very sure it is a consciously thought through strategy. It's not something that is done ad hoc. If there is a strategy to become net zero by a particular year. 2070 power. No, 2070 is a national target. My senior colleague Manohar ji has just reminded me, totally correct. Sir, we set a national target of net zero by 2070. When the Honourable Prime Minister went to Glasgow, I think, at around that time when we took the 5 commitments, 2070 people said it's too far. No, for a country like India, which has great developmental challenges and which has been traditionally dependent on different fossil fuels, etc. So when I was associated with the Petroleum and Natural Gas Ministry, our daily consumption of crude oil was 5 million barrels a day. Today it is 5.6 million barrels. As we go forward, it will go up to 6 and 6.5 million barrels. Similarly, therefore, our companies, if they declare 2040, ONGC, IOCL, etc., it's a very bold target. Including in the coal sector, they are very bold targets. It may appear that the start is a little slow, but it's a structured strategy. And as we go along and clear the cobwebs, these diversification or movement into clean energy will be cleaned up. They have always, all of them, have been very consciously, whether even if a company is located in Telangana, it's not that it is doing capex in Telangana and providing jobs, 1,600 crores, but this company is also doing solar projects in the rest of the country. Thank you, sir. 5th supplementary, Ms. Dolasan ji. Thank you, Chairman, sir, for giving me chance. Sir, through you, I want to communicate the Union Government Treasury Bench that coal is our national asset, but they are trying to disinvest and privatize badly this coal sector and the coal PSUs by any means according to their policy decision. I want to ask that whether it's Atmanirbharata at all, where our national assets are being sold to corporates and the foreign companies even, and it's affecting the nationalized coal industry and coal PSUs and the workers as well. How much capital expenditure and clean energy investments you do for coal PSUs, that doesn't matter. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, I am very
intrigued when I have a question which is both a question and then there is an answer in the tail, which says how much capital expenditure you do, it doesn't matter. But there are some other aspects to which my honorable colleague and friend has referred to, that national assets are being sold to corporate this thing. No, 1 minute, let's slow down. If there are 3 PSUs, one is called Coal India Limited, the other one is Singaneri, Collieries and Coal and Colliers, the third one is Neyveli Lignite. Are these foreign corporate assets? So these are owned by our own people. And they are the people who are doing this thing. They are the ones who are doing this thing. Insofar as the coal sector is concerned, I must say, my little education in the last 2 days, it's not just the coal PSUs which are doing this thing. There are also private sector people who are running. There are about 86 private projects which are going. And I am not aware, sir, in my long history, 9th year in the Honorable Prime Minister's team, or 39 years as a civil servant, I don't recall of any privatization of the coal PSUs. So I don't know what the Honorable Member is talking about, that we are selling the assets of the coal PSUs to corporate interests or to this thing. Yes, a little bit of illegal mining, not little, quite a lot of illegal mining takes place. That is in spite of us. That is, people go elsewhere. But now land is a state subject, sir. But because of the inherently dangerous nature of coal mining, which is below ground, etc., a center's clearance is required. So I want to categorically state, the central government has not, and I say it categorically with my limited knowledge of the sector, we have not sold any assets to corporate entities. I don't recall, I don't think there's ever been a privatization of coal PSUs, etc. And the 3 of them, CIL and LCL, etc., they have all been working and their capital expenditure targets have gone up. So in one case, last year it has gone up by 140% over the existing target, and I also gave the figures in reply to an earlier supplementary, how it has increased from 22, 23, etc. So I think it's a happy story in the coal sector. Yes, we should do away. I mean, she referred to coal as a national asset. Well, if you're an environmentalist, you should say, by slowly use your coal, produce more, which we are doing. We are importing less. We are saving 60,000 crores, I think, on foreign exchange because of lessening of imports. And today we are in the happy situation. We are also making the transition to solar energy and other cleaner energy, sir. Now question number 92, Shriman Rajendra Gupta ji. Not present. The third supplementary, Dr. Ajit Kopchade ji. ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आम नागरिकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत होने के वाले उतार चढ़ाव से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ठोस और राष्ट्रहित में निर्णय ले रही है। मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने भविष्य में सरकार कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार की तरह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे LPG कहते हैं, उसके लिए रणनीतिक या बफर भंडारण की व्यवस्था विकसित करने का कोई निर्णय लिया है और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? यदि हाँ, तो आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए माननीय मंत्री जी और मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कौन-कौन से ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाए जा रहे हैं? Honorable Minister. Sir, this specific question, start question priority 2, is on the issue of our strategic petroleum reserves. Sir, for any country, and particularly a large country like India, and a country which is growing at a phenomenal pace, the economic growth, one quarter it was 8.2%, sir, previous quarter it was 7.8%, and according to the IMF, which has enhanced our expected rate of economic growth from 6.6 to 7.3%, the country must have a very viable and secure reserve so that in the case of global turbulence, etc., we should not be found in a vulnerable situation.
Fortunately, sir, India has a vast coastline, both on the west and the east. We have several refineries on the west coast, sir, starting with Nayara, RIL in Jamnagar, Mumbai. We have Mangalore, we have Kochi on the western coast. We have Chennai, Tatipaka, Vizag, Paradeep, Baroni, Haldia on the eastern coast. Sir, according to the International Energy Agency, and I'm only mentioning the vast coastline and all this thing, because today we are the world's third largest consumer of crude oil. We have the world's fourth largest reserve refining capacity, currently around 260 million metric tons per annum, going on to 320 million metric tons per annum. And we are also the world's fifth largest exporter of petroleum product. Now, the strategic petroleum reserve is designed to ensure that in case of total global turbulence, in case supplies cannot reach either from the western coast or the eastern coast, we must have enough stock left in order to meet that. Now, fortunately for India, sir, we are also a domestic producer. When I say we are the fifth largest exporter, God forbid, if there was to be an eventuality where no supplies are reaching, we would obviously not then export. We would also utilize our domestic consumption for our domestic production for domestic consumption. So the International Energy Agency stipulates that there should be about 90 days of holding as a strategic petroleum reserve. But I also want to point out, sir, these are estimates largely relevant. I'm choosing my words carefully. I'm not saying they are not relevant for others. 90 days largely relevant for OECD countries, also smaller OECD countries. You know, when there was a global crisis and there was total volatility, the IEA, International Energy Agency based in Paris, it stipulated that countries which had large reserves, they should release some in order to stabilize the global price. So which are the countries which release stocks in differing quantities from their stocks? One was the United States, the other was India, and third was China, and the fourth, I think if I recall correctly, was Japan. So we are in the happy situation that we were able to rise to the situation. Today, sir, we calculate our reserves, not only what is in the caverns, and these are in 3 places. I can't go into precise details, although some people speculate. They are in the states of Andhra Pradesh, in the state of Karnataka, and the third one we are hoping to get started, sir, in Odisha soon. Together, if you look at the reserves in the caverns and what is held by us in our refineries and what is on floating platforms at our ports, together and our products, it comes to 74 days. Ideally, it should be 90, but I feel at least as the line minister safe with something like 74 days, and going forward, we can even consider raising it. The honorable member also raised the issue of price volatility. So this particular question relates to the period 2015 to 2022. So that period between 2015 and 22 is the pre-COVID period. And it also covers the COVID period and till 2022, when COVID was mercifully on its way out. Sir, we filled the current stock at that time, at 2015 to 22, at prices, which I may say, because normally we don't discuss the price at which we buy oil, at roughly 50% of the prevailing price today, which is very creditable. Because you bought it at 50% of the correct price. Now, you would be making a mistake if you were to buy crude at a price and then, it drops, and then you'd say, well, you've made a mistake. You should have waited to buy. So there is always a balance involved. I'm very happy to inform this House through you, sir, that we have been able to weather the international turbulence thanks to the far-sighted and visionary policies of the Honorable Prime Minister. We have been able to ensure availability, affordability, and sustainability, the trilemma of energy. And today, whether it is a question of biofuels, a reference was made in the question also to liquefied petroleum gas, our production is going up. We are also signing international arrangements. When the president of the UAE was here recently, sir, we signed another deal with them. We are importing about, I think, $9 billion worth of natural gas from them. We are also importing from Qatar, from
other countries. Also, sir, we have a situation on petroleum gas, liquefied petroleum gas, which is a cylinder gas, which is a product of a refinery. We also signed an agreement with the United States, sir, for buying 10% of our requirements from there. So overall, sir, the strategic petroleum reserve is a very important component in our economic security. And economic security means that a democratically elected government and the Prime Minister feels particularly responsible to the common man, the Aam Aadmi, that the prices should be at lowest level, and they are lower today than in many parts, most parts of the world. In fact, cooking gas has been supplied, I got the note in hand, cooking gas, which is in cylinders, sir, there was, in 2014, we had 14 crore connection. And if 1 crore connection is for a family, it's gone up to 33 lakh connection. And if there are 4 people in a family, we've virtually saturated the country. In addition to that, that is being supplied to Ujjwala beneficiaries, sir, for as little as 5 rupees in a day. And if the beneficiary is not an Ujjwala beneficiary, but a non-beneficiary, he or she is also getting it in his or her kitchen for as little as 13, 14 rupees per day. This is a very reasonable price. Our oil marketing companies incurred a loss in doing that, but we compensated them, and with God's grace, sir, they're all doing well. So all in all, sir, this is a very important component of our energy security, strategic petroleum reserve, and it has worked very well. The 74 days of stockholding we do, sir, we just don't keep it there. 50% of it is also available for trading. And if there were to be a requirement, Government of India would have the first claim on it. But because if you keep too much of stuff in your godown or basement, then it seems unproductive. But we use 50% of this also to supply the country's needs and for trading. Thank you, sir. Next supplementary, Shriman Mastan Rao Yadav Bidaji. Sir, thank you for giving me opportunity to raise a supplementary question, sir. Sir, the recent discovery of natural gas reserves in Andaman offshore area has therefore generated expectation of strengthening domestic production. In this context, I would like to ask the Honourable Minister through you, sir, whether any timeline has been set for the full appraisal of these reserves and be brought into production so that the development process can be commenced with the aim of reducing import dependence from other countries, sir. Thank you, sir. Honourable Minister. The Honourable Member for asking this question. Whenever a petroleum natural gas minister appears for an examination, he is hoping this is a question which is asked, because it also provides us an opportunity. But before I go to the Andaman Nicobar Islands discoveries or the Krishna Godavari bases or Mumbai High, I just want to make a few comments by way of an introduction. Sir, petroleum and natural gas exploration and production is by definition a long-term process. It has a big gestation period and it is heavily capital intensive. In the years between 2006 and 16, sir, when another government was in office, no work was done on exploration and production, sir. We were in the unhappy situation that people used to give us pious homilies and preach, why do you want to do E&P? There is enough gas and oil available in the global market. It's cheaper to buy. Sir, I don't like to use language like this, but it is very, very clear that these were people representing some other interest. They did not have the national interest at heart. So when Modi ji, the Honorable Prime Minister, assumed responsibility in the year 2014, he changed it, and from 2016, the dead decade came to an end and we started changing our policy. We went from production sharing agreements to revenue sharing agreements. And to give the Honorable Member an example, sir, in Guyana, which is one of the biggest finds of oil and gas in the world, they dug 46 wells, each one costing more than 100 million, 1,000 crores. It was on the 47th well that they found it. And lo, then the history changes. So insofar as the Andaman and Nicobar area is concerned, I just want to say the geographical location is such, it comes from Indonesia, right where Myanmar is, and then comes down. We have dug 3 or 4 wells there. Each time we have dug, we have found oil or gas. And we have sent it for seismic. So we have to go on doing this. Because we did
17 kilometers to the west of the Andaman Islands, we found oil and gas. We did 18 kilometers to the east, we found oil and gas. But the trick, or rather the challenge, is to find where the vertical linkages are so that you can find the point at which you get the maximum economic results. Sir, this is all very expensive process, but I can share with you that the Prime Minister launched, it's well known, the Samudra Manthan program, which was announced by him, and deep water spells spudded in ANN Islands by ONGC and OIL. All of them have been successful, except that we need to do more to find out where a really big this thing, because it's very high cost. And if you spend a lot of money and go into one spot, you will find you spent the money, maybe the economics are not worth it. But its area is rich, and once we find that, in fact, my ministry did a review, a presentation before the Honorable Prime Minister, not only because of the Samudra Manthan program announced by him, but his instructions to us are very clear. This is a national interest. Go ahead. 125 kuweh khodiye. And go ahead every year. So we are going to increase the number of things, no matter what the cost, thanks to the Samudra Manthan and the budgetary outlays and our own oil marketing companies, those which are in the upstream, they will also put their resources. It is very positive, except that every time they do something, they have to report it to the Directorate General of Hydrocarbon and also to the stock market, etc. This is a process which will go on. Meanwhile, we are doing well in the Krishna-Godavari basin, sir. I think the gas per day has gone up to 55,000 55,000 barrels of oil. Gas has also gone up. Bombay High, where there's a rejuvenation of the ONGC earlier facility, which was I think 1976 or so. There also BP is trying to revive it, and they're also very positive. So it's a positive outlook scenario in total terms, sir. Fifth supplementary, Shriman Mayank Nayak ji. थैंक यू चेयरमैन सर। सर, ये पेट्रोलियम भंडारों का जो प्रश्न है उसको साथ में मेहसाना गुजरात में ओएनजीसी में पिछले कई सालों से ऑनशोर पे सबसे ज़्यादा ऑयल निकालने वाला क्षेत्र है। पूरे उत्तरी गुजरात में मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर, साबरकांठा, ये सभी जिलों में सबसे ज़्यादा ऑयल क्रूड निकलता है। मेरा माननीय मंत्री से पूछना है, क्या सरकार द्वारा उसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री, कोई रिफाइनरी लगा के वहाँ के लोगों का रोजगारी मिले? ऑयल वहाँ से पाइपलाइनों के द्वारा दूसरी जगह पे रिफाइनरी में जाती है, तो वहीं डाल के जो जाने का खर्च है वो भी सरकार का बच सके, और उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लेवल में पिछड़े हुए पाटन, बनासकांठा वगैरह में, तो वहाँ ऐसी इंडस्ट्री और रिफाइनरी डालने का माननीय मंत्रालय का कोई विचार या सोच है, वो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। Sir, I have a map of It's not India. belong to you or our party. Sir, I have a map of India. Sen is not belong to your party. No, please. Please, Sir, I this is have only 3 supplementaries. Sir, I have a map of India in front of me, which shows all the refineries, sir, from Bathinda, Panipat, Mathura in the north, Rajasthan, Barmer, which is coming up. It has several in Gujarat and West India. And the Gujarat refinery, sir, if I may say, Nayara is what, 20 million metric tons per annum. The Reliance in Jamnagar, one of them is 35 million metric tons, and another one is 33. Then you go to Mangalore, Kochi, Chennai, Trivandrum, all over the country. Sir, a refinery by its very definition is a very big capital investment. We already have 260 million metric tons per annum. Now, if I were the member from Mehsana as my friend, I would also want it in my constituency. But if there are several refineries in the area, we can't multiply. Now, if I were to look at the current map, it's very evenly distributed. And the capacity of these refineries, sir, is going up to 320 million metric tons per annum in any case, through the autonomous processes which are there. And the kind of plans that I hear from our industry,
they in fact show that it will go up to 400 million metric tons per annum or even higher. Sir, in a few years' time, the global scenario will be characterized by only 3 or 4 countries which will have such refineries. India is already the world's 4th largest refiner, and I think going ahead, I see these small teapot, I shouldn't call them tin pot, teapot refineries in different countries, they will no longer be viable. So India will be. But that doesn't mean, sir, that we have to proliferate them, too many in one area. So I deeply respect the sentiment of an MP who says there is oil here, therefore. Well, oil can be extracted and processed in a refinery nearby. So my humble submission is, sir, I don't think that area lends itself for another refinery now, because we've already got several in the area in Gujarat, and if you go to Western India, Mumbai, etc., we are there also. So I think we are on refineries in terms of location fairly well situated. We are only going to be increasing the capacities of some of them in order to integrate them for the production of petrochemicals and so on. I thank you very much, sir. Question number 93, Shriman Neeraj Sagar ji. प्रश्न संख्या 93. Honorable Minister. It is laid on the table, sir. The first supplementary, Shriman Neeraj Sagar ji. सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत सरकार ने करीब 1.25 करोड़ शहरी आवास बनाने का अपना गंतव्य रखा है, और उसमें से करीब 90 लाख आवास बन चुके हैं मार्च 2025 तक. इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ. मैं माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश तथा उससे जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासीय आबादी को ध्यान रखते हुए PMAYU 2 के अंतर्गत किराए के आवास के लिए कौन सी विशेष प्राविधान किए गए हैं और उनका लाभ कामगारों की ज़मीनी स्तर पर कितना हो पाया है? Honorable Minister. सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास, इस योजना के अंतर्गत और PMAY योजना की शुरुआत ये 2015 में की थी, और जैसा हमारे आदरणीय सदस्य महोदय ने बताया है कि इस समय तक कुल 94 लाख लोगों को और मकान उपलब्ध हो चुके हैं. पहले जो योजना तय की गई थी उसके कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स जो है वो तय किए गए थे, जिसके अंदर बेनिफिशियरी लेड स्कीम, अर्थात जिनके पास अपना प्लॉट है वो गरीब आदमी भी उस प्लॉट के लिए और आर्थिक सहायता लेकर के और उस पर अपने मकान बना सकते थे. इसी प्रकार दूसरा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं होती थी उनके लिए ऐसे वर्ग को और एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत सस्ते दामों पर और वो मकान उपलब्ध कराए जाते थे. इसमें केंद्र की ओर से 1.5 लाख रुपया और ये दिया जाता था, लेकिन संयोग ऐसा कि उसके अंदर प्रदेशों का कोई अंशदान ये नहीं तय किया गया था. प्रदेश अपनी ओर से जो उसमें योगदान घोषित करना चाहते थे वो करते थे. कुछ प्रदेशों ने किया जहाँ अच्छी संख्या में वो लोग मकान ले करके और पब्लिक को दे सके, जिन्होंने नहीं किया वहाँ ये कमी रह गई थी. इसी प्रकार तीसरा जो था उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये MIG और LIG लोगों के लिए जो अपना पैसा खर्च करके मकान बनाते थे, बैंक से लोन लेते थे, उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी ये दी जाती थी ताकि उनको भी एक लाभ मिल सके. और अंतिम कैटेगरी थी जो इन सीटू स्लम डेवलपमेंट ISSR, अर्थात जो लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठे थे उनके लिए इन सीटू मकान दिए जाए. संयोग ऐसा हुआ कि इन सीटू मकानों का निर्माण ये करने के लिए योजना बनी, लेकिन बहुत कम लोग ये आगे आ पाए क्योंकि झुग्गी झोपड़ी लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं था और इसमें सरकारी सहायता भी 1 लाख रुपया थी. तो बहुत प्रदेशों ने इसमें अपनी रुचि कम दिखाई, तो इसलिए PMAY 2 में इसको बदल दिया गया और बदल करके इसमें अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग इसका प्रावधान किया ताकि लोग अपना मकान अगर नहीं भी ले सकते तो एक जितना कम से कम किराए में वो लोग रह सकते हैं, उनको किराए के मकान ये उपलब्ध हो जाए. तो इस प्रकार से इस योजना में एक परिवर्तन करके और ये 2 में लाया गया. अब कठिनाई ये आई कि आखिर ये औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाली जो प्रवासी आबादी के जो लोग थे,
इनको कौन सी योजना का लाभ इसमें मिले। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत और ये लोग अपना लाभ उसमें उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रवासी लोग स्थायी रूप से निवासी एक स्थान पर नहीं होते, तो उनको भी संकोच होता है कि हम अपना मकान वहाँ न बनाएं, जब आवश्यकता हो तो यानी किराए पर हमको उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे सस्ते किराए पर और ये मकान इनको मिले। तो इसलिए PMA 2Y में इसका प्रावधान जो किया गया कि वर्कर को अलग से एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, इसका वर्टिकल ये बनाया गया है, और मैं समझता हूँ इसका पर्याप्त लाभ उनको मिला है। और आवास का जो स्वामित्व नहीं चाहते थे अल्पकालीन अवधि के लिए, उनको किराए के आवास की योजना इसका लाभ मिलता है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान नीरज सागर जी। सभापति जी, मैं सरकार ने जो शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत परमानेंट शेल्टर बनाने की जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या राज्य सरकार PMAY 2 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी विकास परियोजनाएं प्रभावित कर सकती है? और ये इसलिए क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। अगर उनको पक्के घर मिलें तो इन जमीनों पे क्या प्रस्तावित कर सकती है आपकी योजनाएं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, ठीक चिंता व्यक्त की है अपने सदस्य महोदय ने कि बहुत से ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट में अथवा झुग्गी झोपड़ी बना करके वो रहने लग गए हैं। उसमें इन सीटू बनाने के बाद भी उसमें आते नहीं हैं। BLC उसमें प्लॉट होना उनके लिए अनिवार्य है। तो बहुत सी प्रदेश सरकारें ज़मीन का आवंटन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को करते हैं ताकि ज़मीन मिल जाए, तो फिर वो BLC प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आ सकते हैं। साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, उसमें भी उन लोगों को चूँकि अब राशि ज़्यादा मिलती है, यानी PMAY 2 में पहले जहाँ 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था, उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार भी देगी। तो 2.5 लाख रुपया उनको मिलने के बाद वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है उसमें भी उनको मकान मिलता है। फिर भी यदि ज़मीन प्रदेश सरकार देती है तो ठीक है, अन्यथा बहुत से ऐसे CPSUs हैं, SPSUs हैं, जिनके पास जो ज़मीन में भी डील करते हैं, ज़मीनें अपनी होती हैं, उनको भी प्रावधान किया गया है कि वो हाउसिंग स्कीम के लिए अगर अपनी ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उस ज़मीन का उपयोग किसी भी स्कीम में करके उनको मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आखिर तो हर किसी को मकान मिले। बहुत से प्रकार ऐसे बनाए गए हैं, और आगे भी जिस प्रकार के यानी हमारे पास सुझाव आते हैं कि कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, होमलेस को कैसे मकान मिले, इसके लिए अलग अलग से योजनाएं जो बनाई गई हैं, इसमें अन्य भी कोई सुझाव अगर आते हैं उस पर भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट्स गरीबों के लिए 2016 में बनाए, लेकिन सर आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए। बाकी सारे घर पड़े पड़े खंडर बन गए। सर, मैं खुद इन घरों को देखकर आई हूँ। ये बहुत अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर, तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। सर, सिर्फ इतने से क्रेडिट वॉर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ और गरीब गरीब ही रह गया। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether the government is planning to register an FIR against the then Delhi government for blatant wastage of government funds. Also, अब उनके कोई plans है इन फ्लैट्स को ठीक करके गरीबों में आवंटित करने के लिए? कब तक सर ये फ्लैट्स, अच्छे खासे फ्लैट्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, ये बात ठीक कही है हमारे सदस्य महोदय ने कि 2012 में इस स्कीम के अंतर्गत JNNURM के मकान बनाए गए थे। इसमें प्रदेश सरकार का भी अपना रोल था, केंद्र सरकार का भी उस समय का रोल था।
लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि 2012 के बनने के बाद भी प्रदेश सरकार आखिर 10 साल 12 साल मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि हमारी बहन सदस्या उसी पार्टी के साथ उसी सरकार के साथ शामिल थी, लेकिन आज इनकी भी इच्छा है कि उसकी कोई इंक्वायरी कराई जाए और कमेटी बैठा करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो मकान पड़े पड़े बिना आवंटन के और मुझे लगता है शायद 30,000 से भी ऊपर वो मकान आज भी हैं, 48,000 मकान आज भी हैं और उसमें इतने सालों के बाद वो खंडर भी हो चुके हैं, कई जगह रहने लायक नहीं है। अब उसकी मुरम्मत कराने के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है कि जाके जो झुग्गी झोपड़ी के लोग उसमें जाकर रहना चाहते हैं, इस लेवल के बनते हैं, उनको तो वहाँ रखा जाएगा और जो लिवेबल नहीं है उसकी जांच करा करके उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। बाकी जैसा सुझाव इन्होंने दिया है इस पर विचार करेंगे कि उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या करें। 4th सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिष कुंदिया जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा को प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने फंड्स एलोकेट किए हुए हैं और उनमें से कितना यूटिलाइजेशन हुआ है। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, देश भर के अंदर तो मकानों की संख्या जैसे बताई गई कि 1,12,000 ऐसे यानी सैंक्शन होने का था PMAY 1 में और उसमें से 90 लाख से ऊपर 1,12,00,000 और 90 लाख से ऊपर आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन चूँकि ये प्रश्न इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जो 3 वर्ष में यानी पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा मेरे पास है, स्टेट बताई उड़ीसा के अंदर पिछले 3 वर्ष का अगर मैं इनको हिसाब बता सकता हूँ, चूँकि प्रश्न ही 3 वर्ष का आया था, तो 3 वर्ष के अंदर उड़ीसा में 22-23 में 1,325 मकान, 23-24 में 27,740 मकान और 24-25 में यही मकान 5,304 मकान, इतने सैंक्शन हुए। कुल आंकड़ा उड़ीसा का सैंक्शन हुए 2,23,000 मकान, ग्राउंडेड हुए 1,92,000 मकान, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1,69,000 मकान, ये सब अप्रोक्सीमेट संख्या। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो गई है 10,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट यहाँ सैंक्शन हुआ था, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस वो 3,484 करोड़ रुपए की थी। तो इस प्रकार का उड़ीसा का ये आंकड़े हैं। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भी हमारा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग भी जो हैं वो बहुत मात्रा में मौजूद हैं। कुछ फिगर्स आपके माध्यम से जो यहाँ पे आपने जैसे उड़ीसा की फिगर्स माननीय मंत्री जी ने पढ़ी हैं, मुझे कुछ ध्यान आया है कि शायद इन फिगर्स में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हो सकता है संशोधन करने की आवश्यकता हो। मंत्री जी इस विषय को देखेंगे। लेकिन यहाँ तक प्रश्न मकानों का है और परमानेंट शेल्टर्स का है। 1995 शेल्टर जो है पूरे भारतवर्ष में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में और वो भी जम्मू में मात्र 2 शेल्टर्स जो है गरीबों के लिए बनाए गए हैं। जबकि हम समझते हैं कि भिखारी भी और गरीब तबके लोग भी होते हैं जिनके लिए शेल्टर्स आवश्यक होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस फिगर्स को भी बढ़ाया जाए। और 4 प्रदेश में ऐसे देख रहा था, जम्मू कश्मीर भी हमारी स्टेट थी पहले, अभी यूटी में कन्वर्ट है, लेकिन लगभग 4 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, जिसमें लाख से भी ज़्यादा मकान जो है वो बने हैं। लेकिन यहाँ तक 3 साल का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में मात्र 19,375 मकान जो हैं वो बनाए गए हैं। तो मानिए आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के विषय में जो जानकारी आपकी फिगर्स में रखी गई है उसको कृपया एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर।
सभापति महोदय, जो फिगर्स हैं ये ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं, और जहाँ तक मकान कम है या ज़्यादा है, डिमांड बेस्ड ये सब सैंक्शन होते हैं, उसी हिसाब से फंड जारी किए जाते हैं। जितनी जिस स्टेट से डिमांड आती है ऑनलाइन डिमांड ली जाती है, बाद में उसका सर्वे कराया जाता है, सैंक्शन होता है। इसलिए किस प्रदेश ने कितने लिए कितने नहीं है, PMAY 1 हमारा पहला जो प्रयोग था उसके अंदर बहुत से अंतर आए हैं। अभी PMAY 2 में एक मोटे रूप से हमने तय किया है कि प्रोरेटा जैसी आबादी है उसके हिसाब से उनको सैंक्शन करेंगे। जो प्रदेश की डिमांड नहीं होगी उसको दूसरे प्रदेशों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए ये योजना बहुत साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। फिर भी एक जो विषय शेल्टर्स की बात कही गई है, ये शेल्टर्स PMAY का हिस्सा नहीं है, ये NULM का हिस्सा है। उसके नाते से अलग से प्रश्न ये करेंगे तो बताया जाएगा। फिर भी इनकी जानकारी कोई होगी तो ये इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। Now question number 94, Miss Susmita Devji. 91st of 2025, this project has not been extended. The question was specifically on Guwahati. 755 crores was spent, sir, in the smart city mission for the city of Guwahati. But 2 hours of rain, smart city of Guwahati becomes the sinking city of Guwahati. Now, given that this mission is closed, I would like to ask the Honorable Minister that, sir, in your ministry, my data shows around 40% of your allocation, 38,000 crore plus, has remained unspent as of March 2026. Sir, is there any proposal from the state government of Assam to fix the serious menace of flash floods in Guwahati, because it has taken the life of a young boy called Avinash in 2024? Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है इसमें मालूम नहीं कहाँ से आंकड़ा लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग 48,000 करोड़ ये इसके अंदर फंड जो है सैंक्शन किए गए, जिसमें 47,458 करोड़ रुपए के जो सिटीज़ के जो खर्चे हुए हैं वो स्टेट्स ने क्लेम कर लिए हैं। और इसमें यूटिलाइजेशन का जो जिनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गए हैं 46,231 करोड़ रुपया ये भुगतान किया जा चुका है 15/1/26 तक। इसलिए इस आंकड़े को थोड़ा ठीक कर लें। जहाँ तक किसी भी प्रोजेक्ट का विषय है, ये प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया कि पहला तो स्मार्ट सिटी मिशन, इसके प्रोजेक्ट्स एक डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, एक छोटे पार्ट में इनका काम किया जाता है, क्योंकि टोटल बजट 50% केंद्र का 500 करोड़ रुपया, 50% प्रदेश का यानी 500 करोड़ रुपया, और पहाड़ी राज्यों को 50% 500 करोड़ के साथ 50 करोड़ रुपया, 10% ऐसे 550 करोड़ रुपया। इसमें पूरे शहर की योजनाएं तो सब नहीं बना सकते, फिर भी इसमें यानी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स फॉर देयर, जिनको वहाँ की स्टेट ने चयन करना था कि कौन से इसमें स्कीम में हम लगाना चाहते हैं। वाटर के ऊपर लगाना चाहते हैं वहाँ लगाएं, टेक्नोलॉजी के विषय पर लगाएं वहाँ लगाएं। और इसमें भी 3 प्रकार का उसमें मॉडल दिए गए थे। एक है सिटी इम्प्रूवमेंट में रेट्रोफिटिंग मॉडल, जो 500 एकड़ की सिटी में यानी एक लार्ज बेस एरिया उसके अंदर लागू किया जा सकता है। दूसरा है रीडेवलपमेंट मॉडल, जिसमें सिटी का रिन्यूएबल है, उसमें 50 एकड़ का एरिया उसी में किया जा सकता है। और तीसरा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट मॉडल, जिसके अंदर 250 एकड़ ज़मीन पर और ये उस एरिया के अंदर इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। इट्स अप टू द स्टेट कि उनकी जो अपनी कमेटीज बनी हैं, उन कमेटीज के आधार के ऊपर उनको कौन सा फुल सिटी का कराना है या कोई पार्ट ऑफ द सिटी कराना है, क्योंकि बजट जो है वो सीमित है और उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वो रेप्लिकेबल हैं अन्य सिटीज़ में, या उसी सिटी के अंदर और प्रकार के वैसे प्रोजेक्ट अगर करने हैं तो वो सब कर सकते हैं। इसलिए इनके जो कंपोनेंट्स हैं बहुत बड़े कंपोनेंट में, लेकिन बजट सीमित होने के कारण से ये स्टेट का अपना चयन करने का अधिकार है कि वो किस प्रोजेक्ट में करते हैं किस में नहीं करते हैं। फिर भी गुवाहाटी के अंदर क्या क्या काम हुए हैं ये सब उत्तर में बताए जा चुके हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री मिस सुस्मिता देव जी। Thank you, sir. Sir, 65% of the population of the northeastern states live in the state of Assam. Given that Smart City Mission is now a closed project, I would like to ask Honorable Minister that will other towns and cities like Dibrugarh, like Silchar, get the opportunity like a Smart City Mission project
to build infrastructure. और माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सर हमें बहुत दुख है, आप सिलचर आइएगा जरूर, आपका आमंत्रण है। 5 साल से सिलचर म्यूनिसिपैलिटी में आसाम सरकार ने चुनाव ही नहीं करा है, तो हम compete कैसे करेंगे? यहाँ इलेक्टेड बॉडी नहीं है। सर, इज देयर अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक इनटू Tier 2 and Tier 3 towns and cities of Assam, which has the maximum population in northeastern states? Honorable Minister. सभापति महोदय, विषय केवल स्मार्ट सिटी मिशन का है और ये स्मार्ट सिटी मिशन नंबर ऑफ सिटीज, कौन कौन से सिटी होंगे ये बिल्कुल तय कर दिया गया था। 100 सिटीज का चयन किया गया था। ये काम केवल 100 सिटीज में था और ये दिसंबर 2025 तक इसके सब प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार की ओर से जो बजट फंड जाने थे चले गए थे। ये स्कीम अब बंद हो चुकी है और इस नाते से आगे इस स्कीम के खुले न होने के कारण से नई सिटी का तो इसमें कुछ शामिल होने का कोई विषय है नहीं। अन्य शहरों में जिस प्रकार के काम हैं, बहुत सी हमारी योजनाएं हैं, उसमें अमृत स्कीम भी है, उसमें पीएम हाउसिंग PMAY भी है, ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है या NULM है, बहुत सी स्कीमें हैं। और अब अर्बन चैलेंज फंड के नाम से 1 लाख करोड़ रुपए का सैंक्शन ये भारत सरकार ने अपने पिछले वर्ष के बजट में घोषित किया था, उनके फंड्स भी जाएंगे। तो अन्य शहरों में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बार के बजट में 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है, ऐसे ही सिटी इकोनॉमिक रीजन में हर यानी रीजन को 5,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का घोषित किया गया है। तो जिन शहरों में काम कराना अगली योजनाओं में कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन जितने काम होने थे सब हो गए हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का और आगे कोई योजना नहीं है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने SPVs यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के भविष्य और ICCCs यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए क्या कदम उठाए हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति जी, SPV जितने प्रोजेक्ट शहर में थे उसके लिए एक पर्पस व्हीकल बनाया गया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल, लेकिन वो काम जब पूरे हुए हैं तो उस SPV का क्योंकि गठन हुआ है, उससे आगे उसको किस प्रकार से काम में लिया जाए, गाइडलाइंस के नाते से बहुत सी चीज़ें हमने भेजी हैं ताकि SPV का रीपर्पस करने के लिए यानी promoting use of technology in urban management, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कंसल्टिंग सपोर्ट, ये अन्य शहरों के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। इनको और आगे बढ़ाने के लिए adjourned to meet at 2 PM. Prodigy Vaibhav Suryavanshi ji, who scored an extraordinary 175 runs, highest ever in the Under-19 Cricket World Cup finals. Brilliant individual performances by his colleagues in the run-up to the final were truly inspiring and reflect the promise of a bright future. On my own behalf and on behalf of this House, I extend heartiest congratulations to the captain, players, coaches and the entire support staff, and wish these young champions many more laurels in the years to come. Papers to be laid on the table. Sriman Sripat Eso Naik. I rise to lay paper on the table of the House on behalf of my colleague Sri Rao Injit Singh ji, mentioned at serial number 1A in today's list of business. Sriman Sripat Eso Naik ji, again. Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioning my name at serial number 1B of today's list of business. Susri Soba Karantala ji. चेयरमैन सर, आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। श्रीमान राजभूषण चौधरी जी। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of House
on behalf of my colleague Sri Tokhan Sahu, Minister of State for Housing and Prodigy Vaibhav Suryavanshi ji, who scored an extraordinary 175 runs, highest ever in the Under-19 Cricket World Cup finals. Brilliant individual performances by his colleagues in the run-up to the final were truly inspiring and reflect the promise of a bright future. On my own behalf and on behalf of this House, I extend heartiest congratulations to the captain, players, coaches and the entire support staff and wish these young champions many more laurels in the years to come. Papers to be laid on the table. Sriman Sripat Eso Naik. I rise to lay paper on the table of the House on behalf of my colleague Sri Rao Injrit Singh ji, mentioned at serial number 1A in today's list of business. Sriman Sripat Eso Naik ji, again. Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioning my name at serial number 1B of today's list of business. Susri Soba Karantala ji. चेयरमैन सर, आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ. श्रीमान राजभूषण चौधरी जी. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of House on behalf of my colleague Sri Tokhan Sahu, Minister of State for Housing and Urban Affairs, as mentioned against his name at serial number 1D in the list of business for today. Sriman Rajbhujan Chaudhary ji, again. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of House listed against my name at serial number 1E in the list of business for today. Sriman Rajbhushan Chaudhary ji, again. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of House on behalf of my colleague Sri Murlidhar Mahol, Minister of State for Civil Aviation, as mentioned against his name at serial number 1F in the list of business for today. Sriman Rajbhushan Chaudhary ji, again. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Satish Chand Dubey, Minister of State for Coal and Mines, I rise to lay on the table under clause 2 of section 19A of the Controller and Auditors General's Duties, Power and Condition of Service Act 1971, a copy in English and Hindi of the report of the Controller and Auditor General of India on operational performance of NLC India Limited, Union Government, Ministry of Coal, number 35 of 2025, performance audit commercial. Thank you, sir. Laying of CAG report, Sriman Rajbhushan Chaudhary ji. Now matters rise with permission. No, we will discuss everything later. Let us not disturb this. Sir, please, one very important, please. Under Rule 187, 188, 119, I have given a notice of breach of privilege against the Minister, Mr. Piyush Goyal ji, sir, that he has given an interview with regard to the policy decision of the government outside the House when the Parliament was in sessions. It amounts to breach of privilege of this House, sir, and I said already it's a propriety of the House, sir. Now this has been already discussed. 1 minute. Let me complete 1 minute. This has been already discussed. He has been already made the statement in the House. We will look into it later. Sir, for what he has given outside. Sudha Murthy ji. Sir, thank you very much, sir, giving me time to speak. Sir, climate change is not in our hands. I am telling now. We will go through it later. Please, Baitia, let the House be running with usual business. Affect our heritage sites, sir. Heritage sites.
heritage sites are very important. You tell, sir. Please. Sir, heritage sites are very important to us. No, let get. Nothing will go on record except Srimati Sudhamurthyji's speech. Please. This has been widely discussed on that day. This has been widely discussed on that day. The decision has been taken on that day. Let me consider it later. Please don't disturb the house. Please, Srimati Sudhamurthyji, please continue. Yeah. In this regard, I want to talk about what happens with the climate change. Number one, there is erratic rainfall. Number two, there is earthquake. Number three, there are please, Gargaji, you are a very elderly person. Please take your seat. Let the house be run. Let the house be run with its usual business. Please. Our heritage. Every time you are raising the same matter, how I can agree? Please. For example, let us look at our heritage sites like Konark or Nothing will go on record except Srimati Sudhamurthyji's speech. Please, my dear. Please, my dear. I am listening to you. We have already discussed. Again and again, we cannot discuss the same matter. Please take your seat. There are Western Ghats and there are also lakes and I am protecting the democracy. That's why I allowed you to speak on that day. A decision has been taken on that day. The excess heat. Let me look into it. Let me look into it. Temperatures and humidity will destroy our paintings, which are time immemorial. So, but you are right. You cannot disturb I would like the to house suggest running the ASI usual of our business. country. Some policy should be made. For example, that's why I told you. He has raised it. I have told you. I will come back to you later. Please. Protection of these heritage sites against the natural calamities and climate change. Second one, there should be a resilience way of protecting them. Third one is control on the vegetation near riverbed monuments. Number four, our ancestors always had a mango grove before the village, which is on seashore, which we have forgotten. By doing that, we can save our national monuments by cyclone. Number five, the Himalayan mountains are very delicate by nature, so inroad and excessive tourism should not be done because it is not good for the national heritage, particularly forts. Coming to a place like Rajasthan, where there is less rain due to climate change, there will be excessive rain, and the drainage system is not designed for that. So we should take care that in such area, modern methodology should be used in case of the climate change. Fourth one, where there is excessive heat and the monuments are open, then we should have a capex. Srima Tiruchi Shivaji. Thank you, Mr. Chairman. Sir, in the year 2019, the India government passed Code on Wages Bill in 2019, and three more codes, that is on Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, Code on Social Security, and Code on Occupational Safety. Code on Industrial Relations were passed in 2020, sir. Since it was passed during the pandemic period, no discussions were taken elaborately. Now that there is these four codes subsume already existing 29 laws, including the Industrial Disputes Act and the Factories Act, sir. Sir, though the Union government has framed these rules under in the notification in November 2025, since labor comes under the concurrent list, the states also should frame rules and notify it. Otherwise, it cannot be implemented, sir. Any law without taking into consideration the concerns of the stakeholders cannot be implemented at all. Now that the central trade unions are making great protest, they are not agreeing it. Except 4 states are ruled by BJP in Gujarat, Bihar and some Arunachal Pradesh. All other states have not agreed to frame rules on this because it is against the safety and welfare of the laborers. Now there is a big issue about that, sir. So the present situation, there is no labor law to protect the labor class.
since all the earlier laws were subsumed in the courts and the courts are not implementable. Sir, in the absence of Industrial Disputes Act and the Factories Acts, various business and laborers are at distress and they are not able to resolve the issue. Sir, the Central Trade Union has announced a protest on February 12th, sir, which will be very serious. So I urge the government to take this seriously and repeal these 4 courts. And the Labour Minister should immediately convene the Indian Labour Conference and to discuss comprehensively, taking into confidence and consideration all the labour union in the country and then redraft the rules, sir. Otherwise, sir, it will end up like the farm bills which has happened, because it affects the labours across the country, and what the courts that have come now in place of the earlier laws, I have not served the purpose, sir. So kindly consider it very seriously with the concern of the employees and labourers and the business in the country, sir. So this is my submission. So this is not just a zero-hour mention, it is about the protest that is going to take place on 12th. Whole India is going to protest against it, sir. So kindly, the government should take it seriously, repeal these courts and redraft the rules, sir. Thank you very much. Shriman Satpal Sharma ji. Okay. Shriman Satpal Sharma Thank ji. you. Thank you, Chairman, sir. Honorable Chairman, sir, certain amendments were introduced by the Finance Act 24 to Section 200, subsection 3 of the Income Tax Act 1961. These amendments, effective from April 1st, 25, impose a 6-year time limit for filing TDS correction statements, calculated from the end of the financial year in which the original statement was required to be furnished. Honorable Sir, prior to this, there was no statutory time limit, allowing indefinite revisions for genuine errors like incorrect PAN details, challan mismatches, or clerical mistakes. Sir, for TDS statements relating to financial years prior to 18-19, the 6-year window had largely expired by March 31st, 25 in most of the cases. As a result, corrections for these periods became barred after that date, aligning with the latest description of restrictions effective post-March 31st, 25. This has indeed led to reported hardships, including deductees not receiving proper TDS credit in Form 26AS, resulting in inflated tax demands or delayed / refused refunds. For the deductors facing demand for short deductions, interest penalties under Section 201 and 220, and the potential prosecution or litigation despite having deducted and deposited the tax correctly. Sir, these issues can arise even when the tax was duly paid, as mismatches prevent proper credit allocation. Chairman, sir, the suggestion for one-time relief, condonation window or guidelines under Section 119 of the Income Tax Act 1961 is appropriate. Section 119 empowers the CBDT to issue orders, instructions or directions to relax provisions in case of genuine hardships, including for classes of persons or income. While no such specific relief has been announced for pre-financial year 18-19 periods of now, similar condonations have been already granted in the past for the TDS-related issues by the CBDT from time to time. Such relaxation can be given. I think it is available. Thank you very much. Shriman Amarpal Maurya ji. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, जनप्रतिनिधित्व की गरिमा तथा नागरिकों के साथ संवाद की मूल भावना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। महोदय, क्षेत्र में विधायकों एवं सांसदों के लिए एमएलसी, राज्यसभा, इन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए स्थायी कार्यालय की व्यवस्था के संदर्भ में महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा है, उसका अपना एक कार्यालय है, ब्लॉक के केंद्र हैं, उनके भी अपने कार्यालय है, जिला पंचायत के केंद्र है, उनके भी स्थायी कार्यालय है, पर सांसदों, विधायक
एमएलसी या राज्यसभा, इनके स्थायी कार्यालय की व्यवस्था एक निश्चित नहीं है। कुछ सरकारें हैं, कुछ स्थान हैं जहां पर व्यवस्थाएं भी हैं, या विकास भवनों में एक कक्ष अलॉट कर दिए जाते हैं, ना वहां पर कंप्यूटर की व्यवस्थाएं होती हैं। और जो समाज में चुन करके जनता के बीच में आता है, या तो अपने घर में एक ऑफिस खोल लेता है, लेकिन वो लाखों की जनता होती है और कई बार 5 साल विधायक सांसद कोई और होता है और 5 साल बाद कोई और हो जाता है। और पीछे देश की आज़ादी के बाद से कई बार ऐसी विधानसभाएं, लोकसभाएं हैं जो हर बार बदलती रहती हैं। उस क्षेत्र की जनता को आज तक ये नहीं समझ में कई बार आ पाता है कि उसका अपना विधायक का, सांसद का जाने का कार्यालय का स्थायी कौन सी व्यवस्था है। तो थोड़ा सा मन में एक संकोच होता है। दूसरा, पत्र लिखा, पत्राचार, एक सांसद वर्तमान में रहा और बाद में वो जो है चेंज हो अगली बार में, तो वो कोई पत्राचार किया तो बाद में उसका डेटा कुछ नहीं रहता, लेकिन कहीं पर थाने में कोई एफआईआर हो जाए या कलेक्टर बदल जाता है, एसडीएम बदल जाता है, तो वो सारा संरक्षण डेटा उसके साथ में रहता है। तो मैं महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सांसदों, विधायकों की जो समाज के लिए, देश के लिए कानून निर्माण में सहायक होते हैं, उनकी स्थायी व्यवस्था होगी और वहां पर आने वाली जो जनता है, उनके दिए गए डॉक्यूमेंट से जो कागजात हैं, उनको अगर हम ठीक से जो है डॉक्यूमेंटेशन करके शासन को अगर हम भेजेंगे, तो उनकी व्यवस्था में, उनके काम को करने में एक सिद्धि प्राप्त होगी। और उनको भी एक शासन के द्वारा जो कार्यालय होता है और एक प्राइवेट के द्वारा जब कार्यालय होता है, तो वहां जाने में जनता को किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता, क्योंकि पार्टियां अलग अलग से होती हैं। हर प्रदेश में अलग अलग पार्टियां हैं, कहीं 2 पार्टियां हैं, कहीं 4 पार्टियां हैं। तो उस जनता को न्याय अगर हमको देना है, मोदी सरकार आज रिफॉर्म के लिए जानी जा रही है। अन्य व्यवस्थाओं को बहुत सारे देश में सुधार हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ये सुधार भी इस व्यवस्था में सांसदों, विधायकों के कार्यालय के होंगे तो बहुत न्यायपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बराला जी, मैं आपके माध्यम से श्रीमान सुभाष बराला जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ये केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश की समस्या है और ये समस्या स्वास्थ्य एवं कृषि संकट की ओर आकर्षित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा भूमिगत जल है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जो निर्धारित सीमा से काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 18 जिलों में इस प्रकार की रिपोर्ट आई है, जिसके कारण से जो भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा इतनी अधिक है कि जिसके कारण से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी होती दिख रही हैं। इसके कारण से कैंसर रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग व बच्चों के अंदर कई प्रकार की बीमारियां जैसे मानसिक विकार आदि की संभावनाएं दिखाई देती हैं। और साथ ही मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, उसके ऊपर भी इसका गहरा असर दिखाई देता है। और यह स्थिति केवल, जैसे मैंने कहा, कृषि तक सीमित नहीं है, यह स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत बड़ी समस्या बनती दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के अंदर एवं जल संरक्षण की योजनाओं के ऊपर पूरे देश में बहुत काम हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। किंतु इस मूक संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि निम्न बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक तो प्रभावित क्षेत्रों के अंदर नहरी एवं सतही जल सिंचाई परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। हरियाणा में बहुत एक अच्छी योजना चली थी, मेरा पानी मेरी विरासत। इस प्रकार की
योजना को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से मदद दी जाए। इसी प्रकार से ICAR द्वारा कम आर्सेनिक अवशोषण वाली फसलों की किस्मों के ऊपर अनुसंधान पर जोर दिया जाए और हरियाणा जैसे क्षेत्र जहां पर सेमग्रस्त पानी ज़्यादा है उसकी निकासी के प्रबंध किए जाएं। मान्यवर, यही अनुरोध मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से करना चाहता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर M. तंबीदुरई जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। Sir, thank you so much. Sir, I rise to draw the attention of this House to a matter of grave environmental and public safety concern regarding the recent approval granted by the Maharashtra government for a private iron ore mining company in the Tadoba Tiger Corridor, a decision that defies both environmental prudence and its own expert committee's recommendations. Sir, in October 2024, a 3-member committee was formed by the State Wildlife Board, which was to check the proposal that came from a private limited company that would create 120 jobs for that people in the region, out of which only 32 would be permanent. And in their detailed submission, these 3 experts had said any mining in this forest will cause irreversible damage to the environment and wildlife. Therefore, the project is not recommended. Ignoring this recommendation, the State Wildlife Board has allowed this proposal to go through and has sent this request to the National Wildlife Board for permissions. Sir, my party leader, Shri Aditya Thackeray ji, who's the former Environment Minister, has taken this issue up because this will create huge environmental damage in the state of Maharashtra, sir. What is at stake? 18,000 trees across 35 hectares will be broken down. A critical tiger corridor connecting India's largest national park, home to 250 of our country's approximately 4,000 tigers, stand to be a problem. Over 650 villages facing an increased threat of human-tiger conflict. The habitat of 60+ tigers, along with leopards, bears, wild dogs, and countless other species will be harmed, sir. Sir, again, when a government's own expert committee unanimously opposes the project, citing irreversible environmental damage and threat to both wildlife and human lives, on what scientific or ethical grounds has this approval been granted, sir? Sir, this is not an isolated incident. From the Aravali's to mangrove ecosystems, we are witnessing the systematic dismantling of environmental protections. Today it is Tadoba, tomorrow it could be any other protected forest in our country. Sir, through you I request the Environment Minister to deny this approval and not allow the Tadoba Tiger Corridor also to be damaged and the ecosystem to collapse just under the garb of development, which will only create 120 jobs, sir. It's not creating a huge lifeline change or ecosystem change, sir. So please protect our environment and ensure that Tadoba Tiger Corridor is not harmed in any way by these private mining institutions, sir. Thank you so much, sir. Shriman Maharaja Sanjoba Lesamba. Thank you, sir. Sir, my 0-hour subject is demand for inclusion of Meitei Mayak script alongside Bengali script for the Manipuri optional question paper in UPSC examination. Sir, for the civil service examinations conducted by UPSC, candidates with Manipuri as optional subject are permitted to write answer in either Bengali script or Meitei Mayak script. However, the question paper for the Manipuri optional paper is printed only in Bengali script. This practice is placing the candidates who do not understand the Bengali script at a very disadvantaged situation because Bangla or Bengali script had been completely replaced by Meitei Mayak script for teaching in schools, colleges and universities for the last 20 years or so in Manipur. Consequently, almost all students have been educated entirely in Meitei Mayak and do not possess functional literacy in the Bengali script. However, UPSC compelled these candidates to read and understand the questions set only in Bengali script, undermining their language proficiency. As a result, many willing candidates are discouraged from opting for Manipuri as their optional subject. It is also to be respectfully stated that there is no demand to print the question paper in Meitei Mayak alongside Bangla script, as is done for other languages with multiple scripts. The printing of questions in both Bangla and Meitei Mayak
will uphold the principles of fairness, inclusivity, and constitutional respect for India's linguistic diversity, and will improve the UPSC examination system. As such, it is demanded that the matter may be brought to the attention of UPSC and concerned authority, and to rectify it at an early date. Thank you, sir. श्रीमान दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की प्राचीनतम संस्कृति के ध्वजवाहक उरांव और संथाली आदिवासी समाज की अस्मिता और उनके पवित्र तीर्थ स्थलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जहां पुरखों की खुशबू है वहां आस्था का डेरा है। वो रोहतासगढ़, वो मुड़मा, वो मारंगबुरु पहचान का सवेरा है। अध्यक्ष महोदय, उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास बिहार के रोहतासगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो उनकी स्मृतियां का केंद्र है और उनका पवित्र स्थल है, वो उनका आस्था का केंद्र बिंदु है। वहीं रांची के मांडर में स्थित मुड़मा स्थल न केवल एक धार्मिक शक्ति खूंटा है, बल्कि यहाँ से उस पढ़ा परंपरा की शुरुआत हुई थी जिसने आदिवासियों की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक सूत्र में पिरोने का काम किया था। महोदय, आज भी यह स्थल लाखों लोग वहां आते हैं और वहां के आदिवासी लाखों लोगों के वो आस्था का केंद्र बिंदु भी है। इसी प्रकार से संथाल समाज की अटूट आस्था का प्रतीक मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ में स्थित है सर, और यह केवल पर्वत नहीं है बल्कि संथालों का सर्वोच्च देवता और उनके अस्तित्व का पहचान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है सर, वहाँ आधारभूत संरचना का अभाव है सर, वहाँ पानी, बिजली, सड़क की स्थिति दयनीय है सर। इसलिए मैं अस्तित्व बिना पहचान कहाँ, जड़ बिना कहाँ सम्मान नहीं। आज ये वैश्विक धरोहर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है महोदय। विरासत सुरक्षित रहेगी तभी आदिवासियत बचेगी। मेरी सरकार से मांग है कि मारंगबुरु, मुड़मा और रोहतासगढ़ को एक विशिष्ट सांस्कृतिक कॉरिडोर बना करके आदिवासियत को बचाने का काम करें। धन्यवाद। श्रीमान केसरी देव सिंह झाला जी। मान्य अध्यक्ष महोदय, आपे मने काठियावाड़ी घोड़ानी नस्ल ने संरक्षण और संवर्धनना महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर बोलवानो तक आपी है, बदल हूँ आपनो आभार व्यक्त करूँ छूँ। महोदय, हूँ आज सरकारનું ध्यान काठियावाड़ी घोड़ाओનું संरक्षण और प्रोत्साहन तरफ दौरवा मागू छूँ। आ एक एवी नस्ल, स्वदेशी नस्ल है कि जे मात्र गुजरातનું नहीं पण भारतનું शौर्य और सांस्कृतिक वारसाનું एक प्रतीकरूप है। तेनी अद्भुत शक्ति, कठोर हवामान सामे टकी रहवानी क्षमता और तेनी खास ओळख एवी एनी रेवालचाल, आ अंदरना तरफ वळता एमना कान, आ बधाए आ काठियावाड़ी घोड़ा ने दुनियानी अनोखी जातों एने अनोखो बनावे छे। आ घोड़ाओनी खास करीने युद्धना मैदानमा लांबा समय लड़वा माटे तैयार करवामां आव्या हता। इतिहास साक्षी है कि आ देशनी सुरक्षा माटे जे योद्धाओ, जे शूरवीरोए प्राणना बलिदान आप्या छे, एमनी वार्ता एमना अश्व वगर अधूरी छे। आजे पण आपणा आर्मी ने सिविल डिफेन्स दळोमां अश्वदळनुं घणुं महत्व छे। राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी कार्यक्रमों आपणा स्वदेशी नस्लना घोड़ाओ उपयोग करवामां आवे, आ आपणा वारसानी साची आदर आपवा समान हशे और आत्मनिर्भरतानुं एक प्रतीकरूप बनशे। परंतु महोदय, क्रॉस ब्रीडिंग और योग्य व्यवस्थाना अभावे आ शुद्ध नस्ल साथे आजे जोखममां मूकवामां आव्युं छे। जो आपणे अत्यारे जागृत नहीं थई तो आ शुद्ध औलाद कायम माटे लुप्त थई सके एम छे। काठियावाड़ी घोड़ाओ अश्व पर्यटन, ग्रामीण रोजगारी और रमतगमत माटे अपार संभावनाओं रहेल छे। जो आपणे घोड़ाओं प्रदर्शन, हरीफाईओ, मेळाओ आयोजन करिए तो तेमांथी ग्रामीण आवक वधशे और युवा पेढ़ी पण आ वारसानो साचववा माटे प्रेरित थशे। अश्वपालको पण आ वछेरीओने उछेर करी अने पोतानुं गुजारण चलावे छे। जो सरकार आमां मदद करावे तो ए मुद्दो आगळ वधे। आपणा वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब हमेशा स्वदेशी औलादोने प्रोत्साहन आपवा भार मूके छे। लश्करमां मुदोल हाउस जेवा श्वान ने पण भरती एनुं जीवतुं जागतुं उदाहरण छे। दुनियामां एकमात्र पालतू प्राणी एवुं छे कि जे ओलिम्पिक रमतोमां पण शामिल छे। हूँ सरकारने विनंती करूँ छूं कि घोड़ाओ माटे एक व्यापक नीति बनाववामां आवे, जेमां पशुपालकनुं हित जळवाय।
અને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારના અંદર નેશનલ રિસર્ચ સેન્ટર અને ઇક્વાઇન એનઆરસીઈનું પ્રાદેશિક કેન્દ્ર ખોલવામાં આવે. આ અસલ નસલના ઘોડાને એક જીઆઈ ટેગના માધ્યમથી પ્રાદેશિક ઓળખ મળે, નકલખોરો સામે પશુપાલકનું હિત રક્ષણ થશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ એની ઓળખ વધશે. આ પગલાં લેવાથી આ ભવ્ય નસલ બચાવી શકશું અને કાઠિયાવાડી ઘોડાને ભારતના ગૌરવ અને શક્તિના પ્રતીક તરીકે હંમેશા ગર્વથી શ્રીમાન હર્ષવર્ધન શ્રીંગલાજી. Honorable Sir, I rise to draw the attention of this august House to a matter of urgent public importance that affects the daily lives of thousands of residents of Binabadi Gram Panchayat under Khodibadi block of Vasideva and Darjeeling district. Nearly 50 to 60,000 people, predominantly small and marginal farmers, reside in this region. Although Khodibadi market lies merely 7 to 8 kilometers from the railway crossing, the absence of a rail underpass or gate has become a severe impediment to mobility and livelihood. Farmers are compelled to take a long and costly diversion to transport vegetables and agricultural produce. As a result, by the time they reach the market, prices often fall, causing direct income losses and in many cases loss of valuable produce. This is not merely a matter of economics, it is a serious concern of safety, access and dignity. The rural hospital and higher secondary schools are located across the railway line. During medical emergencies, patients face dangerous delays while school children are forced to cross the railway tracks daily, creating constant anxiety for parents and teachers alike. Sir, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, railway infrastructure development and the elimination of unsafe crossings have become prioritized nationwide in the interest of public safety. I therefore earnestly request the Ministry of Railways in coordination with the Ministry of Rural Development to urgently sanction and construct a rail underpass or rail gate at the crossings on the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Road in Binagudi Gram Panchayat. This single intervention will significantly enhance agricultural marketing, ensure student safety, improve healthcare access and safeguard lives. Thank you, sir. Professor Manoj Kumar Jaji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for allowing me to raise this very important issue. And I'm very glad that the Leader of the House and Honorable Health Minister is also here. Sir, since the month of September, on account of a deep personal family crisis, I have spent 3 to 4 months in All India Institute of Medical Sciences. So, after coming from there, मैंने एक अंग्रेजी दैनिक में एक लेख भी लिखा कि एम्स अस्पताल महज अस्पताल नहीं है, खास करके एम्स दिल्ली. लेकिन मेरी चिंता उस आलेख में ये भी थी कि जो भी एम्स हमने इनके दौर में या आपके दौर में खोले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो पेशेंट को होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं. और अभी भी जिस प्रकार की भीड़, जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करके देयर इज एब्सोल्यूट मिसमैच, ऑनरेबल चेयरमैन सर, जो एक डिमांड है और जो ओपीडी कैपेसिटी है. मैंने वहां के डॉक्टर्स, नर्सेस, सपोर्ट स्टाफ, पैरामेडिक के स्टाफ, उनकी जीवन शैली देखी है. एक दिन के अंदर अलग अलग, चूंकि मैं वहां सर 4 महीने रहा, तो मैंने एम्स की सुबह देखी, एम्स की शाम देखी, मौसम को बदलते देखा. लेकिन जो चीज पीड़ादायक थी सर, वो मैं ये बताऊं कि वहां कई पेशेंट्स को, जो अब ऑनलाइन भी हो गया है तो डेट आगे का मिला करता है, लेकिन वो बीमारी क्रोनिक है, परेशान रहते हैं, वो यहां आ जाते हैं. मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एम्स उनके लिए महज एक अस्पताल नहीं है, आखिरी आशा है, लास्ट आइलैंड ऑफ होप. और वैसी परिस्थितियों में शेल्टर होम्स हैं सर, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी कुछ समुचित व्यवस्था सर होनी चाहिए. ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमने जो बाकी एम्स खोले हैं, अगर उसमें भी उसी लेवल का रिसर्च, उसी लेवल का इंगेजमेंट, उसी लेवल का कंपैशन
उसी लेवल का इंड्योरेंस अगर ये होता तो शायद एम्स दिल्ली में जो वर्कलोड है और जिस प्रकार की जो मैंने कहा कि दिक्कतें हैं, सर एक चीज अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं, सरकार में कोई भी हो, जब कोई डेली वेज अर्नर केयर टेकर की भूमिका में होता है एक पेशेंट के, सर वो मेडिकल पॉवर्टी के ट्रैप में फंस जाता है। हमने अक्सर किताबों में पढ़ा स्ट्रक्चरल पॉवर्टी और उस पर हमारा फोकस रहता है, लेकिन मेडिकल पॉवर्टी सर ये विकराल रूप लेती जा रही है। उसके पीछे एक तर्क और भी है सर कि हमारा हेल्थ सेक्टर का झुकाव निजी क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा निजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों में अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया और वो दायरा नहीं बढ़ाया तो मुश्किल होगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत माननीय सभापति महोदय। श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन सर, आज आपने लगातार बिहार के लोगों को मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज भारत अपनी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं का लगभग 85 से 90% आयात करता है, जिसमें देश के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का अत्यधिक रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हो गई है। एक मार्केट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का घरेलू सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसके 2030 तक 80 से 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह तेज वृद्धि भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन साथ ही यह रणनीतिक जोखिम भी उजागर करती है कि जैसा कि कोविड-19 और वैश्विक चिप संकट के दौरान स्पष्ट रूप से देखा गया। इस रणनीतिक कमजोरी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सेमिकॉन इंडिया मिशन की स्थापना की थी, लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसमें जो युवा वर्ग है 25 साल से कम है, 7.5 करोड़ युवाओं की आयु वर्ग लगभग 25 साल से नीचे की है। इसलिए हम जो लॉजिस्टिक और केमिकल्स, टूलिंग, पैकेजिंग, रख रखाव, एमएसएमई और सर्विस सेक्टर के माध्यम से 2 से 3 गुना अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना रहती है। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर औद्योगिक पार्कों की स्थापना से न केवल क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाले श्रमिक पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी और राज्य को पहली बार उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण से जोड़ा जा सकेगा। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि बिहार में सेमीकंडक्टर हब और एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु केंद्र राज्य उद्योग साझेदारी के माध्यम से लक्षित कर प्रोत्साहन, पूंजीगत सब्सिडी तथा प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बिहार को राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रोड मैप के में औपचारिक और स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए, ताकि बिहार जो लगातार छूटा हुआ है विकास के रोड मैप से, उसको सेंटर स्टेज में लाने की कोशिश हो। बहुत धन्यवाद। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अन्नदाता जो इस देश का सबसे प्रमुख घटक है, जिसका प्रमाण हमारे देश में 65% 65% से ज़्यादा है, उस अन्नदाता के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ये अन्नदाता जो है, जिसको हम किसान बोलते हैं, वो हमेशा उपेक्षित रहा है और उसके लिए हमें मदद करने की आवश्यकता है। मैं मेरे क्षेत्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों की बात करना चाहती हूँ। वहाँ पे इतना घटनाएं घटती है कि आत्महत्याओं का प्रमाण सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में है तो हमारे मराठवाड़ा में है। मेरे खुद के बीट डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 250 से ज़्यादा लोगों ने इस साल आत्महत्या की है। वही समस्या हमारी मराठवाड़ा, विदर्भ, इस एरिया की है।
सर मैं बताना चाहती हूँ, हम अमृतकाल बोलते हैं इस देश को, कि सरकार बोलता है अमृतकाल, लेकिन किसानों के लिए विषकाल हो गया है। उनको जब तक विष नहीं पीते हैं तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है। ये सही है और सच बात है। सर कभी अकाल आता है, कभी बहुत सारा पानी आता है जिससे हमारी ज़मीन खराब हो जाती है, ना उपजाऊ का कम हो जाता है, नापिकी हो जाती है, खेत में पीक नहीं, जो कर्जा लेते हैं वो रिपे नहीं कर सकते, बच्चों का पढ़ाई नहीं कर सकते और लड़कियों की शादी, इस सब दुष्ट चक्र में वो हमारा किसान जूझता रहता है और उसमें उनको मौत को गले लगाने के सिवाय और कोई चारा होता नहीं है। ये हकीकत है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिला सहकारी बैंक, पत्र संस्था, बैंक, इस सब के दुष्ट चक्र में हमारा किसान अटका हुआ है और छोटी सी रकम लेता है, उसके ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ये करते 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 बेचारा थक जाता है। और तभी मुझे लगता है कि कभी कभी बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योजक हैं, चाहे मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, हजारों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और बाहर भाग जाते हैं भगोड़े। और हमारे किसानों को तो कहीं जाना नहीं, अपने गांव में रहना है, तो गांव में रहना तो इज्जत बचा कर रहे हैं, इसलिए उनको मौत को गले लगाना पड़ता है। इसके लिए हमें डॉक्टर स्वामीनाथन ने हमें जो दिए हैं लीगलाइज एमएसपी, जो हमारे नेता भी बार बार कह रहे थे राहुल जी कि लीगलाइज एमएसपी करना बहुत आवश्यक है, वो बहुत आवश्यक चीज़ है। मेरे खुद की डिस्ट्रिक्ट में 256 आत्महत्याएं हो गई, छत्रपति संभाजीनगर में 224 हो गई, नांदेड़ में 170, धाराशिव में 141, परभणी में 104, ऐसे करके कम से कम 1100 1150 आत्महत्या इस साल में हो गई है। गए 5 साल में सबसे बड़ी आत्महत्या किसानों की हमारे एरिया में हो गई है। शेतकरी किसान जो है वो ये इतना अग्रिम क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये जब करते हैं। सुजीत कुमार जी। Chairman sir, I rise to request the government to consider the establishment of an independent space force to safeguard India's strategic interest in outer space. Sir, space is no longer merely scientific. It is a strategic domain. Our communications, navigation, banking, surveillance, and military operations depend on space-based assets. Any disruption in orbit can cripple national security on the ground. Our government, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, has demonstrated our capabilities with the creation of the Defence Space Agency in 2019 and the Defence Space Research Organization. Sir, today, ISRO's achievements command global respect. The historic success of Anti-Satellite Missile Test, ASAT, has established India as a credible space power. Along with all these achievements, sir, an independent space force is also a strategic necessity today. Our greatest strategic adversary, China, operates a dedicated strategic support force. US established its space force in 2019, so we cannot afford institutional complacency when other nations are recognizing our space dominance, sir. Sir, the Defence Space Agency that we have today is an important first step, but it remains transitional. It functions within the existing tri-service structure and is headed by officers on rotation and does not yet possess an independent cadre, a permanent doctrine authority, or full unity of command over space operations. Our dependence on space is accelerating. With Phase 3 surveillance systems and dozens of military satellites planned, protecting our space assets will soon require continuous, dedicated military operations. Space warfare is fundamentally different, sir. It demands specialized doctrine, dedicated career officers, continuous situational awareness, and seamless coordination with ISRO and industry. Overstressed traditional commands cannot manage this indefinitely. Therefore, sir, I request the government to constitute a high-level committee to examine options for an independent space force and space warfare academy and submit recommendations at the earliest. We can wait for the first silent war to disable our economy, or we can ensure that no such war is ever fought. Sir, we need this force not to win a war in the stars, but rather we need it so that we never lose one on the ground. Thank you. Okay. श्रीमान प्रमोद तिवारी जी।
मैं आपका आभारी हूं कि एक बहुत ही मानवीय प्रश्न पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये सीधे सीधे नेता सदन से जुड़ा हुआ है। मैं नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2013 में 8 अक्टूबर को श्रीमती सोनिया गांधी जब रायबरेली से सांसद थी, यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पे यूपीए 2 में एम्स की आधारशिला रखी गई थी रायबरेली में। मैं इस संदर्भ में आपसे 2 बार मिल भी चुका हूं। आज 12 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद अब तक पूर्ण क्षमता के साथ आमजन की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में पूर्ण सक्षम नहीं हो पाया है एम्स रायबरेली, जबकि ये संस्थान उत्तर प्रदेश के मध्यांचल क्षेत्र के साथ साथ बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्से की बड़ी आबादी के लिए जीवन रक्षक एवं उन्नत चिकित्सा सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। एक वानगी देखें, प्रारंभ में 960 बेड 960 बेड का प्रारूप था, 610 बेड। सीनियर डॉक्टर्स के संख्या में भारी कमी है। मैं एक वानगी देता हूं, 200 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की पोस्ट है और 37 है, 37 200 के अनुपात में 37। एम्स रायबरेली की स्थिति इसलिए और अधिक चिंताजनक है कि उस संस्थान में प्रोफेसर के 33 पद स्वीकृत है, 33 और 7 नियुक्तियां हैं। मनवरी, राजनैतिक विद्वेष की भावना से इससे ज्यादा कुछ दुखद नहीं हो सकता, जबकि 26 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसी प्रकार एडिशनल प्रोफेसर के 26 में से केवल 5 नियुक्तियां हुई हैं। कुल मिलाकर संस्थान में फैकल्टी के 201 पद स्वीकृत हैं और 85 पद रिक्त हैं, 85 पद रिक्त हैं। ये शैक्षणिक और चिकित्सक सेवाओं की गुणवत्ता पर निरंतर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। स्थिति ये है कि देश में जब अन्य संस्थान इसके बाद आए वो बना दिए गए, पर ये चूंकि मैं तो इसे कहूंगा राजनीतिक विद्वेष से नहीं किया जा रहा है रायबरेली। मान्यवर, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, 1626 मेडिकल एवं नॉन मेडिकल स्टाफ के अगेंस्ट 450, 1200 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ 174, 108 टाइप 2 मकान की जगह टोटल 2006। अच्छा, सबसे दुखद है कि जो 2260 का बजट आया है उसमें इसके लिए धन नहीं रखा गया। इसीलिए मेरी चिंता ज्यादा है। कम से कम अस्पताल, चिकित्सा, शिक्षा राजनीति से अलग हटके करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि श्रीमती सोनिया गांधी ने एक बड़ा कदम, अच्छा कदम उठाया श्रीमान था और नारायण आप साह इसलिए नहीं कर रहे। पांडा के जी, श्रीमान नारायण साह के पांडे के जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे जिले बागलकोट में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज और जगत ज्योति बसवेश्वर महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए रोका जा रहा है। ये बड़ी ही दुर्भाग्य और दुखद विषय है। बागलकोट नगर पालिका 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पास किया और जगह भी निर्धारित की गई, और उस जगह निर्धारित होने के बाद तमाम एनओसी लिए गए, पीडब्ल्यूडी का, पुलिस डिपार्टमेंट का और इलेक्ट्रिसिटी का, सबका एनओसी भी मिल गया। निर्धारित जगह पर भूमि पूजन का भी हो गया। उस भूमि पूजन के वक्त सभी जनप्रतिनिधि, कॉरपोरेटर भी उपस्थित थे और नगर पालिका के सभी सदस्य उपस्थित थे, आयुक्त उपस्थित थे और हिंदू समाज के सभी गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। जन सहयोग के लगभग 60 लाख रुपए खर्च करके निर्मित 18 फीट के 2 प्रतिमाओं के तैयार है और उसी जगह उस प्रतिष्ठापित करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। जब हमने प्रतिमा स्थापित करने के लिए निकला तब हमें जिला प्रशासन से रोका गया और आज भी रोका जा रहा है। इसके लिए हमने 2 बार जिला प्रशासन से मिले, कलेक्टर से भी मिले और राज्यपाल महोदय से भी मिलकर इसके ऊपर अवगत करवाया गया। यह प्रतिमा क्षेत्र का गौरव का प्रतीक बनेगी, युवाओं के लिए एक प्रेरणा
पुंज बनेगी। कर्नाटक सरकार का यह प्रतिरोध सनातन धर्म का विरोध ये है, हिंदू धर्म का विरोध है, श्रद्धा केंद्र का विरोध ये है और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव पर उसी प्रतिमा का उसी जगह पर अनावरण करे, इसके लिए आपका हस्तक्षेप और सहयोग चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कर्नाटक सरकार को इस विषय पर त्वरित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशन जारी कराए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह सगानी जी, डॉक्टर एम तनबाल जी। Honorable Chairman Sir, I rise to draw the attention of the August House that the Government of India has been implementing several important social security schemes with the objective of ensuring protection and dignity for the most vulnerable sections of the society. These include the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Widow Pension Scheme, PMAY, etc., and the Annapurna scheme, which provides food support. Eligibility under all these schemes is primarily linked to beneficiaries being classified as below poverty line. The BPL is presently being used for determining eligibility is based on a survey conducted nearly 15 years ago. Since then, there have been significant changes in the country's demography and socio-economic conditions. Population growth, rising cost of living, unemployment, and livelihood insecurity have substantially altered the poverty profile. As a result, many genuinely deserving and vulnerable individuals are excluded from the existing BPL list. This situation has affected the effective delivery of welfare benefits, preventing these crucial schemes from reaching the intended beneficiaries. Therefore, it has become absolutely essential to undertake fresh and comprehensive nationwide survey to reassess poverty levels and to prepare an updated BPL list reflecting present realities. Further, considering steep rise in prices of basic necessities, the annual income ceiling prescribed for defining poverty line also needs to be revised in realistic manner. I therefore urge the government to take urgent steps to conduct a fresh enumeration exercise and revise the poverty line criteria so that social welfare schemes truly benefit to the poorest and deserving sections of the society. Thank you, sir. Dr. Sasmit Patraji. Sir, on behalf of my party, the Biju Janata Dal, and our Honorable Leader, Shri Naveen Patnaik ji, I focus on three key pillars for the holistic infrastructural development of southern Odisha's districts. It can be considered as a package which should really improve the overall development. These three pillars are railways, national highways, and airports. I start with the railways. For the Ganjam district, the railway wagon technology park at Sitarapalli, the Gopalpur to Rayagada new line, the Brahmapur to Sambalpur line via Hinjli to Aska to Phulbani, and the modernization of Brahmapur railway station are extremely crucial. For Gajapati district, the Naupada to Gunupur to Theruvali second line is becoming very important. For Kandhamal district, the Brahmapur to Sambalpur line going through Phulbani and the Khorda to Bolangir line that has been languishing for years need to be stabilized and expedited primarily through the Kandhamal belt. For Rayagada district, the Gurupur to Theruvali new line and the Vijayanagaram to Titlagarh third line are required and is necessary now. For Koraput district, the Jaipur to Navrangpur, Jaipur to Malkangiri, and the Kota-Valasa Koraput doubling are equally important. I come to Navrangpur district, a very important district of southern Odisha. The Junagadh to Navrangpur and the Jaipur-Navrangpur lines are crucial that are delayed. Further, for Malkangiri district, the Jaipur to Malkangiri and Malkangiri to Pandurangapuram lines are necessary and work is yet to start. I come to the second pillar, Honorable Chairman Sir, national highways. In Ganjam district, the four-laning of the National Highway 157, starting from Brahmapur to Phulbani to Bodh to Sambalpur, is very crucial. It is still very narrow, has to be four-laned. Brahmapur to Koraput, Lordship, the highway is extremely important
and that work is yet to be expedited. In Gajapati, the Vijayawada to Ranchi economic corridor is important for the tribal communities staying there. In Kandhamal, the widening of the National Highway 157 Ghat sections at Kalinga, Phulbani and Ranipathar is important. Many precious lives are lost because of accidents regularly. In Raigada, the Vijayawada to Ranchi corridor stretch and the Palasa to Parlakhamundi to Raigada to Bhavanipatna road will be the corridor from the east coast right up to the western part of Odisha. I come to Koraput, National Highway 26, Borigumma to Jaipur, and the Jaipur-Kotpad bypasses are delayed. Work needs to expedite. I come to Nabrangpur. The Nabrangpur-Koksarai is delayed. Malkangiri, the Malkangiri to Motu corridor is delayed. Has to be expedited. The last 7 seconds, Rangailunda Brahmapur Airport needs to be expedited. I hope the government will take action. Thank you. Dr. John Britas ji. Thank you very much, sir. This is to bring an important matter to the attention of this August House, sir. So there is a mounting nationwide concern regarding the retrospective implementation of the teachers' eligibility test criteria, which will adversely affect tens of thousands of in-service school teachers appointed prior to RTE Act 2009, sir. So I will just give the details in a nutshell, sir. So Supreme Court in 2025 adjudicated that by interpreting Section 23 of RTE Act, it said that TET, that is eligibility test, constitutes a mandatory minimum qualification not only for the fresh recruits but also for those teachers who have been appointed prior. That means giving a retrospective effect to it, sir. Sir, this has created so much of havoc. Now, sir, the Supreme Court also said that if at all they don't pass the TET, they would be asked to retire in a compulsory mode, sir. Sir, teachers with less than 5 years of remaining service were granted limited relief, but this is only limited. They would be ineligible for promotion, sir. Sir, I do accept any standards that are being brought in to enhance the quality of the education, sir. But interpreting a section and making it retrospective, that's not fair, sir. That's not fair. Sir, it is going to affect thousands and thousands of teachers in this country, sir. Sir, already the plight of the school education in this country. You know, sir, in government sector alone, last 3-4 years, 18,727 schools were closed down, mostly in states like Bihar, UP, Himachal, etc. Sir, if you look at the vacancies that exist in the education front, sir, you know what is the number of vacancies? 3,57,862 as per the Unified District Information System, which is maintained by the Government of India. And can I tell you, sir, out of these vacancies, 1,93,000 vacancies exist in Uttar Pradesh alone, sir. Please understand, sir. Sir, I call upon Sriman P. Chidambaram to raise the discussion. Sir, neither the cabinet minister nor the minister of state of finance is here, sir. Cabinet minister is sitting. Cabinet minister is sitting there, and MOS is there. MOS is there. Please continue. Where is the MOS finance? Where is the MOS finance? MOS finance is there. Not the Pankaj Chaudhary is not there. Pankaj Chaudhary is there. Yeah. You have to check your specs. Dekh liya. Chipet hai, sir, chipet. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'm honored that my party has asked me to start the debate on the budget. I want to first frame the scope of the debate. Under the rules and the tradition of this House, in a budget discussion, every subject, every ministry, every department
for whom money is allocated and an appropriation is sought can be discussed. I think the House will agree with my framing of the scope of the debate. The first point I wish to make is the economic survey is prepared by the Economics Division of the Finance Ministry. A lot of people put on a lot of work and do a lot of research and analysis to prepare the survey. It runs to over 700 pages. The narration is about 450 pages, and the statistical appendix is about over 200 pages. I wonder whether the government and its key ministers read the economic survey. The most charitable view is that they don't care for the chief economic advisor. The uncharitable view is that while the chief economic advisor is bringing the government down to earth, what is happening around the country, I think the government and the ministers want to soar high and reach another planet as if we are not living on earth. There are a number of challenges listed in the economic survey. I'll take up only 4 challenges. Capital investment. For some years now, for almost 12 years, capital investment, gross fixed capital formation is stuck at 30% of GDP. Net FDI in 2024-25 has collapsed to less than 0.09%. FPIs, foreign portfolio investors, are pulling out. Private investment, although companies are cash rich, is stuck at 22% of GDP. In this situation, where neither the public sector, nor the private sector, nor the foreign investor is investing in India, this government has cut capital expenditure. In the year that ended 25-26, they have cut capital expenditure by a whopping 1,44,376 crore. The centre has cut its capital expenditure by 25,335 crore, and what is worse is the state's capital expenditure, for which the centre gives advances, is cut by 1,19,041 crore. Should there not be an explanation? Why did you not give the money? Or did you impose conditions which the states can't fulfill? There must be a reason for that. No reason in the Honorable Finance Minister's speech. The second challenge is unemployment. All of us agree, all of us should agree, in our constituencies, the most number of requests is for job. Youth unemployment is 15%. Less than 25% of the workforce is in regular employment. There is a shift to self-employment, and more workers are in the agriculture sector than they were 4 or 5 years ago. Only in a country with 144 crore people, only 195 lakh, that is less than 2 crore, are employed in a factory. Manufacturing
which is largely factories, is stuck at 16% for many, many years. I'll give you an example. The PM internship scheme was touted. Last year, the finance minister made that statement. Corporate houses were persuaded to offer internship. 1,65,000 offers came. Only 33,000 were accepted. Are there no young men and women to accept an internship in big companies? Only 33,000 accepted. And after 33,000 who accepted, 6,000 left the job. So what is wrong with the internship scheme? She touted it last year. She must explain why the scheme has totally failed this year. The third challenge is the slow growth rate. In paragraph 14 of the Honorable Finance Minister's budget speech, she said, and I'll quote that, the Reform Express is well in its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. The Reform Express is well in its way. Along with Vande Bharat and Tejas, they may even introduce a train called Reform Express. But the Reform Express is stuck. It's not derailed yet, but it is stuck. Yes, yes. Look at the nominal growth rate. The nominal growth rate in 2023-24 was 12%. In 24-25, it came down to 9.8%. In 25-26, the year which will end in a month, it's come down to 8%. Where is the Reform Express gathering momentum? Where is your bullet train? No bullet train is coming. You refer to the real GDP growth, real GDP growth. But Dr. Surjit Balla, one of your strongest supporters, has mocked the real GDP growth. That's because your CPI inflation is 0.5%, your wholesale inflation is negative, your deflator is only 0.5. With these numbers, you can always make a GDP growth. But the nominal growth has come down from 12% in 23-24 to 9.8% in 24-25 and 8% in 25-26. I'm glad the Honorable Finance Minister is there. I'm pointing out, Madam, that your paragraph 14 of your budget speech is totally wrong and unacceptable. Yes. The last challenge, there are others who will touch upon the other challenges. No, you've got The 10 minutes slow left. fiscal consolidation. You can speak more. Now, fiscal deficit is a well-known measure, internationally accepted measure. I find that the government is moving away from fiscal deficit to debt to GDP ratio. Dr. Rangarajan, one of the most knowledgeable economists in this country, has pointed out that the two are interdependent. If fiscal deficit comes down, the debt to GDP ratio will also come down. The debt to GDP ratio comes down, the fiscal deficit will also come down. It's two sides of the same coin. I won't elaborate on that. The fiscal deficit in 25-26 is 4.4%. She has achieved her target. But next year, it will come down only to 4.3%. And the revenue deficit in the current year will be 1.5%. And next year also, it will remain at 1.5%. Now, what is the FRBM target? FRBM target is 3% of
fiscal deficit. And the revenue deficit, the ideal is to eliminate the revenue deficit, but it can be up to 1%. At this rate of consolidation, which Dr. Rangarajan in a very analytical article has called out as a mockery, at this rate of fiscal consolidation, it will take 12 years to achieve the FRBM target. The FRBM target was last achieved only in 1 year, 2007-8, on the fiscal deficit. But since then, the fiscal deficit is ballooned, and then they're trying to bring it down. But at this rate of fiscal consolidation, it's like taking baby steps. A baby steps will not allow you to run 100 meters or 1,000 meters race. And then what saved the Honorable Finance Minister, not because of higher revenues, but because of higher financial discipline, what saved her was she cut total expenditure by 1 lakh crore, and the RBI gave a dividend of 3 lakh crore. That is how it saved the fiscal deficit. But for these cruel cuts in capital expenditure, but for the bonanza received from the RBI, the fiscal deficit will not be 4.4%, it will be 5.5%. Other challenges listed in the economic survey will be taken up by my learned friends. Now I'm looking for the Honorable Mr. Shivraj Singh Chauhan. I'm the Honorable Mr. C.R. Patil. I'm amazed. Under one minister's charge, under one minister's watch, agriculture and rural development, there is a cut in expenditure of 60,000 crores. Shame. Agriculture has been cut by 6,985 crore. Rural development has been cut by 53,067 crore. Shame. Rural areas don't require any development. What is the minister doing? What are our officers doing? What are they doing throughout the year? That in 1 year you spend 60,052 crore less. On a Gram Sadak Yojana, and villages are crying for Gram roads, 7,201 crore is the cut. On Awas Yojana, the much touted housing scheme, the cut is 22,331 crore. Don't our people require roads? Don't our people require houses? On grants and aid to states, the cut is 30,391 crore. You blame the states, but why don't you give them money? And there's not a word of explanation why this cut. Somebody in the cabinet, the Honorable Prime Minister must ask the minister and the ministry, why is there under your watch a 60,000 crore cut? Correct. I'm looking for Honorable Mr. C.R. Patil also. The Jal Jeevan Mission was allotted 67,000 crore. You know what they spent? 67,000 crore. They spent only 17,000 crore. What is this going on? And where is Jeevan? Why is there a budget? People are dying because of polluted water, In Indore. contaminated water in Indore. Today we saw a story in a newspaper about a Dalit village in one of the states where 4 sisters committed suicide, and the reporter went to that village. It has no tap water, it has no public toilets, there are no personal housing toilets. Shame. And then you don't spend on
roads, you don't spend on housing, and the Jal Jeevan mission is cut 50,000 crore. Defense expenditure is at a low of 11.4% of total expenditure. This is the nationalism. Defense expenditure is 1.6% of GDP. 1.6% of GDP, and defense expenditure is 11.4% of TE, and this is an all-time low. Scientific departments, my good friend, a very suave friend, scientific departments did not spend 18,665 crore. Urban development did not spend 39,573 crore. Social welfare was cut by a round number, 9,999 crore. What are the ministers doing? Why are they not fulfilling programs and spending the money? Sir, I must compliment the Honorable Finance Minister. She has found a way. She has found a formula to mesmerize at least one half of the house. She throws schemes, funds, missions, committees. I counted 24. One half of the house applauded. But here is the situation. In Biopharma Shakti, she has allotted 10,000 crore in the next 5 years. This is already complete. This government has already completed 2 years. It's only got 3 years. How can it allot for 5 years? Be that as it may. Be that as it may. 10,000 crore for 5,000 years. She's optimistic. I congratulate her and wish her well for her optimism. 10,000 crore. Allocation in 26-27, 500 crore. Indian Semiconductor Mission 2.0. What happened to ISM 1.0? There's no mention. On the revenue account, 1,000 crore. Electronics Component Manufacturing Scheme, 22,919 crore has been expanded to 40,000 crore. Good. But the allocation is 1,500 crore. 3 dedicated chemical parks. At page 20 of the expenditure budget, there is a note which refers to the 3 dedicated chemical parks. But the outlay is 0. Scheme for container manufacturing, 10,000 crore in 5 years. At page 21, allocation is 0. National Fiber Scheme, Mega Textile Park Scheme, Mahatma Gandhi Swaraj Institute. I'm grateful that they remembered Mahatma Gandhi and they brought him back to a scheme. National Fiber Scheme, Mega Textile Park Scheme, Mahatma Gandhi Swaraj Institute. There are announcements, but where is the outlay? I couldn't find any outlay for any of these schemes. Champion small manufacturing enterprises, small and medium manufacturing enterprises. The allocation is 54 crore. How do you allocate 54 crore to champion SMEs? I'm afraid this budget is cautious, parsimonious, forgetful of the past year, and this will vanish. It has already vanished from the newspapers. Another minister and another deal is occupying the front pages now. The finance minister and the finance minister's budget speech has vanished. This is a forgettable budget which has been prepared by a finance minister who forgot her promises made in this house last year.
श्रीमान अरुण सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने हमको बोलने का मौका दिया। और यह 9वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार बजट पेश किया है, इतिहास है। और अभी तमिलनाडु से आते देश के वित्त मंत्री हैं और यह सब देशवासियों को यह बजट पेश करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय सभापति जी, जब बजट का साइज देखें तो बजट के साइज को देखेंगे तो कुल मिलाकर के यह 53.5 लाख करोड़ रुपए है। तो एक एक हेड ऑफ अकाउंट की जो चर्चा कर रहे थे, इनके समय में अगर पूरा बजट का साइज देखें तो 16.65, मतलब पहले से लगभग 3 गुना बजट का साइज हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है कि 53.5 लाख करोड़ रुपए का। और क्योंकि यह इस बात को, इस बजट को अगर हम देखेंगे तो यह लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त करना, जो हमारी आर्थिक प्रगति है उसको और तेज गति से किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना, और सबके साथ सबका विकास, इसके मूल मंत्र को भी संकल्प के साथ सिद्धि करने का इस बजट में दिखता है। सर, अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो हम सबको ये देखना चाहिए कि कुल मिलाकर के 12.5 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12.20 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इनके समय 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए होता था। 17.72 लाख करोड़ रुपए यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है। 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देने जा रही है। और उसके साथ ही साथ जो हमने नेक्स्ट जेन जीएसटी को देखा कि यह जब लागू हुआ और उसके माध्यम से देशवासियों ने बचत उत्सव के रूप में मनाया, 1 लाख करोड़ रुपए देशवासियों को इस जीएसटी को लागू करने से, दर कम करने से उनको लाभ हुआ। तो एक तरफ तो खर्चे बढ़ाना, दूसरी तरफ जीएसटी के माध्यम से लोगों को लाभ देना, उसके बावजूद भी अगर फिजिकल डेफिसिट 4.3% अगर अगले साल का लक्ष्य रखा है तो मैं हृदय से माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि किसी भी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं किया। सर, 2013-14 में हम सबको ध्यान ही है कि जब कांग्रेस का समय था, इनकी सरकार थी, तो पॉलिसी पैरालिसिस था, निराशा का वातावरण था, फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी में हम थे। उस समय भी फिजिकल डेफिसिट 4.5% था सर, लेकिन 4.5% में फिजिकल डेफिसिट वो सही नहीं था। अगर रियल फिजिकल डेफिसिट उस समय भी निकालते तो बहुत सारे अंडर प्रोविजनिंग थे, फर्टिलाइजर है, फ्यूल सब्सिडी है, ऑयल बॉन्ड से, अगर इनको अगर हम जोड़ देते तो यह 7% से ऊपर फिजिकल डेफिसिट उनके समय जाता। तो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, अपने को देखना चाहिए सर। आज रेवेन्यू डेफिसिट की जो बात करते सर, जब यूपीए के समय था तो 3.2% वो रेवेन्यू डेफिसिट था। सर, 2016-17 में चिदम्बरम जी बोले थे यहीं पे कि हमको कोशिश करना चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0% ले आने की कोशिश करना चाहिए, और जो इनके समय 1.8% था। लेकिन आज वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जो अगले साल होगा उसका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.03% में लगभग 0% होने वाला है। यह बजट उठा के देखेंगे तो हम सबको देखने को मिलेगा सर। जब कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करते सर, तो कुल मिलाकर के जब 12.2 लाख करोड़ रुपए अगर हम देखेंगे तो पूरे बजट का 22.8% यह पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, जो कि लगातार हर बजट से अगर तुलना करें तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और यह बताने की आवश्यकता जरूर है कि यूपीए के समय में कैपेक्स एक्सपेंडिचर का 13-14 का देखें तो 15%। अरे भाई, आपके समय 15% होता था, हमारे समय में 22.8%। इतनी बड़ी वृद्धि हुई तो आप कैसे इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं सर? डेट टू जीडीपी अगर हम देखें सर, तो डेट टू जीडीपी में जहां अमेरिका का 125% है सर, यूके का 101% है, चाइना का 96% है, फ्रांस का 113% डेट टू जीडीपी है, जापान का 230% डेट टू जीडीपी रेशियो है, और जहां तक भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत की डेट टू जीडीपी
55% है, 55.6%, जिसको 50% तक 2030 तक ले जाया जाएगा। यह होता है वित्तीय अनुशासन और किस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो यह इस प्रकार के जो अनेकों जो प्रयास किए गए कि सस्ते लोन को मोबिलाइज किया जाए, उसी का यह नतीजा है कि इस प्रकार से हमको डेट टू जीडीपी देखने को कम मिल रहा है। सर टैक्स टू जीडीपी, सर यह जो है अभी 11.2%, पहले 10.09% होता था सर। इसका कारण यह है कि जो आयकर जो हमारे टैक्स पेई हैं, आम नागरिक है, उस पर सरकार का धीरे धीरे भरोसा बढ़ रहा है, बहुत अधिक मोदी जी सरकार पे भरोसा बढ़ रहा है। उसका सीधा उदाहरण मैं देता हूँ सर। जब 2014-15 में 4.07 मतलब 4 करोड़ रिटर्न फाइल होती थी 2014-15 में, 4 करोड़ से बढ़कर के पिछले साल देखे तो 9.2 करोड़, दो गुना से अधिक इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल हो रही है। यह विश्वास बढ़ा है सर। उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट अगर हम देखें सर, तो डीमैट अकाउंट में भी जो पहले जो 2.5 करोड़ थे, अब 12 करोड़ अकाउंट अधिक खुले हैं, 12 करोड़ अकाउंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग टैक्स दे रहे हैं, और इसलिए टैक्स दे रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे रिफॉर्म्स के माध्यम से उनको सहूलियत दी गई है। सर करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो यूपीए की सरकार थी तो लगभग 4.8 तक पहुंच गया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र पे हम लोग चल रहे हैं। और उसके कारण सर जो आज भारत रक्षा क्षेत्र में हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है। मोबाइल का एक्सपोर्ट 2.9 लाख करोड़ रुपए जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज इंपोर्ट नहीं करते बल्कि 2.9 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स में किस प्रकार से क्रांति आई है सर। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 2013-14 से 8 गुना अधिक एक्सपोर्ट करके 3.3 लाख करोड़ रुपए, इसी प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सर। और सीधा सीधा अगर आंकड़ों में देखें तो जो इनके समय लगभग 4.8% थोड़ा कम हो गया होगा, आज हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है यह 1% से भी कम 0.6% है, 0.6% है। वह दिन दूर नहीं, हम जो यह करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं रहेंगे, हम करंट अकाउंट बहुत बड़े सरप्लस पे जाएंगे 2-3 सालों के अंदर, जो प्रयास हो रहा है सर। आज फॉरेक्स रिजर्व 409 बिलियन डॉलर है, जो इनके समय 300 बिलियन डॉलर होता था। मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा सर, पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर है। सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेकर के सभी विश्व की जो संगठन है वो भारत की नीतियाँ, भारत के जो योजनाएं हैं, भारत की कार्य प्रणाली है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और वह देख रहे हैं कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल हब बनता जा रहा है। उसी का नतीजा देखेंगे तो एक साल के अंदर यह रिकॉर्ड है कि भारत ने जो एग्रीमेंट किया, 6 एग्रीमेंट किए थे। इंडिया ओमान CEPA एग्रीमेंट हुआ, उसके साथ इंडिया न्यूजीलैंड FTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इंडिया UK CETA एग्रीमेंट हुआ, इंडिया EU अभी जो लेटेस्ट हुआ FTA एग्रीमेंट हुआ, और सबसे बड़ा इंडिया US ट्रेड डील हुआ। ये भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य, भारत की शक्ति को दर्शाता है कि भारत ग्लोबल हब बनने जा रहा है। प्लीज सर, आज इन्फ्लेशन उधर वाले बैठे हैं, जरा मैं बताता हूँ, उधर वाले बैठे हैं, जरा आपको लोगों की बारे में जरा थोड़ी भी समझ हो तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो MSME छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको कितना बड़ा लाभ होने वाला है, कितना वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। यह सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है सर। अगर इन्फ्लेशन देखें सर, तो इन्फ्लेशन भी सर हम सबको मालूम है। इसी सदन में खड़े होकर के कांग्रेस के वित्त मंत्री कई बार बोलते थे कि वी आर ट्राइंग टू कर्टेल द इन्फ्लेशन रेट, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार बोलते उतनी बार इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता। इनके समय जो महंगाई दर जो था इन्फ्लेशन, वह 9.49% था, अब जाकर के 2% से भी कम महंगाई रेट है। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियां, प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है सर। जब
हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, चूंकि आपने कहा कि सभी मंत्रालयों से जुड़ा हुआ ये बजट होता है, तो सभी मंत्रालय, हम कुछ मंत्रालयों की चर्चा कर देते हैं सर। जो रोड ट्रांसपोर्ट है सर, इसमें कल्पना करिए, इनके समय 31,302 करोड़ रुपए, अब जाकर के 3,09,873 में 10 गुना रोड ट्रांसपोर्ट में यह मोदी सरकार एलोकेट कर रही है, यह उपलब्धि है। और इसी के कारण, अरे दिग्विजय जी, इसी के कारण आप एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, इसी के कारण वंदे भारत ट्रेन पे चलते हैं, इसी के कारण नए नए एयरपोर्ट बने हैं, इतना पैसा एलोकेट हो रहा, तो आप लोग ही आनंद ले रहे हो सबसे जी, और आप लोग तारीफ नहीं करो, बड़ी बात तो है सर। अब हमारे शहरी जो आवासीय एवं शहरी मंत्रालय सर, इसको भारी भरकम बजट दिया गया है, 85,522 करोड़, इनके समय 1,486 करोड़ रुपए होता था। इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे हर गरीब के पास मकान होना चाहिए, 4 करोड़ मकान बन गए, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब देश का ऐसा न बचे जिसके पास उसका आशियाना न हो, उसका घर न हो। इस बात को यह प्रतीत होता है कि 85,000 करोड़ का बजट इसलिए अलॉट किया गया है कि सभी गरीबों के पास मकान रहे, एक गरीबों को आश्वस्त करने के लिए इतनी बड़ी बजट इसमें रखी गई सर। रेलवे के संबंध में सर, रेलवे तो सर एक तरीके से कहिए तो रेलवे के जो नई नई ट्रेनें चल रही सर, और जिस प्रकार से पटरियों में उनका नई पटरियां भी बन रही, चौड़ीकरण भी हो रहा सर। और रेल के क्षेत्र में सर, कल्पना करिए सर, आपके समय यूपीए के समय 2013-14 से सर केवल 26,000 करोड़ रुपए में क्या करेंगे। हमारे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट जो एलोकेशन हुआ 2,81,377 करोड़, मतलब 11 गुना वृद्धि। कोई कल्पना कर सकता है कि इन 10-11 सालों में इस रेलवे का बजट इस प्रकार से 11 गुना बढ़ा है सर। क्योंकि हम कहते हैं कि जब रेलवे तेज चलता है तो देश की प्रगति भी तेज हो जाती है। अधिकांश लोग रेल के माध्यम से यात्रा करते हैं सर। सर, इस बजट में 7 हाई स्पीड रेल का चलाने की, उनका विकास करने का घोषणा हुई है। यह आर्थिक प्रगति में एक तरीके से 4 चांद लगाने का काम करेगा सर। डिफेंस के क्षेत्र में सर, हमने सब देखा, सब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे ही देश में बने हुए हथियार, हमारे ही देश में बने हुए मिसाइल किस प्रकार से जाकर के पाकिस्तानी में तबाही मचाने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर में। और रक्षा क्षेत्र में बजट है सर, पहले 2,53,000 करोड़ रुपए इनके समय में होता था, अब 7,84,000 करोड़ रुपए, और पिछले बजट से इस बजट में देखेंगे तो भी 15% की लगभग बढ़ोतरी की गई है सर। किसान हमारा अन्नदाता सर, और अन्नदाता से बढ़कर के कहें तो वो राष्ट्र निर्माता ही है। सबसे अधिक अगर लोग काम करते हैं तो कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं सर, उसमें भी 4.5 लगभग 5 गुना उसमें फंड का एलोकेशन बढ़ाया गया। किसान सम्मान निधि सर, एक बार आपने लोन वेवर किया और उसको बार बार कई साल उसको बोलने का काम किया कि हमने लोन वेवर किया। यह तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने खजाने से, सरकार के खजाने से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4,09,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में दे दिया है। इसलिए किसान उनको अपने मसीहा के रूप में देखता है। आपके यहाँ भी किसानों को मिल रहा होगा, और इसीलिए तो आप इसको, असली बात यह है कि हम क्यों चुनाव जीतते हैं ना, यही सब कारण है। जब किसान को, गरीब को सीधे उनके अकाउंट में पैसा मिलता है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है और एक तरफा हमको समर्थन देने का काम करता है। और इसका नतीजा सर, कई कृषि योजना, कई प्रकार के जो हम कृषि को प्रोत्साहन करने की योजनाएं ले आए, उसका नतीजा देखिए सर। आज अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन 357 मिलियन टन आज अन्न का उत्पादन है, और आप भी समझिए आपके समय 251.67 लाख मिलियन टन था। चावल का उत्पादन सर, चावल का उत्पादन 150 मिलियन टन है, और विश्व में नंबर 1 है। दूध का उत्पादन नंबर 1 है। मछली के उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई है। पशुधन में 195% की वृद्धि हुई है। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में 362 मिलियन टन का उत्पादन हुआ सर। सभापति महोदय, इसी सदन में कांग्रेस की सरकारें केवल खाद्य सुरक्षा की बात करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में
देश वैश्विक कृषि नेतृत्वकर्ता बन रहा है, जहां किसान की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है और एक साथ चल रही है सर। सर एक चीज मैं जरूर बताऊंगा सर, ये मनरेगा के बारे में इन्होंने बहुत शोर मचाने का काम किया। मनरेगा सर, मनरेगा के बारे में कि सरकार उसका बजट खत्म कर रही है, मनरेगा को खत्म कर दिया, पैसा उसको नहीं दिया गया, नीचे इतना भ्रम फैलाने की असफल कोशिश की, क्योंकि जमीन में तो कोई जना लोग इनकी बात को न सुन रहे थे न एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन सर जी राम जी का के बारे में जब इसमें हमने देखा बजट में सर, और आप सबने भी देखा हो, तो आपने तो मनरेगा के लिए 33,000 करोड़ रुपए 2013-14 में देते थे, केवल 33,000 करोड़ रुपए। हमारे इस बजट में अगर देखें तो पिछले साल 88,000 करोड़ रुपए था, इस बार 42% बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ रुपए जी राम जी के लिए निर्धारित किया। क्योंकि जब मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो हमारे कृषक श्रमिक हैं 100 दिन के जगह 125 दिन उनको हम काम करने का अधिकार दे रहे हैं, और ऊपर से जो उनको काम नहीं देगा पेनाल्टी भी लगाने का काम कर रहे हैं, तो बजट भी उसी प्रकार से बढ़ा है। अब आपकी कांग्रेस के और विपक्ष के लोग सुन ले, आपकी बोलती नीचे बंद हो गई है, क्योंकि ये बजट में इतना बड़ा एलोकेशन है। अब जाके आप समझाओगे तो कृषि श्रमिक दौड़ा लेगा आपको। इसलिए मेरा सलाह है कि आप नीचे जाकर के मनरेगा की बात मत करना, ये जमीनी आपको हकीकत, जमीनी हमको ग्राउंड रियलिटी समझा रहे सर। जल जीवन मिशन में ठीक है, पिछले बार थोड़ा कम खर्च हुआ क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं आया होगा, लेकिन इस बजट में 67,670 करोड़। भाई आप ये बताइए, आप किस नैतिकता के आधार पर प्रश्न कर रहे हैं? देश की आजादी के बाद नल से जल केवल 3 करोड़ घरों में कांग्रेस पहुंचा पाई थी, केवल 3 करोड़ घरों में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। आप किस नैतिकता से प्रश्न कर रहे हैं भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने गिरबान में झांकिए जरा, है हाँ, ये समझ ही नहीं रहे। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं सर। एमएसएमई के बारे में जरूर बात करूंगा सर। मैं एमएसएमई के सेक्टर के लोगों से बात हो रही है, इतने प्रसन्न है सर, इतने खुश हैं वो कि जो इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग जो सिस्टम है उसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि उनको पेमेंट तुरंत मिल जाएगा, उनकी जो क्रेडिट अपना वर्किंग कैपिटल हो और मजबूत होगा। तो वो लोग काफ़ी इसको जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को जो अनाउंसमेंट किया है जेम से लिंक करते हुए, यह बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 7 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जो देश में सबसे अधिक दूसरे नंबर एम्प्लॉयमेंट को देता है तो एमएसएमई है सर। ऐसे इनकम टैक्स में भी सर, इनकम टैक्स में बहुत सारे लोगों को, आम जनमानस को लाभ हो। पिछली बार जब 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स छूट दिया गया तो उसको बहुत प्रशंसा हुई है, उसका लाभ इस साल में भी मिल रहा है। ऐसे कई इसमें और भी घोषणाएं की गई है कि जो हमारा जो पहले जैसे उदाहरण के रूप में अगर किसी का असेसमेंट होता है उसमें टैक्स और पेनाल्टी लगाई जाती है, तो पेनाल्टी पे ब्याज लगने वाला अमाउंट जो है फर्स्ट अपील का जब तक का उसका निर्णय नहीं आएगा उस पर किसी प्रकार का वह ब्याज नहीं लगेगा सर। ऐसे टीसीएस ऑन एजुकेशन सर 5% के जगह 2% किया, लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते सर, इस बजट के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के लक्ष्य को सुनिश्चित किया गया सर। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विश्वास को साकार करता है, विकसित भारत कोई सपना नहीं बल्कि सुनियोजित संकल्प है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भी है, समावेशी भी है, विश्व के लिए विश्वास का केंद्र भी है। इस बजट के माध्यम से सर मैं यही कह सकता हूं कि पूरे देशवासी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, और आगे भारत कहां पहुंचने वाला विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सर, जब 10 सेमीकंडक्टर यूनिट लग चुकी हैं और उसके साथ साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसकी घोषणा हुई है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हो रही है, और यह
सर एक तरीके से कहिए कि जो हम कभी सोचते नहीं थे कि ये भारत को भी करना चाहिए, भारत को भी इस दिशा में बढ़ना चाहिए था, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सब क्षेत्रों में, चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर हो, और चाहे इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र हो, उसमें बहुत तेज गति से काम हो रहा है। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी देशवासी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी का भी ढेर सारा अभिनंदन करता हूं इतने अच्छे बजट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव जी। Thank you, sir. As I stand to speak on the union budget of 2026-2027, I would like to thank my party, and I have been listening to Honorable Member of Parliament from the BJP who just spoke. But what is important about this budget, sir, is not what this budget is actually addressing. What is jarring to my ears and to the common man of this country are the issues on which this budget is silent. The second thing, which is glaring to my eyes, is huge loopholes when it comes to the data that the Honorable Finance Minister is depending on to tell us about growth, poverty elevation, etc. Last but not the least, sir, which we have been saying for the last 4 or 5 years, that discrimination and disparity in the way you treat the states cannot, under any circumstances, ensure the growth of India as a nation. So, some examples of manipulation of data. 9 consecutive budgets, Honorable Finance Minister has presented, matching the number of budgets that Honorable Member, former Finance Minister, Mr. Chidambaram has presented. It is history, no doubt, but it is also history that the first time in this nation, a Finance Minister has given us 6 budgets without a census. So, Raja ko pata hi nahi इस देश में प्रजा कितनी है और उस प्रजा की हालत क्या है. The question I ask myself that now that the census data, the census work has started, sir, and they're talking about digitization and self-enumeration, I want to ask the government that if you were planning on self-enumeration, then what is the reason that you did not start the census where people of India could have sat in their homes during the pandemic and given you the data and the census would have started? It is a shame that a Finance Commission of India, which devolves funds to the states on the basis of population, has been working without a census for 6 years. So, secondly, we hear about 25 crore people who have been pulled out of the multi-dimensional poverty over a decade. If that is true, I'm very happy, sir. But I would like to ask for a clarification from the Honorable Finance Minister of India that Niti Aayog, the think tank, is it a fact that to declare someone non-poor, one of the indicators that have been included in the index is Jan Dhan account, and 23% of the Jan Dhan accounts are inactive, sir. In the Lok Sabha, they have said 13 crores out of 56 crores accounts are inactive. So why should we believe that 25 crore people have been pulled out of poverty? Sir, GDP, हमको बड़ा गर्व होता है जब वहां से आंकड़े आते हैं 7.4 ये वो. So why is the IMF questioning our base here? We have seen different PIB releases that the Vishwanath Goldar committee report is yet to out, where they are recommending 2022 and 23 as the base year. So unless there's a calculation on that basis, why should we believe on the GDP and growth data of the country? We are told we are the 4th largest economy ranking, but at 166 out of 128 in per capita income. 5 trillion economy was supposed to happen till 25, but a research report of the SBI states it's a distant dream till 28. Sir, silence of the Finance Minister.
आप इस बजट को युवा शक्ति की बात करते हैं, आंकड़े दीजिए कि कितनी युवाओं को आपने रोजगार दी जब से मोदी जी की सरकार बनी है। सर, मुझे दुख होता है कहने में that the CMIE data shows a dismal record of employment. The PLFS data shows only 1 in 2 graduates are employable. Sir, Assam government तो ढिंडोरा पीट रही है कि हम 2 लाख 1.5 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं. Whereas we have seen that boasting of government jobs cannot solve the problem, sir, of unemployment unless there is a growing private sector and huge private investment in any state. I take pride in the fact that in the report card that Honorable Chief Minister of Bengal has given to every household of Bengal says that in her tenure, unemployment in Bengal went down by 40%, sir, 40%. Sir, inequality. This budget speech is silent on inequality, whereas the scathing report of the World Inequality Report 2026 tells us India is one of the highest in the world, and 100-year high means worse than the colonial era. So the rupee is falling. मोदी जी क्या कहते थे मनमोहन सिंह जी को रुपये के बारे में, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो बार बार पीछे ताकते हैं. सर, हर घर जल. I have a simple question. On 1st February 2024, when an interim budget was announced by Honorable Finance Minister, she allocated 70,000 crores because Prime Minister Modi had said Har Ghar Jal from the Red Fort. It is shocking that soon after the general elections are over in 2014, the central government simply retracts their commitment. After every state sits with the central government and makes an action plan. Top officers of the state and the government of India, this government reneges on its promise. This is nothing short of a financial fraud, sir. Thousands of contractors today are owed money. Sir, fraud to CRPC में भी है. Anyway, sir, now I come to the most potent issues, which is discrimination against the states. Sir, आपने 2 लाख करोड़ रुपए, हम बार बार बोल रहे हैं कि बंगाल का रोक दिया इस सरकार ने. वो कहती है करप्शन है, ये है, वो है. पर मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि NREGS का 52,000 करोड़ बाकी है. दीदी ममता दीदी पीछे नहीं हटे. She has given 50 days of Karmoshri on her own ability. प्रधानमंत्री आवास योजना जो पैसा रोका, दीदी ने बंगाल की लोगों को वंचित नहीं किया. She gave बंगला बड़ी. सर, जल जीवन मिशन जिसका कत्ल इस सरकार ने किया, ममता दीदी ने लोगों को जोले स्वप्नों स्कीम दिया. सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, today when you look at the performance of a state and the debt to GSDP ratio, आपको ये याद रखना चाहिए. जब बंगाल का डेट टू GSDP रेशियो देखेंगे, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ए डबल इंजन सरकार. दिस इज ममता दी सरकार. एंड डिस्पाइट द डेप्रिवेशन, Mamata Di has delivered on every promise that the central government should have. Sir, Assam से आती हूँ, Assam पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ. The recent CAG report has been scathing against the Assam government's budget of 23-24. Sir, Assam government has taken a debt of 1,50,000 crore. Mamata Didi's debt is because of your deprivation. तो डबल इंजन सरकार को इतना बड़ा कर्जा सर क्यों लेना पड़ा, मैं ये पूछना चाहती हूँ. सर, आफ्टर टेकिंग अ डेट वेयर ही इज गिविंग 1,200 देयर, 5,000 देयर, आई वुड लाइक टू say that it is shocking that the CAG is saying that economic spending has reduced by 7.52. I come to an even more important question, sir. Honorable Finance Minister has given 6,000 crores to the Registrar General of India for census. I thank her for it. But
What is worrying me is along with the census is written NPR. NPR is a precursor to NRC. A NRC that after 1600 crores was spent by the Registrar General of India, it was a biggest disappointment and a useless and futile exercise that the Home Minister of India milked for election after election, but till today we don't have a solution. मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, the backdoor NRC that you are doing through SIR is going to backfire on you. And I want the ministers, this government to say, कितने घुसपैठिए पकड़े आसाम और बंगाल में, आंकड़े जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। Honorable Sri P. Wilson, please. Honorable P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. Dr. Ambedkar said, the test of a good government is not how much revenue it collects, but how it spends it and whom it benefits. And this budget would be Dr. Ambedkar's worst fear. It doesn't benefit the farmer, the worker, the graduate, the entrepreneur, and certainly not the states. It buries the federal spirit of our constitution. We are told this is a budget for Viksit Bharat. Nothing can be further from the truth. The government projects a nominal GDP growth of 10% with a total expenditure of 53.47 lakh crores and a fiscal deficit target of 4.3%. Chairman, sir, we are all very concerned with India's debt trap, which is on a deadly spiral. India's debt has risen to rupees 215 trillion, approximately 56% of the GDP, and there is no clear plan in place even after 16 years of BJP rule to reduce debt. There is no denying that debt is an engine for growth, but debt has to lead to income, expansion, or capacity building. You cannot be borrowing to pay your earlier debts, with interest payments accounting for nearly 1/4 of union government's expenditure and around 40% of the revenue receipts for 26-27. The government seems clueless on how to escape this debt trap. The Honorable Finance Minister has spoken about the fiscal consolidation, but is there any real progress? The fiscal deficit is projected to dip only slightly from 4.4% of GDP this year to 4.3% next year, and the centre's debt GDP ratio to 55.6% from 56.1%. At this place, it will take decades to get debt GDP ratio down to the 40% targeted by the N.K. Singh's committee. The BJP loves to attack Tamil Nadu government on its debt, but at least our Honorable Chief Minister, Dravida model government, is borrowing to build schools, hospitals, roads, things that would lead to tangible benefit. I don't see that with the union budget. Sir, the entire nation is very concerned about this trade deal with the USA that Capitol Hill is rejoicing, but we are yet to hear about this in detail from Raisina Hill. First of all, we are very unhappy with the abject surrender to US. India is a proud nation and civilization. This weaponization of tariff should have pressurized the government into submissions. Secondly, how we have welcomed to $500 billion of American exports in 5 years. The total US-India bilateral goods trade was just $132.13 billion in 2025. Now you have committed to purchasing $100 billion every year from America. Who consumes this? Which domestic products do the US goods replace? We have seen media reports that we are eliminating our reducing tariff on US-made industrial goods, foods and agriculture, but the US will continue a 18% tariff on textiles, leather goods, organic chemicals, goods originating from India. Is this fair? Why we have agreed to this obviously one-sided trade deal that will cause irreparable hardships to our domestic manufacturers and farmers? The impact of US tariff on the textile industry in India, especially Tamil Nadu, is terrible. Far from compensating them for the loss suffered over the past few decades due to this abrupt tariff that saw exports being put on hold, the new trade deal's uncertainty is adding to the stress. One of the Prime Minister's pet scheme is Atmanirbhar Bharat. I hope the BJP government remembers this slogan and the lion
they proudly unveiled as a symbol for Make in India. As a ferocious lion become a pet cat in front of US, what happened to our Indian-made goods? Sir, the union government has to disclose the specifics to this August House and to the nation so that the farmer, the business owner, the entrepreneur knows how to plan this business in the coming years. Sir, India has one of the highest tax rates in the world. The continuation of the dual tax regimes with the differing exemption limits, rates and rebate structures has increased confusion rather than clarity, particularly due to the denial of marginal relief under the old regime and lack of special relief for senior citizens under the new regime. The withdrawal of saving links deduction is discouraging long-term savings and burdening taxpayers who made commitments based on the earlier incentives. Procedural inefficiencies persist, including long timelines for rectification, condemnation and disposal of petitions, both in the Income Tax Act and GST, causing hardships through delayed relief and coercive recoveries. Sir, the union needs to create more benches of IT-AT and GST-AT and appoint more members. Businesses cannot spend years before courts with uncertainty. If the cases are decided one way or other, they may make provisions for liability and move on, but uncertainty kills the business. Sir, at this time, I want to ask the union government through this August House, what happened to all tax evaders who fled abroad, who you promised to bring back to India and collect the arrears? They are still enjoying life abroad, whereas taxpayers' money is used to waive off the loans of their companies. Now, let us look at the infrastructure, which the government probably calls the crown jewel of this budget. They announced 12.2 lakh crores for capital spending, 3.1 lakh crores for roads, 2.8 lakh crores for railways, and big promises of new economic regions. It sounds impressive, but the real question is simple. Where is the execution? Years after years, projects don't even spend the full money allocated. However, this budget keeps pouring money into flashy mega projects like the bullet trains and freight corridors while ignoring basic sustainable city planning schemes like Amrut and smart cities get no fresh funding, just extensions. And let us talk about the fairness. This infrastructure push is becoming anti-federal and politically biased. The Honorable Railway Minister claims Tamil Nadu railway allocation has increased 7.5 times since 2014 compared to UPA regime and repeats as if it is doing us a favor. But look at the reality. The national railway budget has grown 25 times since 2014, while Tamil Nadu gets only 7.5 times. Compare this with other states. Gujarat, 29 times increase. Delhi, 27 times increase. Chhattisgarh, 24 times increase. Madhya Pradesh, 23 times increase. Maharashtra, 20 times increase. Uttar Pradesh, 18 times increase. Even today, the union government has not approved the Coimbatore and Madurai metro rail projects, which are critical for our growing cities. This is a real problem with this budget. It favors spectacle over real needs, politics over people, and central control over the federal fairness. Infrastructure is being used as a political tool, not as a means to build the nations equally. Let me now turn to agriculture and rural India. The budget allocates 1.63 lakh crores. The government speaks about the artificial intelligence in framing under Bharat Vistar and new schemes for cashew, cocoa and fisheries. But farmers across India have been asking one basic question for years. Where is the legal guarantee for the minimum support price? Farmers' real income are not rising, but corporates are being pushed into agriculture value chains. MSME, which actually create more jobs, are left behind. This budget lacks the specific announcement that the MSME industry is expected. I request the creation of the emergency relief fund to protect MSME from the natural disaster, pandemic and foreign force measures like tariff. Manufacturing jobs are still stuck at 12% of the total employment, yet there is no serious labor reform or skill to job plan. Health gets 1.06 crores with PMJA at 9,500 crores and some drug duty cuts. These are far from enough. Funds under schemes like PM ABIM remain unused because of the digital gaps and planning failures. Trauma centers are promised, but access remains uneven. Gender and child welfare allocations fall short. The National Health Policy 2017 set a target of increasing total public health expenditure to
to 2.5% of GDP by 2025. Spending, however, remains at 1.7% of the GDP as per the Economic Survey 2025. Our Honorable Deputy Chief Minister, Mr. Udayanidhi Stalin, has been reminding the BJP for the last 5 years that Madurai AIIMS has not been completed, and AIIMS Madurai classrooms are operating from Ramnath districts. It looks like first batch of students graduating from Madurai AIIMS would graduate without even looking at their campus. Spending on the health is not charity. You are investing in your citizens and the country will reap the benefits. Education and youth are mentioned, but where are the jobs? Youth unemployment remains high and internships are offered without any guarantee for employment. You promised 2 crore jobs which created every year. It has been 12 years. Where are 24 crore jobs created? You promised doubling farmer income, but you did nothing to increase this. Increase in inequality with top 1% holding 40% wealth. Sir, this budget on social welfare and the previous year budgets have shown an alarming neglect for the social welfare sectors. One thing is low allocations of even worse is the terribly low utilization of allocated funds. This budget has allocated 18% of expenditure to the social sector. Taken as a share of GDP, the social sector has received 2.5% lower than 2014-15 when this NDA government presented its first budget. In 2024 and 25, the latest year for which the actual spending data are available, social sector spending fell to an all-time low in a decade of 17% of total expenditure, with only rupees 7.7 lakh crores spent. The Ministry of Labour and Employment, which funds social security schemes for workers, such as pensions for the industrial workers, unorganized workers under the Pradhan Mantri Shram Yogi Maiden, and also for shopkeepers, retail traders, and self-employment person under the Pradhan Mantri Karam Yogi Madan, spent just over half of this budget. Everyone knows how much the BJP detests the word socialist in a preamble merely because of who put it there. But such consistent neglect of such social sector is catastrophic for India's less fortunate citizens. Sir, with regard to the increase in allocation for defense, I request the Honorable Finance Minister to focus on the human aspect of our armed forces. Though the man-made mission balance in warfare has tilted towards technology, our men and women in uniform are the most important part of the armed force. I request the Honorable Finance Minister to approve the pending claims and grievances of the armed personnel pertaining to rationalization of pay and one rank, one pension. Sir, we are on the cusp of artificial intelligence revolution. Artificial intelligence is about to change the way human lives. We are lagging behind in funding artificial intelligence and data sectors. I would like to see more from the Union government on energy transition, semiconductors, and artificial intelligence. While I note the budget allocation for Semiconductor 2.0 and tax holiday for till 2047 for all foreign investors who invest in India data centers, this is far from enough. We have an international image as a tech country. We should back India tech and India data industry more. Sir, I am also pained to note the policy allocation of 4,000 crores to Law and Justice Ministry. At the same time, government is spending rupees 2 lakh crores on Mumbai-Ahmedabad bullet train. Sir, establishing and spending on courts is not a luxury. It is a fundamental need to preserve a democratic system of government with rule of law at its heart. Access to speedy justice is a fundamental right. When litigants obtain quick justice, it contributes to the progress of the nations. Several courts and tribunals are languishing without judges, staff, basic infrastructure. I request the Honorable Finance Minister to significantly increase the allocation of funds to the Ministry of Law and Justice. Sir, I wish to quote a Tirukural at this juncture. Yetrulum, Eatalum, Katulum, Kata Vagutulum, Valla Darasu. For the members from other state, it means to build, to earn, to guard, to preserve, and to share. One who masters the cycle alone is worthy to govern. So sharing is an important part of governance, especially in a republic with federal structure. For several years, Tamil Nadu have consistently argued that the union government's approach to tax devolution has systematically disadvantaged developed and high-performing states, including Tamil Nadu. Once again, the demand raised by many states that the shares of the states in the divisible pool of taxes be increased from 41% to 50% has been ignored. The share remains frozen at 41%. In contrast, 16 Finance Commission reduces allocation by 2.5% for controlling population as allocation democratic performance reduced from 12.5% to 10%. Further,
the contrast in tax devolution towards north and south is clear. Uttar Pradesh alone receives 17.62% of the divisible pool. Bihar receives 9.95%. Madhya Pradesh receives 7.35%. These three states together account for 35% of tax devolution. Now compare this with the entire southern region. All South Indian states combined receive only 17%, despite contributing approximately 31% of India's GDP. What makes this more concerning is that even when 16th Finance Commission acknowledged the role of states in driving India's economic growth, the final allocation still fails to adequately recognize India's contribution. Sir, you normally place your best batsman as the opening batsman. If Tamil Nadu is your best performer, you should cherish and showcase the state, not undercut it at every turn. We have delivered 11.4% growth last year. Why this discrimination? Tamil Nadu, which has the second largest state economy and plays a vital role in national growth, has been allotted only 4.097% in tax devolution for the coming 5 years. The concerns do not end here. Consider the Jal Jeevan Mission. Tamil Nadu has repeatedly pointed out 3,112 crores requested and the scheme has not been released. This when the Jal Jeevan Mission has spent only 17,000 crores of 60,000 crores, estimately by the budget 25-26. So the union is allocating the funds on paper just to give a media bite that such a large sum has been allocated, but it is not spent and more importantly, not devolved to the states. Even more troubling is a sharp reduction in the national allocation from 67,000 crore in the budget estimates to only 17,000 crore in the revised estimates. This raises serious concern about the future of a scheme that directly affects drinking water access. Similarly, allocations for the rural roads under the Prime Minister Gram Sadak Yojana have been reduced from 90,000 crores to 11,000 crores. The rural housing scheme has been allocation dropped from 35,832 crores to 32,500 crores. And perhaps the most striking example is the PM internship scheme announced with great enthusiasm last year at 10,831 crores, but reduced in the revised estimates to rupees 526 crores. Such a drastic reduction inevitably raises doubts about the planning, execution and seriousness of the intent. Yet none have been announced. Funds of rupees 3,548 crores under the Samagra Shiksha scheme remain withheld for refusing to accept Hindi imposition. The 3,112 crores pending under the Jal Jeevan Mission remains unaddressed. As our Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister have repeatedly said, you have not even mentioned Tamil Nadu in the budget. There is no new project, no significant new commitment. Pair Arranger Anna once said, வடநாட்டு வணிகரே இரும்பு எஃகு பருத்தி முதலிய பொருட்களை கொண்டு நடத்தப்படும் ஆலை அரசுகளாக்கி நம்மவர்கள் ஆட்டுவிக்கும் ஆற்றல் பெற்றுவிட்டனர். தேசிய இயக்கம் அவர்கள் இயக்கமாகிவிட்டது. இந்த காரியத்திற்கு பெரும் பணம் உதவியே அரசர்களுடன் கிடைக்கிறது. முதலாளித்துவம் தேசியமும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறது. இத்துடன் மதமும் இணைந்து கிடைக்கிறது. இந்த முக்கூட்டு பயங்கர விளைவுகளுக்கு ஏற்றதினால் தான் இந்த அழிக்க உண்மையான விடுதலை உணர்ச்சி உள்ளவர்கள் துடிக்கிறார்கள். Sir, so enough budget, so every budget is an opportunity for political rhetoric. The budget itself should be a fair, impartial document in keeping with the constitutional ethos. Under the BJP, the union budget has become a political tool to punish the states that do not elect the NDA and reward states with NDA. Such a misuse of the budget is disastrous for the country. If Article 14 of the Constitution is applied to the present budget, it will be quashed in a moment, as it is highly discriminatory in terms of allocation. Madam, what you give to Tamil Nadu will come back to you. Since you have not given anything, nothing will come back to you. Sir, Tamil Nadu is a jewel on the India's crown. We are your best performing state. We have just crossed Pakistan GDP. So, through this August House, I call upon the Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister to be fair to the Tamil Nadu. Thank you very much, Chairman. Thank you. Honorable Finance Minister. Come back to this House and reply for every one of the speeches, sir. But because an absolutely incorrect statement has been made by a very senior advocate of the Supreme Court, I just want to say one thing. I will reply. She has the right to Manya speak. Digvijay Singh, bet karke,
he targets a lot of comments on me, but I want to tell him he's a very senior Please, member. you're not, so if please, he is allowed please to take sit and give commentary, I'm allowed to stand if you permit me to say a commentary, no? So, Honorable Member Wilson, among many other things that he read out rather than spoke, one thing stood out for me, sir. Tamil Nadu has no new projects given. Absolutely wrong. I'll just count at the tip of my finger 4 things readily. What is the rare earth corridor? Is it not going to Tamil Nadu? Yes. Every district to get one girls' hostel is not for Tamil Nadu. Fishermen getting a benefit to go into the deep sea and also their products to be treated as an export if they go from the high sea to any other destination is not going to benefit Tamil Nadu. The coconut scheme is not going to benefit farmers in Tamil Nadu who are keeping coconut trees. And also the allied health, the related thing where we are saying a medical hub can be created on a challenge mode. Tamil Nadu can bid for it and they won't get it, sir. So I've just sort of off the cuff said a few things. Sweeping statements like this without any basis link with the budget which has been presented only 8 days ago is not right at all. Thank you. माननीय सदस्यगण प्लीज माननीय सदस्यगण ये आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि रिटन स्पीच पढ़ने के बजाय अपने आप पॉइंट्स कहें. प्लीज आप सभी सदस्यों से डू नॉट रीड, यू आर नॉट सपोज टू रीड योर रिटन स्टेटमेंट्स. प्लीज माननीय श्री राघव चड्ढा. सर अक्सर देखा जाता है कि जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करती हैं कृपया तो चेयर पे बैठ कर ना बोले. सर अक्सर प्लीज अगर समय देंगे तो हम बगैर पेपर देख के बोलेंगे, मगर समय नहीं होगा तो पेपर पढ़ना पड़ेगा. सर आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, समय आवंटित होता है पार्टी दलों के द्वारा बीएससी मीटिंग में, ये चेयर नहीं करता, आप जरूर जानती होंगी. प्लीज राघव चड्ढा जी प्लीज. सर अक्सर देखा जाता है जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो रूलिंग कोalition के जो एमपीज हैं जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं वो सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी इस बजट से, और विपक्ष में जो बैठे हैं वो अक्सर निंदा करते हैं, कहते हैं किसान की कमर तोड़ दी, बहुत महंगाई हो गई, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है. लेकिन मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं. So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. 4 good things that I found in this budget, 4 bad things that I found in this budget, and 4 innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते, जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है. लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ. एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज. जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 0 था तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया. मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा. वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors. दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया. मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 0 किया जाए. सर मेरा दूसरा जो मैं सरकार के बजट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये है कि कैपेक्स के जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन होता है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई. जहां वित्तीय वर्ष 18-19 में मात्र 3 लाख करोड़ कैपेक्स था, वो इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ तक पहुंचा है, विच इज 4.4% ऑफ द जीडीपी, विच इज अ गुड स्टेप. इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड इट विल प्रायोरिटाइज एसेट क्रिएशन. लेकिन इसके साथ साथ सरकार को 5 साल में
क्या कैपेक्स वो कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करने जा रही है, उसका एक ब्यौरा देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इस कैपेक्स के खर्चे को मैच कर सके. सर, थर्ड थिंग विच वी फाउंड इन द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज दैट देयर वाज अ रिलेटिव रिस्ट्रेंट इन मेकिंग बजटरी अनाउंसमेंट्स फॉर इलेक्शन बाउंड स्टेट्स. अक्सर वित्त मंत्री का भाषण सुन के आप बता सकते हैं कि कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहा है. इस स्पीच में उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया, जिसे मैं एक्नॉलेज करता हूं. और आखिरी अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई वो ये था कि एनआरआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट में एनहांसमेंट हुई. लेकिन मैं बता दूं कि जब एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस देश के बाजार से पैसा निकाल लिया और पिछले एक वित्तीय वर्ष में 23 बिलियन निकाला, तब जाकर सरकार जागी और सरकार ने एनआरआईज के लिए इक्विटी मार्केट का दरवाजा खोलकर उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ा दिया. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स 32 मिलियन एनआरआई इन्वेस्टर्स को अब भारतीय बाजार में पैसा डालने का मौका मिलेगा. लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल कर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं. सर, नाउ आई कम टू द बैड पार्ट ऑफ द बजट. फर्स्ट थिंग इज द डेट टू जीडीपी क्राइसिस. सरकार ने और डेट लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए इस बजट में फॉर्मूला ही बदल दिया. पहले सरकार डेट जब लेती थी तो ओल्ड एफआरबीएम रूल्स के तहत 3% ऑफ जीडीपी तक का फ्रेश डेट लेती थी. इस बजट में सरकार ने उस फॉर्मूले को बदलकर कहा कि टोटल सरकार का डेट जीडीपी का 50% होगा और उस सीमा में हम डेट लेंगे. यानी कि दे वांट टू प्ले ऑन द डिनोमिनेटर इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, एक साल बजट अगर हमारा जीडीपी 12% से ग्रो करता है तो उस साल सरकार खूब सारा डेट लेके सरकार पे कर्जा लाद सकती है, जो कि फिस्कल डेफिसिट 4.5, 6.5, 5% तक भी पहुंच सकता है. सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज सरकार कहती है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 56% है, लेकिन ये गलत है क्योंकि बहुत सारे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं जिसे सरकार डेट में दिखाती ही नहीं है, जैसे कि एफसीआई बॉन्ड्स, ओएमसी बॉन्ड्स, फर्टिलाइजर, एनएचएआई, एनएफएसएस, यानी कि तमाम तरीके के ऐसे कर्जे हैं सरकार के ऊपर जो सरकार अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाती है. सर, मैं सरकार को आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश का कर्जा और कैसे ना बढ़े इस पर काम करें, ना कि और कर्जा लेने के लिए हम जीडीपी और डेट टू जीडीपी के फॉर्मूले के रेशियोज बदलकर और पैसा कर्जे पे ब्याज पर लेने का प्रयास करें. सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ. सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है. देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी. लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ. पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज. इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा. मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए. सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास. सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन. यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़. यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है. आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है. सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से. मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए. सर, फोर्थ प्रॉब्लम इन दिस बजट दैट आई फाउंड वाज द बजटरी एलोकेशन टू हेल्थ व्हिच इज लो एंड व्हिच सर्टेनली नीड्स अ रीलुक. सर, आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ should be 2.5% of GDP. आज हम
2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं। और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। सर, द रियलिटी इज दैट कोविड मेड अस रियलाइज, एंड इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई वांट टू आस्क द हाउस टुडे, आर वी प्रिपेयर्ड, गॉड फॉरबिड, इफ देयर वर टू बी अनदर पैंडेमिक और अनदर बिग sort of raging pandemic in this country, and the answer to that is no। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। सर, मेरे 4 सुझाव जो आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री को देना चाहूंगा। पहला सुझाव है, पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री लेजर बनाइए। पहले 10 मेजर राज्यों शहरों से शुरू करिए, महानगरों से और टीयर 2 सिटीज से, जिस ब्लॉकचेन लेजर में हर रिकॉर्ड, हर सेल, हर म्यूटेशन, हर इनहेरिटेंस को एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक में डाला जाएगा, जो एक ब्लॉकचेन लेजर होगा, जो टाइम स्टैम्प्ड होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा, और रियल टाइम प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आप उससे कर सकेंगे, जिसके चलते इंस्टेंट टाइटल वेरिफिकेशन होगा। आज सर, हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है, उसमें अटर कियोस है। कियोस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या क्या चल रहा है, जिसके चलते आज 66% ऑफ इंडिया सिविल डिस्प्यूट्स आर लैंड डिस्प्यूट्स। 45% of properties lack clear title in India. India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. 48% of our properties are under dispute, and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी, क्योंकि वे और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी, और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्लॉकचेन वेरीफाइड टाइटल मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सर, दुनिया के कई देशों ने इसे लागू कर दिया है। स्वीडन में यह लागू है, जहां पर एक दिन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 2% है। जॉर्जिया में है, जहां 3 दिन में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट रेट 1% है। और यूएई में है, जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे। और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं, और 48% डिस्प्यूट रेट है। सर, मेरा दूसरा सुझाव है, इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी, उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर, एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है।
यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर, इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा थर्ड सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को रहेगा कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंडिंग सेंटर दे, यानी कि हर 1 रुपया जो राज्य की सरकार कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एसेट क्रिएशन पे खर्च करती है, उसकी मैचिंग ग्रांट 1 रुपया केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज अ ग्रांट। आज स्टेट कैपेक्स में 2 बॉटलनेक्स है। पहला बॉटलनेक है बोरोइंग कैप, यानी कि कोई भी राज्य अपने स्टेट जीडीपी से 3% से ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं ले सकता, वो कैपेक्स पे नहीं खर्च करता, वो तमाम तरीके के ऑपरेशनल खर्चे करता है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देती भी है राज्यों को कैपेक्स के लिए, वो लोन की सूरत में देती है, और कंडीशनल लोन की किस एसेट पे कितना खर्च होगा, एक कंडीशनल लोन दिया जाता है। मेरा सुझाव है दैट रिप्लेस दिस लोन विद कंडीशंस गिवन बाय द सेंटर टू ग्रांट विद ट्रस्ट, ग्रांट बेस्ड ऑन ट्रस्ट बाय द सेंटर। सर, सेंटर को आने वाले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित करना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज दीज कैपेक्स ग्रांट्स, ताकि राज्यों में सड़कें बने, इरिगेशन नेटवर्क बने, लोकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट क्रिएशन, एसेट फॉर्मेशन किया जाए। एज नॉट एज लोन, नॉट ऑन इंटरेस्ट, नॉट विद प्रिंसिपल एंड विद नो कंडीशनैलिटी। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो स्टेट की बैलेंस शीट में दिस ग्रांट विल नॉट सिट एज डेट, स्टेट की बैलेंस शीट सुंदर होगी, बेहतर होगी। दूसरा, खुलकर राज्य कैपेक्स पर खर्च कर पाएंगे। थर्ड, इट विल बी अ हाई ग्रोथ एंड अ हाई जॉब क्रिएटर, एक ग्रोथ मल्टीप्लायर और जॉब क्रिएटर के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर 1 रुपया जो आप कैपेक्स पे खर्च करते हैं, उससे भारत का जीडीपी 2 से 3 रुपए बढ़ता है इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा, और साथ ही साथ स्टेट्स विल बिकम बिल्डर्स एंड नॉट बोरोअर्स इन द आईज ऑफ द सेंटर। सर, मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है, और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। VDS जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इन्हें एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है, AML कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 4.8 लाख करोड़ ट्रेड इन दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैज मूव्ड ऑफशोर। भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है, जो भारतीय कर रहे हैं। सेकेंड थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट 73% ऑफ इंडियाज क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore, and as a result जो देश, भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेविली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स these virtual digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are illegal. मेरा सुझाव है कि इसे heavily regulate करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, AML गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत करिए, लेकिन prohibition is not protection, regulation is protection. Thank you so much, sir. Thank you. धन्यवाद माननीय राघव चड्ढा जी। माननीय श्री S निरंजन रेड्डी
माननीय एस निरंजन रेड्डी, नॉट प्रेजेंट, प्लीज। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान। धन्यवाद सर। मैं बजट के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे राज्य में और केंद्र में डबल इंजन का सरकार है, उनके बारे में एक छोटी सी शायरी बोलना चाहता हूं। क्यों वादा करके वो निभाना भूल जाते हैं, लगा के दिल में आग वो बुझाना भूल जाते हैं, रुलाते हैं वो हमें और मनाना भी भूल जाते हैं। आज ये जो बजट आया है, केंद्रीय बजट, उड़ीसा के लिए बहुत निराशाजनक है। खास करके मैं आदिवासी बहुल जिला से आता हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ीसा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है बजट में। हमारे जिला में, नवरंगपुर जिला में ज़्यादा धान उत्पाद होता है, मक्का का उत्पाद ज़्यादा होता है। आजकल तो धान ठीक से मंडी में उठा नहीं पाते हैं। मक्का का मंडी आज तक नहीं हुआ है, वहाँ मक्का प्रोसेसिंग प्लांट भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार इसको ध्यान देना चाहिए, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उन किसानों को जो कोशिश कर रहे हैं देश के आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ उनको लाभ हो पाता। अध्यक्ष महोदय, रेल कॉरिडोर जो अभी घोषणा किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से बजट में भी घोषणा किया गया, स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे कई शहरों को कनेक्ट किया गया है, लेकिन उड़ीसा को कनेक्ट नहीं किया गया। ये भी हमारे उड़ीसा के लिए बहुत दुख की बात है। उड़ीसा करीब करीब हर साल जो रेवेन्यू जनरेट करता है रेल विभाग का, वो 18 से 20 हजार करोड़ तक उड़ीसा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन जो पैसा आवंटित किया गया है हमारे राज्य के लिए, उसके हिसाब से कुछ नहीं है, इसका आधा पैसा भी नहीं दिया गया है। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। ये क्यों नहीं किया गया पता नहीं। जो रेलवे लाइन 77 साल हो गया हमारा देश स्वाधीन होके, कोरापुट जयपुर से नवरंगपुर और मलकानगिरी, उसके लिए भी बजट में एक पैसा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि किस लिए नहीं किया गया पता नहीं, कि हमारे राज्य के रेल मंत्री है, उससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। माइंस एंड मिनरल्स में उड़ीसा का योगदान बहुत है। देश में 25% आयरन और करीब करीब 50% बॉक्साइट का जो खनन होता है वो उड़ीसा देश के लिए देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा जो कोल है, कोयला है, वो भी हमारा उड़ीसा से उत्पाद होता है। लेकिन पिछले 10 साल से कितने बार हम लोग बोल चुके हैं कि उसको रिव्यू किया जाए, उसका जो रॉयल्टी मिलता है वो रॉयल्टी बढ़ाया जाए, लेकिन 10 साल से बढ़ाया नहीं गया है और इस बजट में भी कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेशनल वाटरवे का जो अभी प्रपोजल आया है, ये 2008 में हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन बाबू के सरकार के वक्त, जो 588 किलोमीटर दूर होता महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, मैत्री रिवर, ईस्ट कोस्ट कैनाल, इसमें देके ये होता। अभी जो घोषणा किया गया, अगर काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे इसमें भी उम्मीद बहुत कम है। बुद्धिस्ट लोगों के सर्किट जो डेवलप के लिए अभी घोषणा किया गया है, बौद्ध लोगों का 6 राज्य में किया गया है, लेकिन उड़ीसा को छोड़ दिया गया है। उड़ीसा में कम से कम 2 से अधिक बौद्ध स्थान है, उसमें ललितगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी है, जिसको डायमंड ट्रायंगुलर बोलते हैं, डायमंड ट्रायंगुलर कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, सम्राट अशोक उसी उड़ीसा में आके हिंसा त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। वो इतना इंपॉर्टेंस है उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा को उसमें भी शामिल नहीं किया गया। उससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं है। केंद्र सरकार से मेरा अपील है कि उड़ीसा को ध्यान दिया जाए और उड़ीसा के हर क्षेत्र में बजट में प्रावधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री एडी सिंह जी, माननीय श्री एडी सिंह। Thank you, Deputy Chairman, sir. I have to say that the successive budgets of India government is is marching towards inequality in our society. Now I will divide my speech between Bharat and India. About 8 to 10% of the population of India, I will put it as of our country as India. और
इसमें हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में यू आर गोइंग टू पुट अ बजट ऑफ मोर देन 12 लाख करोड़, एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड who will benefit with this. It will not create any employment. It can only machines will be used to make it, and also only a few selected group will get this contract. Now coming to the revision of corporate tax in 2019, which was brought from 24 to 21, and in this we lost about 2 lakh crores a year, and there was no this incentive was given to the private sector for investment. No investment was made except that they tried to clear their bank loans and other things. And also, one thing is very sad that I will come to Delhi, take a 50,000 crore loan, and after a few years, government will be very pleased to write it off. So in the last few years, I think government has written off 12 lakh to 15 lakh crores. So I do not know which direction this government is going. Now coming to Bharat, which consists of 92 crore people. ये जुमला जो हम लोग सुन रहे हैं विकसित भारत का, what efforts the government has tried to create some economic activity so that some purchasing power goes to this number of people. And if government proudly says that I am giving 5 kilo anaj to everybody, I think this is the most insulting thing for every Indian who is receiving it. And further, I feel that corporate tax has to be revised. That money has to go to rural sector. We should take panchayats into confidence. Over centralization of this government is not required. And in fact, even the capital expenditure should be drastically reduced. And a major part of that should go for the strengthening the village and making rural roads, rural healthcare, rural education, and now coming, and even Manrega, the new Manrega, you are promised 125 days of the job. And the most peculiar thing is you are asking that 40% contribution should come from the state. And also you have put a provision that you will spend the money where you will like. This is this is something which should not be expected from the government. Now let us talk about agriculture and rural distress. Unfortunately, the Honorable Fertilizer Mantri ji is not here. We are doing everything to spoil the health of the soil in this country for the next generation, or next generation, or maybe in the next 5-10 years. We are importing, we are using about 40 to 42 million tons of urea, which is absolutely not required for the soil. We are only making the soil poisonous, and today the requirement and the government should have slowly increased the price of the urea at least 10% every year to bring it at parity with other fertilizers. And today, urea bag of 50 kgs is for 260 or 65, something like that. And the next grade of fertilizer is from 1350 rupees to about 1800 rupees. So if the farmer is having less money, he puts extra bag of urea, which is actually only 20 to 30% of the urea goes in the soil. Either it contaminates the water inside the soil, or it goes in the air. So, and we spend a lot of money on the subsidy. So if we reduce the urea intake, which should be actually to 50 or 60%, that amount of money saved in subsidy could be given incentives to the farmer for crop diversification. And let the government be not very proud by saying that we are producing 150 million tons of rice. At whose cost? At the cost of the water in Punjab, Haryana, Western UP, which will someday bring all these lands into desert. So the policy for rural development should be farmer specific, plus the fertilizer use should be region specific, and
all stress should be made how to create demand in the rural sector. Today we are very happy that we have made FTA from this country, that country. If there was a demand for 140 crore people, do we need to go and try to persuade these countries for a FTA? No. But the point is that there is no purchasing power because you have not created any economic activity for the rural poor. And in the last 12 years, no efforts have been made in this direction. So I'm sorry to say that we are heading towards a very unequal society. And we will, and we should also, last 1 minute, sir. We should also learn from Iran and Sri Lanka. Thank you, that Dr. marching towards a religious state. Dr. M. Thambidurai. Thank you, Deputy Chairman, sir. I express the views on the budget on behalf of my AIIMS party and my leader, Atapadi Palaniswamy. The budget presented 26-27 presented by the Honorable Finance Minister. At the outset, I congratulate Srimati Nirmala Sitharamanji on becoming India's longest continuously serving Finance Minister and presenting her 9th consecutive budget, her commitment, clarity and dedication to the nation and appreciation, sir. Sir, I would like to recall the words of Mahakavi Bharatiyar. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இழப்பில்லை கான் என்ற கும்மியடி என்று பாரதியார் அவர்கள் பேசினார். These powerful lines celebrates women's leadership and wisdom. Today India proudly witnessed that spirit in action. Sir, the budget also gives strong emphasis to health and medical education. I take this opportunity to recall that when AIIMS party was in power, under the leadership of Honorable Amma Jayalalitha ji, and later afterwards, Sri Atapadi Palaniswamy, Tamil Nadu witnessed remarkable welfare initiatives establishing 23 medical colleges in 4 years. 7.5% reservation for government school students in MBBS, then Amma canteens, Amma pharmacies, free laptops, bicycles, Pongal gifts, and many other people-centric schemes. Our leader, AIIMS General Secretary Atapadi Palaniswamy, has welcomed this budget, stating that it strengthens the fiscal management, reduces deficit, and ensures sustained economic growth. The projected growth rate 6.5 to 7% in 2025, rising further thereafter, is encouraging despite global uncertainty. That the textile hubs of Tirupur, Erode, Karur will particularly benefit from the MSME protection measures, sir. Sir, Tamil Nadu is going to facing the 2026 election, sir. All the political parties, we are giving promises what we are going to present the budget. Same the central government promised so many projects, that projects they are implemented. Same way, sir, our election is coming in Tamil Nadu. Our party leader, Atapadi Palaniswamy, assured, as Prime Minister already announced many programs, coming elections also after winning that, he is going to give rupees 2,000 rupees per woman head family at the old age, every woman, sir. Old age pension from 1,000 to 2,000 rupees per month is being increased for the old age people. And also, sir, the students we know, they are studying higher education, are getting loans from the bank. They may not in either position. Therefore, this is now our Atapadi Palaniswamy promised this kind of loans government will bear. Sir, and also, scheduled villages, all they will get the houses. Confine that yourself is the scheme, to the sir. budget of central And government. also, It's not a state election. Sir, I am telling, sir, budget I am telling. Please. Because Speak to budget. the DMK government promised so many promises, nearly promises. Please.
They failed to implement the project. You discuss in the But state, while they are please. telling, we are copying their manifesto. Sir, we are not Speak on the copying. central They budget. failed to implement the projects. We are going to implement. Taking Can this you budget, discuss in that the is the state, promise we sir? are going to make, sir. Sir, our DMK member said, the federal recently said, spirit has gone. And also he said, debt trap is going on. And also, sir, state government is not going to get any benefit. Sir, I want to make the observation. The pathetic condition of the Tamil Nadu government now. Tamil Nadu debt has grown sharply in recent years. Revenue deficit, the spending more than it earns in revenue is growing. This management of the DMK government, Tamil Nadu, puts a long-term financial burden on the people of Tamil Nadu. Sir, they promised the election they won't put any taxes. They have put lot of taxes because such as the federal system. I have to tell this property tax. Sir, liquor is flowing in the country. The Tamil Nadu. Everywhere illicit liquor is going on. The lot of money which is collected, they are fulfilling. This is the thing, sir. And also, they are due to corruption and miscommission. There is always cost overrun in government projects. It will not go on the record. The public, you know the rules. no, I am telling, sir. I am taking that word. There is always cost run in government projects. The public sector is constantly losing, and revenue mobilization is not given attention. Only 37% of the borrowing were used for capital investment. Revenue deficit and fiscal deficit are up more than 30%. Interest payments alone are accounted around 20% of the economic expenditure. Now you speak of central I'm budget. coming, sir. CAG, yes, repeatedly warns the actions of the Tamil Nadu government as fiscal stress. Apparently, the total liability of the state is around 9 crores, sir. 9 crores they borrowed. Within 4 years, 5 crores they borrowed. They have not invested and misused that. The people can, but Tamil Nadu, central government, central government borrowed lot of money. Sir. I am replying for that. They accuse central government, they have borrowed lot of money. Same thing I am telling is applicable to Tamil Nadu, is Tamil Nadu also. They borrow, whatever borrowed, they spend for the welfare of the people of India. But Tamil Nadu government, what they borrowed, they have not spent for the Tamil Nadu people. They make a lot of burden. We have to face it, sir. Sir, elections, when we are coming, sir, that federal, sir, the federal setup, sir, I'm requesting to speak on this. Please, sir, diverting, sir, please, listen to me, sir. Double engine, they are telling double engine. Sir, India is a double engine economy. One is central government, another is state government. Without two engines, how can the government develop? When they are telling, our Narendra Modi is saying, we want double engine means, they are accusing, double engine means they are thinking that is the single engine, ineffective engine. That is not performing. That is why central government engines are required. Sir, we are telling, sir, Atapadi accepting. I have already pointed out. Accepting. We need a double engine. Atapadi is taking the engine, first engine. State government is leading is going to lead government coming election. Second engine is central government. It is going to support us. Therefore, all state government require double engine. That is the thing, and it's not a single engine cannot run. Therefore, they are accusing central government double engine. They are misleading the people. In the federal sector, we are the House of Elders. We are the House of States. The states require, when we are defending, central government also we have to defend, state government also, whatever, then we have to do that. Without double engine, sir, the Indian economy cannot develop. Tamil Nadu is miserably failed because single engine, ineffective engine. That is I want to say, sir. I have already pointed out. I am coming to you, sir. Please. You speak on the central I budget. require. I budget, sir, I am percent. Nirmala Manaji,
she said in her observation, they are given lot of funds to the state government. Please go back to Sir, your when the seat. I have state already government is pointed given, out, madam. I have already told him. The Please. Chief Minister of Tamil Nadu is gone accusing the central government. They are not central not giving funds. Sir, Modi ji when he visited Tamil Nadu, he gave a long picture. How many lakhs of rupees given to Tamil Nadu? How can they say they are not given? Now also the Wilson in speech what he said, that Tamil Nadu could not get the money. That is what these are the things I want to make, sir. And also, my request, Railway Minister also here, higher early sanction of the new railway line from Puducherry to Bengaluru. Your state, sir. Yes. Bengaluru, the two ministers are here. That route will start from Pondicherry, Viluppuram, Thiruvannamalai, Krishnagiri, Hosur, Bengaluru. Three states are going to benefit it. Puducherry, Tamil Nadu, Karnataka. Three states. Therefore, I am demanding that has to be fulfilled. Sir, same way the road, sir. I represent once, 5 times Karur also. Therefore, expedited implementation of the Chennai Salem 8-lane project, Karur Coimbatore 8-lane project, and Karur 66-lane project. Is that I am requesting the central government has to give that attention, sir. Sir, our Civil Aviation Minister here, sir. I want to request him. Sir, what here the ministers, the members of DMK party and Chief Minister is going to start a new green airport also. But the... No, I'm telling you the point. Sir, the same minister, so one minister from Tamil Nadu, he says he don't want that project. That is what I'm telling. That is a double engine. One engine says they want the project. Here, the other engine of the same cabinet minister of Tamil Nadu government, they don't want the project. That. What is the confusion we can understand? Therefore, that is the double engine. One engine says it wants the project here, DMK people there, now only demanding the project. But that's, sir, I want to mention the minister also named. Sakarapani is one of the honorable minister. Please, no, I'm telling please. because you don't want the minister, you don't want the project. He says that civil aviation minister is here. What is the double engine? Sir, I want to request the honorable minister. There is already private Tejasta one airport is there. I request to update that airfield and take over and fulfill the ambition of the Hosur people, Tamil Nadu people, to using the existing airport, private airport, taken over and run this. That is what, it won't affect the farmers. This is the things I want to say. Thank you. Sir, I'm concluding. Thank you. To conclude, sir, the Union Budget 2027 strikes a final balance between ambition and responsibility. It promotes growth without neglecting inclusion, encourages reform without compromising stability, and prepares India for a globally competitive future. Narendra Modi's ambition, that ambition is 2047. That's ambition, sir. The budget reflects the confidence in India's people and clarity in India's purpose. On behalf of AIIMS party, the people of Tamil Nadu, I extend my support to this visionary document, and also 2026, AIIMS is going to the power. Atapadi is going to Chief Minister. He is going to implement whatever the central government is giving that money. You are probably not misusing the money like DMK government, which is misusing the money. The Tamil Nadu and Srimati Sudha Murthy ji. Manya Srimati Sudha Murthy ji. Thank you, sir, giving me an opportunity to talk today. I would like to congratulate Madam Nirmala ji giving consecutive 9th budget. As an Indian, I am very happy. As a woman, I am very proud about that. Sir, I want to take the a few things in the budget. She has given a lot of sanctions in the culture division, archaeology and culture, and development in that. I want to take the project Mausam forward. I request our archaeology department through this budget to have a conference
of 39 countries in the particular place, Puri or Konark, where once upon a time people used to travel. We can call all 39 countries ambassadors or high commissioners. We can call all archaeology people from respective country, hold a conference which will showcase India's culture and what is India's cultural effect on their countries, and what we have learned from those countries. We should come out with a proper document. This document should be used for research, to be introduced in college, so that people should know what the trade routes were once upon a time and what we learned from that. This is one. Second thing is, I'm very happy about the she market, because women require a market, but with certain conditions. It should be, number one, self-sustainable. Number two, you should be in an area which is well lit. There should be enough space for lactating mothers and pregnant women. Number three, it should be in the easily approachable area so that you will get a lot more people to buy, and it should be convenient for women to come and do their business. The infrastructure she has increased by 1 lakh crore. I'm extremely happy. Sir, hostels, what she has asked, to build per district is really important, because I know what it is for a woman without a toilet. It makes a great difference for women if they have their own hostels. Most importantly, sir, I want to tell a story today how India has changed with a good budget, with a confidence budget, with a great leader, and this is a true incident. It is not a story as such. In 1979, sir, first time I traveled to America. It was my first travel by air and going to a different country. I got down in Boston, and there was a visa and custom officer. I was the last in the queue. They were winding up, and I stood in a queue, and when my turn came, they were tired probably. He asked me following questions. Number one, why have you come to this country? When are you returning? What's your husband's salary? How long you want to stay in this country? How much dollars do you have? Do you have the return ticket? It was a difficult question for a young girl of 28 years old, first time coming out of country. I answered all the questions, and he checked my return ticket. Then I said, I want 6 months visa. Then he said, no, you will get only 3 months visa. He stamped it, and he did not give any explanation. Neither I had the courage to ask why only 3 months. I went to the custom officers. He looked from top to bottom and told me, lady, what are you wearing this kind of a huge material? I said, it's called sari, sir. He said, is it? Then he said, you're from which country? I told him, I'm from a country known as India. He said, oh, I know a little bit about that. Do you have snakes on the road? I said, no, only in the field. Is your father Maharaja? I said, no, he's a doctor. He asked me, how can you speak good English? I said, we have many languages in India, but English is also taught to us. Then he asked me, why have you come over here? It's a developed country. I said, my husband is working, so I have come here. Then he said, everybody is a magician there? I said, no, sir, there are very few people, magicians are there. We go and see their play. It is like anyone else. He looked as if I am from a different planet and looked down upon me heavily and told me to go and check my bag thoroughly. There was nothing to bring, because I was also not well off to take something. I came out, I was holding my passport. I felt very sad. India, which has 5,000 years old history, a great civilization, and a great culture, and which has given zero to the world, all these things we have. And the way he treated me is, I'm coming from somewhere with no culture, no money, or in a very different way. I met my husband, Mr. Murthy. It is not I'm telling my personal story, it is a story which gives me even today encouragement in life. And I told him why these people are treating us. He said, people who know history can appreciate history. A common man or Aam Aadmi will appreciate your performance. If you perform well, the world appreciates. If you don't perform, people will neglect even though you have a great history. He said, we are young. That time, both of us were young. What we can do in our lifetime?
let us give something back to our country, work sincerely, perform well. That's all is in our hand. More than that, we too, simple people from ordinary families, will not be able to do more than that, but let us give our 100% to improve our country, whatever is possible. Many years passed, sir, so much water is flown over a period of time. Then, recently I went to America, after many, many years. I was the last in the queue. I came from, actually, Cuba, I suppose. Somewhere from the South America I was coming. In my plane, I was the only lady wearing a sari. We sat in the plane. I came to the customs office. Sorry, visa. I thought again the same, what questions he will ask. Again, he was winding up. I was the last person in the queue. He looked at me and said, why have you come here? I said, I have to deliver a few lectures in America. He said, what are you? I said, I'm an author and a philanthropist. He said, oh, that's fair. That's nice. Then he stamped. He did not ask me any questions. He stamped. When he stamped, I said, 3 months. I said, no, sir, I don't want 3 months. I will be here only for a week. Why are you stamping for 3 months? He said, oh, jokingly said, oh, no problem. Ours is a great country. Welcome to America. See many more places. I was a little bit surprised. And when he was winding up, incidentally, he asked me, incidentally, ma'am, you're from which place? From India. I said, I'm from south of India by the name Karnataka, and that in Bangalore. He said, oh, you don't have to give explanation. Bangalore is famous for, it is the Silicon Valley of India. I know a lot of people from your country who are very good in software. They come from India and work here. So we are aware of Bangalore. And also joked, a day may come, we can use Bangalore as the verb Bangalored. And he left. Then I went to customs office. And I thought he will ask me, what have you brought? Because I came from South America. He might search. He looked at me and said, oh, lady, we don't have to search anything for you. And you can go. And he was winding up and he came, we walked together. He said, can I ask you some more questions? I said, please do ask. He said, I observed India has changed. India has become different. He told me, you Indians are very enterprising. Lot of people are, unicorns have developed in India. And they do come for business here. I said, yes. Then he said, you Indians are very hardworking. I have never seen someone hardworking like this. Because on Sunday you go to a shop, all the shops are closed in America, but an Indian grocery shop is always opened. You are hardworking people. Number 3, you people help each other. You help each other a lot. Number 4, he said, on a lighter side, your food is excellent because you go to any place in America, you have an Indian restaurant and a Patel's motel. Then he said, more than that, you are law-abiding people. You are good people. So by this time we know what is India. And then he told me, I know India's diaspora. I attend Diwali, Holi, and Gujarati's Navratri. Or they say, now, he knows his own accent. And your people are so large-hearted, they call everyone. India is something different, which we never knew. And many of my friends do come to India, particularly for dental surgery, because getting in America, dental surgery takes time, it's expensive. India is much cheaper. I came out with my passport holding, Ghar wohi, Angan wohi, Jane sab kuch naya naya. What is that made India great in the last 10-15 years? What is that which made India great? The same person, and it is my experience, without any bias I'm telling you. It is what is that made India great? It is the stable government, stable finance budget, bold budget, a great leader. A leader who is proud of Indian origin. A leader who respects India's culture. A leader who is not scared. A leader who believes Indian can make it. It's okay. My experience has taught me, sir. It is my own experience, without bias, I'm telling you. It has taught us a good leader, a good finance budget, and law-abiding people, we can make anything. There are hiccups,
There are difficulties, there are pitfalls. Rome was not built in a day. So nothing will happen in one day. Nothing will happen in 1 year. It takes time. But we should have always faith for the benefit of the country, in good value system, and with our good budget, we can do, sir. This is my unbiased opinion. I am a nominated person. For me, truth and truth alone stands. Thank you very much, sir. Jai Hind, Vande Mataram. माननीय श्रीमान के.आर. सुरेश रेड्डी जी, माननीय श्रीमान के.आर. सुरेश रेड्डी जी, नॉट प्रेजेंट. माननीय श्री ए. रहीम. Sir, firstly, I would like to speak for the Indian youth. Subsequently, I would like to speak for my own state, Kerala. Sir, the Indian youth are haunted by the three nightmares: EMI, CIBIL score, and targets. Three nightmares haunted. Sir, before explaining these three nightmares, I would like to highlight alarming and escalating tendency of living expenditure of our country. Sir, also I would like to flag the alarming unemployment rate in India. Sir, according to Center for Monitoring Indian Economy data, the unemployment rate is at 6.85% in January 2026. Sir, this is very shameful and this is very alarming. Sir, before I come to the crux of these three nightmares, we must discuss the so-called job market in our country. Sir, as we know, the Congress-led government introduced the neoliberal economic policies in 1991. Subsequently, the BJP-led government has aggressively continued the same policies. Sir, the three nightmares I mentioned here, all three nightmares are the aftermath of these anti-youth, anti-people neoliberal policies, sir. Sir, let us look at the trends in the so-called job market during the neoliberal era. Unemployment, underemployment, and rapid privatization of the public sector. Sir, contractualization has become the new normal, which means there is no job stability in our country. Sir, even you please look at Agnivir. See, this government, through the Agnivir scheme, the government has even contractualized our army, sir. Sir, the union budget, the union government, I got a response from this guest house, from the Treasury branch, 9.64 lakh vacant posts across the various departments of the union government. Sir, you kindly go through the paragraph 12.9 of the Economic Survey 2025, stated that regular salaried jobs declined from 22.8% to 21.7%. However, this time the Economic Survey has remained silent on regular salaried employment. Sir, by reducing regular salaried jobs, the government is destroying the public sector. As a result, you are pushing the Indian youth to unorganized sector. Sir, they are facing immense hardship in the unorganized sector. Look at IT sector and the banking sector. Sir, including the public banking sector, employees are facing excessive work pressure and unrealistic targets. Sir, when I go through a document provided by the Bank Employees Federation of India, they stated that the reports saying that 500 banking employees lost their lives due to work pressure. Sir, we cannot forget Anna Sebastian, a victim of work-life balance. So, a victim of overwork pressure. So, look at the escalating size of the gig economy in the country. Can the Honorable Finance Minister explain why people are rushing into the gig economy? Sir, it clearly indicates that the organized sector is collapsing. As a result, the youth of this country are being forced to chase gig economy and forced to chase private sector
and forced to chase corporate sector. Sir, in 2026, Union budget states that the total debt, therefore I urge the government to stop contractualization and fill the existing vacancies with immediate effect. Legislation must also be enacted to protect work-life balance, including right to disconnect. Sir, now I am going to talking about for my state Kerala. Sir, Kerala, now again we are forced to describing about the discrimination against our state, sir. Sir, the discrimination has been going on. Sir, mainly AIIMS, I am going to a long-standing demand of our state Kerala. Whenever my friend Suresh Gopi is in Kerala, he declares AIIMS for us Keralites, so much so that now there is an AIIMS in every culvert in his language, Kalungu. In every culvert there is a AIIMS. Whenever my friend Suresh Gopi is there in Kerala, he declares AIIMS for us, sir. Sir, what is the reality? Why you are neglecting Kerala? Sir, we are a state. Sir, we are a state with all respect and we are a state of all dignity. Then why the union government continuously denying all rights of Kerala? Sir, the Congress and BJP are spreading false propaganda that Kerala's debt burden increasing. Sir, actually they are lying. Sir, what is the reality? Sir, 2026 union budget states that the total debt burden of the union government will increase from 187 lakhs 18,016 crore to 214 lakhs 82,050 crores in 2026-2027. Sir, but in Kerala, 34.8% only, sir. Sir, according to debt to GDP figures based on the 2025-2026 budget estimates sourced from PRS legislative research and compiled by Forbes India, I would like to say Jammu and Kashmir debt to GDP ratio is 51%. Sir, I am going to conclude. Arunachal Pradesh 45.9%, Punjab 44.5%, Himachal Pradesh 40.5%, West Bengal 38%, and Bihar 37%. Yet the Congress and BJP shamelessly mislead the people by claiming that Kerala has the highest debt to GDP ratio in the country. Please conclude. Sir, yes, sir, I am going to conclude, sir. Sir, your time is up. No, sir. Please conclude. Yes, Please sir, conclude. Next sir, speaker. Sir, I am going to conclude, sir. Sir, one important thing, sir. So immediate after the budget, former minister and BJP state president said that Kerala will not get anything from the union government if people don't elect the BJP in Kerala. Sir, is this federalism? Is the spirit of federalism? Sir, thank you. Sir, one thing I would like to conclude, Kerala grown up without the BJP, we will continue growing with... Next speaker, Sanjay Kumar Jha. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज अपने दल जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं पहले कुछ नेशनल लेवल प्रायोरिटीज़ पर जो इनसे जुड़े इनिशिएटिव पर बात करूंगा और फिर बिहार सेंट्रिक कुछ बातें जो इस बजट में है उस पर बात रखूंगा। यह बजट बताता है कि सरकार भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कई सालों तक अपनी ऊर्जा खर्च और घाटे को संभालने पर लगाने के बाद अब ध्यान क्षमता निर्माण पर है। भले ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन बजट की दिशा भारत के फिस्कल डिसिप्लिन और आर्थिक रणनीति पर अडिग है। इस बजट में वैश्विक परिस्थितियों को लेकर कोई बड़े दावे नहीं किए गए। इसके बजाय बजट उन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर केंद्रित है जो भारत की विकास दर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आखिरकार भारत की ग्रोथ के लिए सबसे निर्णायक
मुद्दे घरेलू स्तर के ही हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, ऐसे ह्यूमन कैपिटल जो दुनिया से मुकाबला कर सके, ऐसी संस्थाओं को के विकास को आगे बढ़ाना, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जहां रेवेन्यू स्पेंडिंग में गिरावट जारी है, वहीं ब्याज भुगतान निर्धारित दायरे में है। रेवेन्यू स्पेंडिंग में राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए दी जाने वाली सहायता के ग्रांट्स भी शामिल हैं। इन्हें जोड़कर देखें तो कैपिटल टू करेंट स्पेंडिंग रेशियो को इस बजट में करीब 50% तक ले जाने की योजना है। यह कैपिटल स्पेंडिंग में बढ़ोतरी बताती है कि सरकार की नज़र शॉर्ट टर्म कंजम्पशन पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। निश्चित है कि यही खर्च आने वाले वर्ष में भारत की ग्रोथ स्टोरी को असली रफ्तार देगा। जीडीपी के मुकाबले सरकारी आमदनी और खर्च दोनों कम होने के अनुमान है। आमदनी में केवल 0.2% अंक, खर्च में लगभग 0.30% अंक, जिससे फिस्कल डिफिसिट में लगभग 0.05% अंक का सुधार आएगा। यह कदम गवर्नमेंट बोरोइंग घटाकर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इससे सरकार की राजकोषीय रणनीति और मजबूत हुई है। कर्ज को लेकर सरकार की स्पष्टता ने इसकी ट्रस्ट को और बढ़ाया है। सेक्टरल फोकस एरिया और रोजगार की बात करें तो बजट में रोजगार पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सहारा देने, खासकर टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे ज़्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और बायोफार्मा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों को भी खास फोकस में रखा गया है। 200 लेगेसी औद्योगिक क्लस्टरों को दोबारा सक्रिय करने और चैंपियन एमएसएमई, माझी जी हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, जीतनराम माझी जी, इनका तो सबसे बड़ा काम अभी इस सेक्टर में इतना बजट में फोकस रहा है। चैंपियन एमएसएमई तैयार करने की योजनाएं भी सामने रखी गई है। सर्विस सेक्टर के विस्तार और रोजगार पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें टूरिज्म, खास तौर पर मेडिकल टूरिज्म और ट्रैकिंग रूट्स के लिए ठोस कदम इस बजट में दिया गया है। लेकिन सिर्फ घरेलू रोजगार ही काफ़ी नहीं है, हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में भी अपनी जगह मजबूत करनी होगी। एफडीआई को आकर्षित करने के लिए एक साहसिक पहल के तहत क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने और वैश्विक टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के संकल्प को दर्शाता है। डिजिटल महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ शहरीकरण पर भी खास जोर दिया गया है। यह माना गया है कि आने वाले समय में भारत की बहुत सारी विकास की कहानी शहरों में गढ़ी जाएगी। साथ ही रिसर्च, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में किए जा रहे इन्वेस्टमेंट का मकसद ऐसे ह्यूमन कैपिटल को तैयार करना है जो ग्लोबल इकोनॉमी में लंबे समय तक विकास को सहारा दे सके। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में जहाँ तरक्की की असली पूंजी ह्यूमन कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पे है, यह बजट वाकई एक अहम मोड़ साबित होगा बिहार के लिए। इसलिए कि हम दुनिया में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन है, यंग लोग नहीं है। अगर उसको स्किल कर देते हैं हम, तो उसके लिए स्काई लिमिट है, कहीं भी दुनिया में जा सकता है। पूर्वोदय प्रधानमंत्री जी की कल्पना रही। पूरा पूर्वी सेक्टर है ना भाई आरपीएन सिंह जी, पूरा पूर्वी भारत हमेशा ही निगलेक्टेड रहा। पूर्वोदय क्षेत्र को बजट में प्राथमिकता मिली है। निश्चित है कि वहाँ विकास की काफ़ी गुंजाइश है। जो रोजगार और सेक्टरल ग्रोथ की राष्ट्रीय योजना मैंने अभी बताई, उसका सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिल रहा है। बिहार के पास युवाओं का भंडार है, हुनरमंद मेहनती युवा जो आगे बढ़ना चाहता है। इन स्कीम का पूरा लाभ उठाकर हम अपनी इस युवा शक्ति को असली अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। इस बजट में टूरिज्म को मिली प्राथमिकता बिहार की क्षमताओं से मेल खाता है। साउथ ईस्ट एशिया में करोड़ों लोगों की आस्था बौद्ध धर्म से है। ऐसे में बिहार का बौद्ध सर्किट जो पूर्वांचल तक जाता है, कुर्सीनगर तक जाता है, राजगीर, बोधगया
ये पूरा सेक्टर जो बुद्धिस्ट सेक्टर है उसके अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। बिहार के लिए रोजगार के लिए नए अवसर क्रिएट होंगे और पूरा बुद्धिस्ट सेक्टर, पिछले बार के बजट में भी प्रधानमंत्री जी ने राजगीर को और गया को मेन फोकस में बजट में रखा था। घोषित टेक्सटाइलों से पहले भागलपुर और गया जैसे शहरों के टेक्सटाइल, मधुबनी में हम लोगों का मधुबनी खादी टेक्सटाइल में कितना ज़बरदस्त काम करता था। स्किलिंग इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिलेगी जिससे स्थानीय युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया और गया जैसे जो 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के शहर हैं उनको विकास फंड एडिशनल मिलेगा इस बजट में जो दिया गया है, जिससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी यूजेज में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इससे बिहार सर्विस लेड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, शहरों में हाई पेइंग नौकरियां पैदा होंगे और एक मजबूत टेक इकोसिस्टम का विकास होगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के तहत गाँव में के परिवारों को खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी कार्यशालाओं में काम करने का अवसर मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण शिल्प अब केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि परिवारों के लिए विश्वसनीय आय का स्रोत भी बनेंगे। बिहार में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसका हम लोग स्वागत करते हैं और ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर जो वाराणसी से सिलीगुड़ी दिया गया है उसका मेजर पार्ट बिहार से होके गुजर रहा है, पटना से होके गुजरेगा। उसका मेजर पार्ट जो है वो पटना से, क्योंकि सिलीगुड़ी तो बॉर्डर है बिल्कुल बंगाल में जा कर के, उसका मेजर पार्ट बिहार से होकर के गुजरेगा और एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से पूरा वहाँ का इकोनॉमी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप बदल जाएगा बिहार का। साथ ही और रेल मंत्री जी ने भी कहा है लगभग 10,000 करोड़ बिहार को उस कॉरिडोर के थ्रू वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाएगा। साथ ही देश भर में 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की घोषणा से बिहार के कई शहरों को सीधा फायदा मिलेगा, जहां एक्सपोर्ट और आसान व मजबूत होगा। इसके तहत पटना में शिप रिपेयर, जो एक अभी सिर्फ कलकत्ता में होता है शिप रिपेयर, और देश में 1% शिप रिपेयर का काम होता है, वो पटना में खुलने से वहाँ एक फैसिलिटी क्रिएट होने से वहाँ काफ़ी सुविधाएँ होंगी। 2 विषय में और चर्चा करना चाहता था। एक, हम लोग बिहार से आते हैं, नॉर्थ बिहार से आते हैं और वहाँ बाढ़ की समस्या लगातार रही और पिछले बजट में केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार कोसी नदी हमेशा जाना जाता था सौरों के लिए, अभिशाप के लिए। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो सांसद लोगों के लिए घर बनाया गया है उसमें एक का नाम कोसी रख दिया गया है। कोसी भी किसी अच्छे भाव से नहीं देखा जाता था और उस बाढ़ के काम को, जो प्रॉब्लम था उसको मिनिमाइज करने के लिए पिछले बजट में कोसी पे, जो वेस्टर्न कोसी है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी के लिए सरकार ने, भारत सरकार के बजट में ये प्रोविज़न किया गया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें काम शुरू हो गया। जो 35 किलोमीटर नेपाल में कैनाल को लाइनिंग करना था उस पर काम शुरू हो गया। पहली बार बिहार के फ्लड को एड्रेस किया जा रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में बिल्कुल बिहार का जो नॉर्थ बिहार है जिससे इतना बड़ा माइग्रेशन हो जाता है उसमें काफ़ी मिनिमाइज होगा ये जो फ्लड का। एक प्रॉब्लम तो नेपाल में हाई डैम बनने से का है, जब तक वो नहीं बनता है इस सब इनिशिएटिव से बिहार का पूरा जो उत्तर बिहार है उसमें बाढ़ की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, सुधार आ रहा है जो काम शुरू हुआ। एक और विषय जो मैं देख रहा था चुनाव में, मैं चुनाव की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी बिहार में ही चुनाव हुआ है हाल में, और बिहार चुनाव में देखा, हम लोग मिथिला क्षेत्र से आते हैं कि यहाँ कांग्रेस के एक नेता गए अब मखाना के तालाब में कूद गए जाकर, अब मखाना के तालाब में कूद गए कि खेती कैसे होती है वो सीखने के लिए खेती कैसे होती है। अब मखाना के तालाब में कूद करके किसान के साथ खड़े हो गए कि कैसे फोटो खिंचाने के लिए, और तो कोई मतलब था नहीं, फोटो खिंचाए, अखबार में डाले। आज तक उस मखाना किसानों के लिए, जो गरीब मखाना किसान है उसके लिए कुछ नहीं किया। इसी एनडीए और मोदी जी की सरकार ने मखाना को, मखाना बोर्ड, पहला बोर्ड बिहार को मिला मखाना बोर्ड में, और आज मखाना बोर्ड फंक्शनल हो गया है। दरभंगा में एयरपोर्ट है, पूर्णिया में एयरपोर्ट है। अब आप लोग मखाना खाते हैं कि मुझे नहीं पता,
लेकिन अगर मखाना खाते हैं तो मखाना सिर्फ मिथिला में होता है, सिर्फ मिथिला में मखाना होता है और मखाना सिर्फ मिथिला में होता है। और आज उसका मखाना बोर्ड बनने से, फंक्शनल होने से, जो मोदी सरकार ने किया, जो एनडीए सरकार ने किया है, आज तक वो मखाना जो अति पिछड़ा समाज के लोग, गरीब लोग पानी में जा कर के काम करते थे, उसके लिए नहीं सोचा, फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं किए। और आज मखाना बोर्ड वहाँ फंक्शनल हो गया। अब मखाना बोर्ड के शुरू होने से उसको एक मार्केट, उसको टेक्नोलॉजी, सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो रहा है। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से इस बजट के पक्ष, कहाँ से अमेरिका जाएगा, मखाना कहाँ आएगा? मखाना ट्रेड डील जो हुआ है, इस ट्रेड डील में, इंडो यूएस ट्रेड डील में मखाना जाएगा। हमारे दरभंगा पूर्णिया से अमेरिका मखाना जाएगा और वहाँ के स्टोर में ऑलरेडी मखाना मिलता है। अब ये चेन इफेक्ट होने से पहली बार मखाना के लिए और मखाना किसानों के लिए इस सरकार ने इतना बड़ा काम किया है। अब उसको रूट भी मिल गया, उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट भी है, अब कार्गो सिस्टम से देश दुनिया में मखाना जा सकता है। वो सारा चेन क्रिएट हो गया है। तो जो पिछले बार के बजट का इम्पैक्ट था वो बिहार के ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस बार के बजट में जो प्रोविज़न किए गए हैं, खास करके टूरिज्म सेक्टर में, मुझे लगता है बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। काफ़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को मिलेगा। स्किल में जो कितना काम होगा, बिहार में जो यूथ है उसको अगर ट्रेंड करके हम लोग करते हैं तो उनका हर एक जगह उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नाउ श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। अरे वाह सर, ये this is really strange because every time I get an opportunity to speak, you are always on the chair. हाँ? अभी सौभाग्य समझू या भाग्य समझू मैं नहीं बता सकती। मैं संजय जी से कहना चाहती हूँ कि मखाना आप भेजिए, मगर हम लोगों को पॉपकॉर्न खाना पड़ेगा। अभी जो डील हुआ है पॉपकॉर्न की जगह मखाना ले ले, बदल गया। Sir, I'm not a numbers expert, but there are some basic queries that I have, which I think are important, and I need some clarifications. My first query is, what percentage of the budget has been allocated for job creation of 3.1 crore unemployed youth? I believe a lot of promises have been made to this sector and this section of the population. My second query is, what are the provisions made for 76% educated unemployed women in the budget? My third query pertains to the field I am a member of, Indian entertainment industry. This industry is not only one of the largest contributors to the economy, but also has some of the highest taxpayers in the country. Additionally, they are the true cultural ambassadors internationally of the country. Despite these contributions, the entertainment tax and GST levied on films remain among the highest in the world. Through you, sir, I'd like to know what provisions have been made in this budget to support its growth. Otherwise, we'll only be watching films and television programs from the rest of the world except India. Because today the industry is in such a bad condition, it is very, very difficult for them to fund a project which can come on OTT or which can come on the cinema theaters. My fourth query, sir, is our senior citizens, who are the pillars of the society, surviving on a meager 200 rupees a month for those aged between 60 and 79, and 500 rupees for those over 80. This was under Indira Gandhi National
old age pension scheme. With budget 2026, keeping allocations frozen, letting inflation silently erode their dignity and security, इस तरह से भारत का विकास तो नहीं होने वाला है सर. And this is the second time I'm saying the same thing. Last year I had repeated the same thing and I'm repeating it again, hoping that I will be heard. Thank you. Thank you, Sri Chaudhry Mohammad Ramzan. मैं बजट 26-27 पर बोलने जा रहा हूँ. जब मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर वाहिद एक रियासत है सारे इस कंट्री में जहाँ का बजट दो जगह बनता है. एक बजट जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर दिया जिसमें यूटी का भी बजट था, और दूसरा बजट जो हमारी असेंबली बनाती है, और हमारी असेंबली ने अभी जो बजट वहाँ पर बनाया JNK में 1,27,767 रुपये का करोड़ का बजट था, जिसमें करीबन 80,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर थे. और पार्लियामेंट की तरफ से जो ये बजट अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया यहाँ पर, वो करीबन 43,000 करोड़ का है. मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से, जो बदकिस्मती से यहाँ पर है भी नहीं, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट ईयर भी हमारा ये जो यूटी का बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 43,000 करोड़ रखा था. क्या वजह है कि इस साल भी इसको उसी पर रखा गया, जबकि बाकी स्टेट्स में करीबन 12, 13, 14, 18, 19, 20% तक बढ़ा दिया है एलोकेशन. लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर का जो बजट इस पार्लियामेंट से बना, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया, वही रखा गया जो लास्ट ईयर था. हालांकि सब ये जानते हैं कि महंगाई ने आम लोगों का कमर तोड़ दिया है. कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हाई हो गया है, डॉलर का कीमत रुपए के मुकाबले में कितना बढ़ चुका है. और ये क्या नाम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, कि ये जो इन्होंने ये 43,000 करोड़ का बजट रखा यूनियन टेरिटरी के लिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए, तो इसको बढ़ा दें उनकी ज़रूरियात के मुताबिक. और जो स्टेप अप आपने दूसरे स्टेट्स में दिया है, वही स्टेप अप हमें भी दे दीजिए. मुझे याद है कि जिस वक्त 370 तोड़ दिया गया, इसी पार्लियामेंट ने तोड़ दिया गया 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की वहाँ पर, उसमें ये कहा गया था कि ये हम इसलिए ये तोड़ रहे हैं कि एक तो हम यहाँ पर डबल रोड इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर के मुल्कों से लोग आएंगे, रियासत जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और रियासत और मरकजी हुकूमत भी जो भी है दिल खोल कर वहाँ पर पैसे दे देगी ताकि डेवलपमेंट हो जाए. दूसरा उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि ये जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जो उस तूफान में निकल गए, अब मुल्क के दूसरे शहरों में रहते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इनको वापस बसाएंगे अपने अपने ठिकानों पर, अपने अपने घरों में. लेकिन क्या किया इस सरकार ने, उन्होंने उनकी जो एग्जाइल थी कश्मीरी पंडित्स की, उनको परमानेंट किया. कोई नहीं बसने गया उधर वापस जब से ये बीजेपी की सरकार आई है 2014 में. और इसी तरह तीसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियाँ दे देंगे, 1 लाख नौकरी हम आउट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर दे देंगे और 4 लाख हम प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे. कहाँ गई वो नौकरियाँ, कहाँ है वो नौकरियाँ जिसका वादा किया गया था. और इसके बाद ये भी कहा गया था 370 के तोड़ने के वक्त कि इससे रियासत में मिलिटेंसी खत्म होगी. मैं इस हवाले से पूछना चाहूँ, क्या वो मिलिटेंसी खत्म हो गई? अभी आपका लास्ट ईयर हुआ पहलगाम वाक़ा सबको मालूम हुआ. हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने खून के आंसू बहाए जिस वक्त वो वाक़ा हुआ, और हमने कंडेम किया, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने कंडेम किया. रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हर गली, हर कोचा, हर बाजार, हर शहर में निकले सड़कों पर और उस एग्ज़ाम को कंडेम किया. लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मिलिटेंसी ख़त्म हो गई?
आपने तो मिलिटेंसी को उस हद तक तरह दे दी कि पाकिस्तान के साथ भी आपने एक जंग भी लड़ी। तो मैं यहाँ पर ये दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, उस जंग के नतीजे में क्या हुआ, एक को हर एक रियासत जम्मू कश्मीर के एक इंसान को अब सस्पेशन की नज़रों से देखा जाता है। मेरी गुजारिश होगी इस हाउस से, इस सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो सस्पिशन से आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं उसकी तरफ वो छोड़ दीजिए। हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी मुल्क के इतने ही सिटीजन हैं, वही हक रखते हैं जिस तरह बाकी मुल्क के लोग रखते हैं। और हमारा प्रेडोमिनेंटली हमारा कश्मीर का रीजन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हुआ है। प्रेडोमिनेंटली आबादी भी जो है हमारी मुस्लिम आबादी है। हमारा मज़हब, हमारा कुरान कंडेम करता है वायलेंस को। हमारे कुरान में ये अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी आदमी जो बेगुनाह इंसान का कत्ल करे वो इंसानों का कत्ल करता है। इन्नमा कत्ल नफ्स बिगारी नफ्स इज़ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा फकतल नास जमीअन वमन अहया फकअन्नमा अहयल नास जमीआ। ये अरबी में है, कुरान में लिखा है कि कोई भी ये निहत्ता इंसान जो होगा, अगर कोई भी उसको कत्ल करेगा तो ये सारे इंसानियत का कत्ल है। और जो कोई इंसान किसी के साथ भलाई के साथ पेश आएगा, उसको बचाएगा, तो वो सारे इंसानियत की भलाई करता है। लिहाजा मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो इसके बाद सलूक हुआ, खासकर लेबरर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और जो ट्रेडर्स हमारे हैं उनके साथ जो होता है, ये हाउस इसको कंडेम करे। और मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि एक मैसेज चला जाना चाहे। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हम मिले उससे, तीनों मेरे जो कुलीग्स यहाँ पर है, और उन्होंने हमें वादा दिया था कि मैं इसमें ज़रूर एग्ज़ाम का, और उन्होंने किया भी, उससे चीफ मिनिस्टर साहब ने किया। लेकिन अभी भी फिर भी ज़रूरत है उस ये जो दहशत फैलाई गई बाकी के रियासतों में, उसको किसी न किसी तरह तोड़ लाए। जियो टैगिंग हमारी मस्जिदों की होती है। मुझे बताएं किस मंदिर या किस गुरुद्वारा का कश्मीर में जियो टैगिंग हो गई, किस ज़मीन में है? रोज़ पटवारी आते हैं, मस्जिदों का पूछते हैं, इमामों का पूछते हैं, आधार कार्ड लाओ, थाने पर जाओ। मेरे ख्याल में ये किसी भी शख्स के मजहब में एक खुली सी मज़ाहमत है। मैं चाहता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन साहब से मेरी ये गुजारिश है कि इस सिलसिले का ये नोटिस ले लें। तो दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी आप सारी कंट्री के नज़रों में आया होगा, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइज हुआ, नीट के तरफ से वहाँ पर ये MBBS स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई और नीट ने उनको क्वालिफाई करवाया। लेकिन इतना हंगामा उधर हो गया तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, मेडिकल कॉलेज भी खत्म ही हो गया। क्या ये ऐसा होना चाहिए? हालांकि कश्मीर के लोगों ने कभी नहीं ये कहा। अब लॉ यूनिवर्सिटी पर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन हमने कभी नहीं कहा IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, AIIMS जम्मू में है। हमने कभी ये नहीं कहा ये कि हम चाहते, हम सोचते हैं, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि जम्मू हो या कश्मीर हो एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है जिसकी तरफ हम इससे चलते हैं? मैं इसमें नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा पोटेंशियल जो है 22,000 करोड़ का है। अभी तक हमने टोटल टैप जो किया है 2,000 करोड़ का है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास NHP के साथ काफ़ी टाइम से है। एक दो मिनट तो NHP से के पास है। मैं चाहता हूँ कि हम पावर के लिए तरसते हैं वहाँ पर। क्या ये अच्छा होता है कि जो प्रोजेक्ट हमारे रिसोर्सेज अनटैप हो वो NHP से ले ले और वहाँ पर बिजली प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आपके पास पिछले साल हजार से पड़े हुए हैं आप हमें वापस कर लीजिए, हमारी रियासत का भी भला हो जाएगा। साथ साथ में टूरिज्म के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी पहचान अगर आप किसी को कहेंगे शहर श्रीनगर दारुल रियासत जम्मू कश्मीर का शायद कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन अगर आप डल की बात करेंगे या अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वहाँ पर बात करेंगे कि सारे दुनिया के लोग जानते हैं कि ये किस हिस्से का है, हिंदुस्तान के किस हिस्से का ये है। आज जनाब डल के सामने
3000 कनाल जमीन ली जा रही है जो सीआरपी खरीदने जा रही है, और उससे सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वर्ल्ड फेमस सेंचुरी है, और ये डल गए, ये नामोनिशान खत्म हो जाएगा। मैं आपसे इंटरवेंशन चाहता हूं, इसके लिए आप मेहरबानी करके इसके लिए आप वाज़ह हिदायत दे दें। और साथ में सब बस सर, आई एम कंक्लूडिंग, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। आई एम कंक्लूडिंग, जस्ट कंक्लूड। सर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, गुलमर्ग है, गुलमर्ग पहलगाम है, और इसी तरह उस पर करोड़ों रुपए की है, उसको वो फिर से बढ़ाए। मेरी गुजारिश इसकी तरफ भी तवज्जो दिए। शुक्रिया सर। नेक्स्ट स्पीकर इज श्री जी.के. बसार। Sir, I rise to support this budget on behalf of my party, sir. This is the 9th consecutive union budget of the Honorable Finance Minister. I congratulate the Honorable Finance Minister, sir. Sir, my party feels that this budget lays a firm foundation for the next quarter century, sir. We also feel that the budget is not an exercise in short-term populism, sir. It is a vision document rooted in structural reform, sustained capital expenditure, and long-term productivity. For the 11th consecutive year, public capital expenditure has been expanded, now touching 12.12 lakh crore, which is an unmistakable signal that this government is believing in building assets. Sir, I would like to place on record that the Tamil Nadu emerges as one of the best beneficiaries and central pillars of this Union Budget 2026. Sir, the budget explicitly recognizes Tamil Nadu as India's strategical, industrial and economic engine. In 2026-27 alone, Tamil Nadu government has received 6.25 lakh crores in tax devolution, backed by sustained grant and long-term interest-free capital assistance from the center. Sir, this is a cooperative federalism in action, not in words, but in resources. Sir, Tamil Nadu's strength, I would say, in manufacturing, export, skill, sports and technology is actively leveraged in this budget. The announcement, sir, especially for a rare earth corridor linked to a 7,280 crore permanent magnet scheme is a strategic breakthrough, sir. Tamil Nadu's monetized rich coastal sands gives it a natural edge in reducing India's foreign dependence on critical minerals. This directly strengthens EV manufacturing, renewable electronics, defense production, and all sectors where Tamil Nadu already is doing well. Sir, similarly, sir, India's Semiconductor Mission 2.0, I would like to say, allows Tamil Nadu to move beyond assembly into design materials, equipment, and intellectual property. With over around 41% of India's electronic exports originating from Tamil Nadu state, the shift of value chain is very transformational. Sir, the expansion of electronic components manufacturing scheme, chemical park, high-tech tool rooms, container manufacturing, and revival of 200 legacy industrial culture will protect existing jobs while creating a new high-skill employment around Chennai, Hosur, Coimbatore, Tirupur, Salem, and beyond. Sir, I would like to thank the government for rail speed corridors for the state Tamil Nadu, sir. Sir, ports at Chennai, the Kamaraj port in Ennur and Vavu Chidambaran port in Thoothukudi gained from coastal shipping incentives, sir. Container manufacturing and port-led industrialization, lowering logistic costs and strengthening exports, sir. Sir, this budget demonstrates deep sensitivity of Tamil Nadu's agrarian and coastal
realities. The coconut promotion scheme, I like to press upon today's needs, sir. Cashew and cocoa machine, fisheries expansion across 500 reservoirs amid reservoirs, and export-linked incentives directly raise farmer and fisher income, sir. Sir, with a 1,076 long coastline, Tamil Nadu's fishing communities gain from better value chains, reduce post-harvest losses, and global market value, sir. Sir, to complete, the budget truly empowers women from Lakpati Didi expansion, sir. Sir, very important, Adichanallur among national developed archaeology has been included in the eco-tourism at Pulicat Lake, and regional medical tourism hubs bring global visibility to the Tamil Nadu Tamil language, its culture and sustainability, sir. With these words, sir, I once again congratulate the Honorable Finance Minister for her 9th budget and thank the Honorable Prime Minister for his unwavering vision of Viksit Bharat 2047. Thank you, sir. Thank you. Sri Randeep Singh Surjewala. थैंक यू सर। चेयरमैन सर, आदरणीय चिदम्बरम जी कह रहे थे कि शायद रिफॉर्म एक्सप्रेस डीरेल नहीं हुई। मैं केवल उनकी एक बात से असहमत हूँ। बजट की रिफॉर्म एक्सप्रेस तो प्लेटफॉर्म पर ही डीरेल हो गई। यस, भारी भरकम शब्द, बड़बोली बातें, शेख चिल्ली के दावे, असलियत कुछ नहीं, वही ढाक के दो पात। शायद इसलिए शेयर बाजार से इन्वेस्टर्स तक, विदेशी निवेशकों से निजी निवेश तक, अर्थशास्त्रियों से समाजशास्त्रियों तक, सबने इस बजट को मम्बो जम्बो बजट बताया, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सर, बजट का आकलन करें चेयरमैन सर, तो एक बात जरूर समझ में आई। एक बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य जादूगरी की बात कर रही थी कि हमारी वित्त मंत्री जादूगर भी हैं, वो जादू करना भी जानती हैं। ये इस बजट में पहली बार पता चला, क्योंकि उन्होंने गांव, गरीब, किसान, सामाजिक न्याय सबको जादू से गायब कर दिया बजट से। कुछ मिला ही नहीं जब हम तलाश कर रहे थे। ये बजट जो है, ये गांव, गरीब, किसान और सामाजिक न्याय की हकमारी का बजट है। इसका दूसरा नाम होना चाहिए कटौती बजट, इसलिए कि ऐसा लगता है कि गांव, गरीब, किसान और सोशल वेलफेयर को लेकर ठहाके लगा लगा कर ये कहा जा रहा है सब कुछ काट डालेंगे। एक जुमला होता था टेलीविजन का, ये कह रहे हैं सब कुछ काट डालेंगे, क्योंकि बजट का सार है, अखबार में राशिफल होता है ना सर, बजट का इसका सार है कटौती और असमानता का राशिफल। सच्चाई यही है। चेयरमैन सर, चिदम्बरम साहब ने बजट के कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ को लेकर बहुत सारी बातें कही, इसलिए मैं उन्हें ना दोहराकर कुछ और मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सर, असल में ये खेती और खेतीहर विरोधी बजट है। खेत खलियान के अगर नजरिए से देखें तो हिंदी की एक पुरानी कहावत है, ऊंची दुकान और जुमलों के पकवान। असली में इस बजट का यही सार है। भारी भरकम शब्द, न्यूज और टीवी हेडलाइन बनाने वाली घोषणा, प्रचार और प्रसार पर एक फूटी कौड़ी बजट अलॉट नहीं करते। मैं पढ़कर चौंक गया, आप शायद सुनकर चौंक जाएंगे। सर, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल भी बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई कोट हर, बनाने वाले किसान और कृषि क्षेत्र का फर्स्ट इंजन बताया था। बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। देश को यह बताया था कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन दे रहे हैं, मिशन फॉर पल्सेस दे रहे हैं,
मिशन फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दे रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन हाइब्रिड सीड्स दे रहे हैं, मखाना बोर्ड की चर्चा हुई, मखाना बोर्ड दे रहे हैं, नमो ड्रोन दीदी दे रहे हैं, हम भी बड़े खुश हुए। अच्छा है, किसान के लिए इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। इसकी वास्तविकता क्या है? सर, कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन में 2025-26 के बजट में आपने घोषणा की 100 करोड़ रुपए की, अच्छी बात है, पर कितना पैसा दिया और खर्च हुआ? सर, जीरो। एक फूटी कौड़ी इन्होंने सैंक्शन ही नहीं की, ना पैसा आवंटित किया ना खर्च किया, और मौजूदा बजट 2026-27 में फिर एक फूटी कौड़ी कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन को नहीं दी। दूसरी घोषणा की थी मिशन फॉर पल्सेस, बजट 25-26 में दिया 1000 करोड़, हम सब बड़े खुश हुए, किसान खुश हुए। सर, कितना पैसा दिया और कितना खर्च हुआ? जीरो दिया और जीरो खर्च हुआ, एक फूटी कौड़ी नहीं दी। हमने सोचा 26-27 में देंगे, इस बार कितना दिया? इस बार भी जीरो, 1 रुपया नहीं दिया। सर, तीसरी बड़ी घोषणा की थी मिशन फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, 25-26 में 500 करोड़ रुपया दिया, सब किसान खुश हुआ, पर कितना पैसा दिया और खर्च हुआ घोषणा के बाद? जीरो, एक फूटी कौड़ी ना अलॉट की ना खर्च की। हमने सोचा शायद 26-27 में दे दें। इस साल कितना पैसा दिया फल और सब्जियों के लिए? जीरो, एक फूटी कौड़ी फिर अलॉट नहीं की। सर, बहुत जोर से ये कहा कि हाइब्रिड सीड्स लाएंगे, किसान खुश हो जाइए, तालियां बजाइए, टेलीविजन पर डिबेट्स करवाइए। नेशनल मिशन और हाइब्रिड सीड्स लेकर आए, हम सब ने कहा अच्छी बात है। 2025-26 में कितना पैसा की घोषणा की? 100 करोड़ रुपया। 25-26 में कितना पैसा दिया? जीरो, ना एक पैसा दिया ना एक पैसा खर्च किया। 26-27 में क्या किया? जीरो, ना एक पैसा दिया ना एक पैसा खर्च किया। सर, बिहार के चुनाव को देखते हुए मेरे साथी आ गए हैं, 25-26 में मखाना बोर्ड के 100 करोड़ की घोषणा की, हम सब ने स्वागत किया, अच्छी बात है, पर मखाना बोर्ड को कितना पैसा दिया? मैं वो कागज लेकर आया हूं साथ। जीरो, मखाना बोर्ड को भी जीरो। कितना पैसा खर्च हुआ? जीरो। सर, 1 फरवरी 2025 को ये घोषणा की, 14 सितंबर 2025 तक, यानी 7.5 महीने मखाना बोर्ड ही नहीं बनाया। 15 सितंबर को ये पहली बार पूर्णिया गए, तब मखाना बोर्ड बनाने की 7.5 महीने बाद घोषणा हुई। और मखाना बोर्ड की पहली बैठक कब हुई? 11.5 महीने बाद, दिसंबर 2025 में, 13 दिसंबर को। और पैसा जीरो। तो सर, असल में क्या है? जुमलों के मखाने खिलाओ और वोट की खेती कटवाओ और उसके बाद सबको बेवकूफ बनाओ, ये इनका तरीका है। सर, बजट 2025-26 में और अब भी बात करते हैं, नमो ड्रोन दीदी की बात हुई, आपको भी दीदी से मिलवाएंगे नमो ड्रोन से, चिंता मत करिए। बड़ी बड़ी बातें हुई, 676 करोड़ रुपया के बजट की घोषणा कर डाली, खूब तालियां पिटवाई, अखबार में खबरें छपवाई। कितना पैसा दिया और कितने ड्रोन दिए? 676 करोड़ में से 576 करोड़ दिए ही नहीं, केवल 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। और इस देश की 70 करोड़ महिलाओं को कितने ड्रोन दिए? चौंकिए मत, केवल 500 ड्रोन 70 करोड़ महिलाओं के लिए। और अखबार में खबर कितनी बार छपवाई? 5000 बार। तो केवल घोषणा करेंगे, देंगे कुछ नहीं, ये इनके खुद के आंकड़े हैं। सर, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, MIS PSS, खुद कृषि मंत्री, वित्त मंत्री जी ने बार बार कहा कि जिन फसलों की MSP पर खरीद नहीं होती, उन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, किसान की उस फसल के लिए हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाएंगे। बड़ी अच्छी बात है सर, उस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का, ताकि उसका कीमत ना गिरे, और गिरे तो सरकार मदद करे, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। सर, 2022-23 में बजट था 4007 करोड़,
कम था पर था। उसके बाद 23-24 में 4007 करोड़ से घटकर हो गया 40 करोड़, यानी 1000% कम। 24-25 में बजट फिर घटकर हो गया 23 करोड़ और 25-26 और 26-27 में जीरो। सर ये जीरो सम सरकार है, ये घोषणा करते हैं और फिर बजट का आवंटन और खर्चा करते ही नहीं। सर खेती के बजट की बड़ी बड़ी बातें यहां हुई, पर 6 साल का अगर देखिए तो 2018-19 से 23-24 मैं आज ये आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखूंगा, कागज लेकर आया हूं। 1,17,000 करोड़ रुपया खेती का सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, वापस दे दिया। और 24-25 में, क्योंकि अभी फरवरी तक का आंकड़ा उपलब्ध है, 52,685 करोड़ खर्च ही नहीं किया, यानी 7 साल में खेती का 1,70,000 करोड़ वापस दे दिया, सरेंडर कर दिया। ये आपकी कमिटमेंट है किसान के प्रति? ये धोखा है हिंदुस्तान के किसान के साथ। सर एक साल देखिए इन्होंने कैसे कैसे, ये सरेंडर सरकार है। 2018-19 में खेती का बजट सरेंडर किया 21,043 करोड़, 19-20 में खेती का बजट सरेंडर किया 34,518 करोड़, 20-21 में खेती का बजट सरेंडर किया 23,825 करोड़, 22-23 में बजट सरेंडर किया 19,762 करोड़, 23-24 में सरेंडर किया 6,545 करोड़, 24-25 में अभी तक जो खर्च नहीं किया था, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, 52,685 करोड़। 1,70,000 करोड़ खर्चते नहीं और किसान की बात करते हैं। और अब जो रहा सहा बचा है फर्टिलाइजर में, इस साल सर पिछले साल के मुकाबले में 15,777 करोड़ काट लिए आपने। किसान की यूरिया में सब्सिडी में 9,670 करोड़ काट लिए। किसान के जो फर्टिलाइजर है PNK, पोटाशियम एंड फास्फोरस, उसमें 6,000 करोड़ रुपया काट लिए। ये आपकी कमिटमेंट है। और सर ग्रामीण भारत की हालत तो ये है कि 10 साल में 14-15 से लेकर और 23-24 तक जो रूरल वेजेस हैं, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें तो 1% साल की बढ़ोतरी हुई है। गरीब मजदूर खाएगा क्या और कमाएगा क्या? क्या इस बात का जवाब आप दे सकते हैं? और अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में तो किसानों और मजदूरों के हितों की बलि दे दी। सर समझौते की पहली बुलेट के अंदर यह लिखा है कि अमेरिका के खाद्य और कृषि उत्पादों के लिए देश का बाजार खोल दिया गया है। इसमें ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स हैं, यानी प्रोसेस किया हुआ मक्का। इसमें रेड सोरगम है, यानी लाल ज्वार। इसमें सोयाबीन है, सभी प्रकार के फल हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता है, कपास है। सर केवल इसी साल 2025 में ही 378 मिलियन US$ की, यानी 4,000 करोड़ की अमेरिकी कपास आपने मंगवा ली। मंडी में जाकर चेक करिए, 1,000 क्विंटल कम पर MSP से कपास बिकी। और अब 3 गुना जब आप कोटा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इस बात का जवाब क्या देंगे? और सबसे ज्यादा खतरनाक शब्द इस समझौते में है एडिशनल प्रोडक्ट्स। उसमें दूध आएगा, चीज आएंगी, गेहूं आएगा, अभी कोई नहीं जानता। जब फाइन प्रिंट आएगा तो बताएगा। और सर इसी समझौते की ये कॉपी में लेकर आया हूं। इसकी छठी बुलेट में ये भी लिख दिया कि नॉन टैरिफ बैरियर्स पर हिंदुस्तान पुनर्विचार करेगा। सर नॉन टैरिफ बैरियर है क्या? नॉन टैरिफ बैरियर किसान को मिलने वाली सब्सिडी है। आप हिंदुस्तान के किसान की सब्सिडी भी अमेरिका के दबाव में छीनना चाहते हैं। ये सरकार हिंदुस्तान की संप्रभुता से, किसान की आजीविका से समझौता कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। ये शर्म की बात है। और सर वंचित और शोषित वर्गों के लिए, खास तौर से SC, ST और OBC के लिए भी यही पैटर्न है। शर्म की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले में SC, ST, OBC का बजट केवल 76 करोड़ रुपया बढ़ाया है। बात करेंगे गरीब की, पर उसको पैसा नहीं देंगे।
सर गरीब वर्गों के सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट विभाग की हालत देखिए। बजट था 2022-23 में 11,922 करोड़, पर खर्चते ही नहीं। खर्चा केवल 7,420 करोड़, 38% खर्चा नहीं। 23-24 में बजट था 12,847 करोड़, केवल 9,510 करोड़ खर्चा, 3,337 करोड़ खर्च नहीं किया। 24-25 में 13,000 करोड़ में से 4,551 करोड़ खर्च नहीं किया। सच बात यह है कि इन 3 सालों में 43% SC, ST, OBC का बजट इस सरकार ने खर्च नहीं किया। ये किसान हो या शोषित वर्ग हो, सबकी ये हालत है। सर मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जहां देखो वहां कैंची चला देते हैं। ग्रामीण विकास का बजट 53,067 करोड़ काट दिया। शहरी विकास का बजट 39,573 करोड़ काट दिया। सामाजिक न्याय का बजट 10,000 करोड़ काट दिया। खेती का बजट 6,985 करोड़ काट दिया। शिक्षा का बजट 6,701 करोड़ काट दिया। स्वास्थ्य का बजट 3,686 करोड़ काट दिया। अरे इसीलिए आपके बारे में कहा है, झूठ से फरेब से यारी रखो, झूठ से फरेब से यारी रखो, बस बड़बोले भाषण जारी रखो। बात मन की हो या बजट की कहो, झूठ बोलो और आवाज भारी रखो। वो मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं, बस योजनाएं ढेर सारी रखो। ये झूठ की दुकान है और ये बजट जो है गरीब, किसान और खेत और ग्रामीण विरोधी है। सर इसमें फौरन दुरुस्ती की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, आम बजट पर बहस हो रही है और मैं अभी माननीय सदस्य श्री सुरजेवाला जी का भाषण सुन रहा था। किसानों के बारे में जो लफज्जेबाजी उन्होंने की है उसकी तो मैं तारीफ करता हूं, क्योंकि किसानों के बारे में वो जितना जानते हैं वो उनके नेता के यहाँ से आता है। और उनके नेता जब हरियाणा में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हित में जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा। तो जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले आदमी हैं वो किसानों के बारे में बात करें तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कई कहावतों का प्रयोग किया। मैं ज़्यादा कहावतों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन एक कहावत को वो समझते हैं मैं समझता हूं। बाकी लोग समझे कि नहीं समझे तो मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा राजस्थान के लोग समझते हैं कि छाजड़ो तो बोले चालनी बोले बिके 70 छेद। यानी सूप जो है वो इसलिए कह रहा हूं कि इनके टाइम पर जब इन्होंने राज छोड़ा उस समय जो बजट था वो 17 लाख करोड़ का था और अब 53,47,315 करोड़ का बजट है। तो ये बजट गया कहां कटौती में? वही तो इसलिए ये सारी बात करना कि वो कट गया, वो कट गया, वो नहीं कटा, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। वो हर पंचायत के हिसाब से एक सरपंच के पास जनगणना के हिसाब से डायरेक्ट सरपंच के यहाँ ट्रांसफर होता है, वो सरकार के पास नहीं जाता। इसलिए वो जो सरपंच के पास जा रहा है उसमें वो बीच में कटौती नहीं हो रही है, 15 पैसे पहुंच जाएगी वो चिंता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, राज्य का काम क्या है? राज्य से संपदा सदा धर्माय प्रयोज्या। राज्य की जो संपदा है, जो पैसा है, वो आम जनता के काम आए, जन कल्याण के काम आए, समावेशन के काम आए और सतत विकास के लिए काम आए। ये तीनों बातों पर अगर देखेंगे तो ये बजट बहुत बढ़िया है। और इस बजट में एक विशेषता यह है कि माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार ये बजट पेश किया है। 9वीं बार बजट पेश।
और इसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, नारी हस्ते यदा नीति नारी हस्ते अर्थ संचये तदा राष्ट्राय सौभाग्यम समृद्धि संचये। नारी के हित में, नारी के द्वारा अगर अर्थनीति का संचालन होता है तो राष्ट्र का समृद्धि होती है और राष्ट्र का सौभाग्य होता है। मोदी जी ने 9 बार लगातार इनको पेश करने का दिया, ये भारत के राष्ट्रीय सौभाग्य का प्रतीक। माननीय उपसभापति महोदय अभी बात कर रहे थे कि अमेरिका से जो समझौता किया उसमें भारत के किसानों का हित गिरवी रख दिया। ये हर चीज में यही बात करते, लेकिन मैं सदन को, सुरजेवाला जी, सदन को मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। व्हाइट हाउस से घोषणा हुई है कि अमेरिका ने जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था रूस से तेल लेने पर, वो पैसा वापस देगा और 40,000 करोड़ रुपए भारतीय व्यापारियों को वापस मिलेंगे। ये व्हाइट हाउस से घोषणा हुई। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हुआ है। इसलिए मोदी, हाँ वो बता रहा हूं, वो बता रहा हूं। मैंने ये बार बार ट्रम्प कर रहे थे, अभी भी करते हैं, तो मैंने उनको एक बात कही थी कि आपको ट्रम्प याद आते हैं, लेकिन आपने हमारा ट्रम्प कार्ड नहीं देखा। और वो ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमेरिका को घुटनों पर लाकर हमारा 18% करा दिया और ये 25% वापस भी ले लिया। और जो समझौता किया है, उस समझौते में न तो दूध का समझौता है, न चीज का समझौता है, न हमारे यहाँ किसान की मसाले आदि जितनी चीजें हैं उन पर एक्सपोर्ट पर 0 टैरिफ होगा। अमेरिका में 18% भी नहीं होगा। तो ये सारी बात आप करते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी 1 साल का बजट पेश करता, कुछ पंचवर्षीय योजना करते हैं। जब आए तो जड़ता समाप्त करने की कोशिश की है मोदी जी ने अर्थव्यवस्था की जड़ता समाप्त करने की कोशिश की। जब जैसे पूरा ही काम कर दिया, पूरा ही काम कर दिया वो फाइनल है। तो वो जो काम किया उन्होंने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, मुझे ध्यान है जब योजना आयोग होता था तो माननीय सभापति महोदय राज्यों के मंत्री आकर वहां योजना आयोग में दरबार लगाकर बैठ जाते थे और अपनी वार्षिक योजना मंजूर कराने के लिए आना पड़ता था। ये बार बार राज्यों की स्वायत्ता की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। राज्यों को इतनी स्वायत्ता स्वतंत्रता कभी नहीं मिली। योजना आयोग को समाप्त करके जो नीति आयोग बनाया, इसके कारण से राज्य स्वायत्त हो गए। आज राज्यों को स्वायत्ता मिली, इतना बड़ा काम परिवर्तन किया है। समाजवादी समाज की रचना में उलझ गए थे और कोटा, परमिट और लाइसेंस का राज चलता था। दोहरी मूल्य नीति थी, हम सब लोग जानते हैं। सीमेंट के 2 भाव होते थे, एक मार्केट और एक कंट्रोल पर। चीनी के 2 भाव होते थे, मार्केट और कंट्रोल पर। साहब स्कूटर, मैं जब पहली बार एमएलए बनकर आया 80 में, तो स्कूटर भी 2 मिलते थे एमएलए को, उन पर भी ब्रेक होता था। एक गैस का कनेक्शन मिलता था और एक टेलीफोन का कनेक्शन मिलता था, उनके लिए लाइन लगी रहती थी। क्या चेंज कर दिया भारत को आज, इसको नहीं देख रहे? सारा काया पलट हो गया। भारत आगे बढ़ा 11वीं अर्थव्यवस्था और उसे 30वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर छोड़ दिया। उस बात इनको ध्यान में नहीं आ रही। ये सारी बात करने के लिए अब आप जाइए, राजस्व प्राप्तियां 28 लाख करोड़ से अधिक है और राजकोषीय घाटे को 4.3% तक सीमित कर रखा हुआ है। ये इतना बड़ा काम है। और आप जब ये बात करते हैं तो सार्वजनिक जो पूंजी व्यय है वो 12.2 लाख करोड़ रुपए का है।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जाएगा, 4 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में अगर किसानों के पास चला गया तो किसान का इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? वो नरेंद्र मोदी ने किया। कुल में प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,14,523 करोड़ होगा और इन संरचनाओं से 2 करोड़ नौकरियां सृजित की जाएगी। ये बजट जो है वो बहुआयामी बजट, ये बजट 2047 को देखकर कहा गया। अरे 2047 को इसलिए देखकर किया गया है कि हम आगे की सोचते हैं, भावी पीढ़ी की सोचते हैं और भारत के भविष्य को सोचते हैं। नया इनकम टैक्स का कानून आ रहा है, सारे कानून नए आ रहे, पूरे कानूनों की जड़ता में सारे राष्ट्र को जड़ा हुआ था। उन सारे कानूनों को बदलकर आर्थिक दृष्टि से कितने बड़े सुधार किए। ये जीएसटी का जो 2 संशोधन किया, उसके बाद में कितना रुपया लोगों को बचत हुआ और कितनी जीडीपी बढ़ी, ये काम हमने इसमें किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि निर्यात प्रोत्साहन और इन सब के लिए सारा काम किया और जो समझौते किए हैं, कौन सा प्रधानमंत्री, मैं किसी प्रधानमंत्री की तुलना नहीं करता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, कौन प्रधानमंत्री है जिसको विश्व में सबसे अधिक देशों में सबसे अधिक राष्ट्रीय सम्मान मिले? वो नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च सम्मान उन देशों का। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ज्यादा संसदों को संबोधित किया है? वो नरेंद्र मोदी। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यापारिक समझौते किए हैं? वो नरेंद्र मोदी। आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम से समझौता किया एफटीए के अंतर्गत 2025 में 90% टैरिफ लाइंस पर उदारीकरण किया। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स को लाभ मिलेगा, यह मोदी जी ने किया। 18 साल तक ये नहीं कर सके। ओमान सीईपीए दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित किए। भारत के 99% चीजों पर निर्यात पर 0 टैक्स होगा, ड्यूटी नहीं होगी। टेक्सटाइल, जेम्स और इंजीनियरिंग गुड्स मजबूत होंगे। न्यूजीलैंड से एफटीए किया दिसंबर 2025 में निष्कर्षित। कृषि, फल सब्जी, मैन्युफैक्चरिंग को बाजार मिलेगा, प्रशांत क्षेत्र का गेटवे हमारे लिए खुल जाएगा। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे टीईपीए अक्टूबर 2025 में हुआ, इसमें 1 मिलियन नौकरियां सृजित होगी। यूरोपीय संघ, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहते हैं, 27 देशों के साथ एक साथ समझौता जनवरी 26 में हुआ। 96% ईयू निर्यात पर टैरिफ कट, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो को लाभ होगा और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। अभी अभी मलेशिया से समझौता हुआ है। और अमेरिका की डील के बारे में जो कह रहे हैं, अमेरिका से डील भारत मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सामरिक बात हो चाहे व्यापारिक बात हो, देश के इंटरेस्ट से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तपे पूत जीवन राष्ट्र को समर्पित। जब यूक्रेन का रूस का युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने, यूरोप ने, सब ने कहा कि रूस से क्रूड मत खरीदो, मोदी जी ने कहा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे मेरे देश की ऊर्जा का संरक्षण करना है। और वो खरीदा और खरीद के बाद में खरीदा ही नहीं, अभी पूछ लेना है तब खरीद रहे हैं ना, खरीद रहे हैं। आपको पता नहीं है, पता करिए पहले। वो भी थोड़ा सा इंतजार कर लो तो वही बता दूंगा। तो वो खरीदा और खरीदा ही नहीं, खरीद के बाद में हमारी रिफाइनरीज में शुद्ध करके, जो यूरोप हमको कह रहा था मत खरीदो, उस यूरोप को सबसे ज्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बनाया मोदी जी ने। और मोदी जी की ये अपील थी
कि यूक्रेन और रूस में जब भारतीय झंडा लेकर गए तो गोलीबारी बंद हो गई। तो इसलिए ये मोदी जी का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व आप समझिए। और जो अभी समझौता, अभी जो समझौता किया है, अभी समझौता भारत की शर्तों के आधार पर हुआ है और कोई नहीं हुआ। और बजट की जब चर्चा करते समय भी कह रहे थे कि बजट में क्या बढ़ा, क्या हुआ बजट में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्र रक्षा पहला काम है। हमारे शास्त्रों में कहा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे। तो रक्षा के बजट को बढ़ाया है 14%, 2,56,000 करोड़ रुपए ज्यादा उस पर खर्च कर रहे हैं। रक्षा का बजट बढ़ाया। और रक्षा का बजट क्यों बढ़ाया? क्योंकि सुदर्शन सिंदूर तो हो गया, सुदर्शन चक्र जैसे इजराइल ने डोम बना रखा ना, वैसे भारत की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र। और मैं कहना चाहता हूं कि सुन लें, 100 गाड़ी तक तो माफ होती है। शिशुपाल को भगवान ने माफ कर दिया था। 100 से ज्यादा गाड़ी होती है ना तो फिर सुदर्शन चक्र चल जाता है। तो कांग्रेस वालों को भी समझना चाहिए कि जितनी गाड़ी आप व्यक्तिगत रूप से निकाल रहे हो प्रधानमंत्री जी को, उतनी ठीक नहीं। व्यक्तिगत रूप से गाड़ियां निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। नीति पर, सिद्धांत पर आप आलोचना करिए, आपका करना चाहिए। इसी प्रकार में कह रहा था कि जब वो हो गया, रक्षा हो गई, उसके बाद क्या है? तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तित। उसके बाद शास्त्र की चिंता हो तो फिर शिक्षा आ गई। तो इस बजट में शिक्षा को बढ़ावा दिया है और शिक्षा के लिए ज्यादा खर्च का प्रावधान किया। फिर कृषि के लिए और प्रावधान किया, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किया। और वो प्रावधान कितना है? चिकित्सा और स्वास्थ्य। शुरू किया, खत्म करूं, एक मंत्र के बाद खत्म कर दूं। तो वो अनपढ़ वाली बात तुम जानते हैं दोनों, सुरजेवाला जी में जानते हैं दोनों अनपढ़। तो ये बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेगी। और नरेंद्र मोदी के लिए एक अथर्ववेद का मंत्र है, वो मंत्र पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भद्रमिच्छन्त ऋषिये स्वर दिस्तपो दीक्षा ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तस्मै देवा उपसन्मन्तु। अर्थात राष्ट्र उन मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ है जो अपने तप के प्रभाव से राष्ट्र को शक्ति संपन्न और गौरवास्पद बनाते हैं, जिनके ओजस्वी स्वरूप को देखकर बड़े बड़े राष्ट्र उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जैसा 42,000 करोड़ रुपए देकर अमेरिका हो गया। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। श्री सुखेंदु शेखर राय, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर कानिमोजी एनवीएन सोमू, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। ये सिर्फ स्पेशल बेंच है? नो नो नो, इट्स डिबेट। बजट फाइन। एक सर मेरा टाइम, मेरे पार्टी का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था पहले स्पीकर से, तो वो ऐड करने की रिक्वेस्ट की थी, वो काइंडली देख लीजिए। आपका 10 मिनट है, 10 मिनट्स। थैंक यू। माननीय महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 26-27 के बजट पर 140 करोड़ नागरिकों की आवाज को इस पवित्र सदन में रखने का मौका दिया। मैं देश की इकोनॉमी में और इस बजट की जो प्रपोजल्स के संदर्भ में जो विरोधाभास है, जो कंट्राडिक्शंस है, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा अपनी इन पंक्तियों के साथ। आपके भाषणों में विकास ने छू लिया आसमान, इधर महंगाई ने छीन लिया रोटी कपड़ा और मकान। अगर इंडिया बन गई है
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो किसानों नौजवानों की हालत क्यों है इतनी खस्ता? कहते हो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है हमारी, तो रुपए को क्यों लगी रोज गिरने की बीमारी? माननीय महोदय, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत की जीडीपी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, 6.7%, बहुत खुशी की बात है। पर सर यदि ये जीडीपी है बढ़िया, तो हर आम आदमी को इस जीडीपी का कितना फायदा मिल रहा है, ये मैं इसके बारे में जो कंट्राडिक्शन है वो बात करूंगा। भारत के पर नागरिक को तकरीबन $2200-2300 की नेट इनकम जो वो मिलती है, जीडीपी इनकम मिलती है। वही फिगर नामीबिया जो कि बहुत छोटा सा देश है कि लगभग $2800 है, मतलब हमसे भी ज़्यादा। हम अफ्रीकन देश लीबिया की बात करें तो $7000 है। तो सर हमारे आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी में हम लोअर मिडिल इनकम देश में आते हैं, जो एक प्रश्न पैदा करता है। सर सरकार ने 53 लाख डॉलर का बजट पेश किया, 53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पर सर ये जो रेगिस्तान में मिराज मृग तृष्णा होती है, उसके जैसा लगता है दूर से सुंदर पास से खोखला। इस 53 लाख करोड़ रुपए में 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पुराने ब्याज देने में चले जाएंगे, सिर्फ ब्याज देने में, मूल देने में नहीं। तो नेट बचा 39 लाख, उसमें पेंशन निकाल दें तो बचता है 35 लाख करोड़। और 35 लाख करोड़ को जब हम 140 करोड़ की अपनी जनता में बांटते हैं तो प्रति व्यक्ति सिर्फ 25,000 रुपये आता है, सिर्फ 25,000 रुपये प्रति वर्ष। मतलब एक मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन आते हैं उससे भी कम आता है एक हिस्से में। और इस 25,000 में हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे पाएंगे, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, नागरिकों को सुरक्षा दे पाएंगे, बिजली दे पाएंगे, पानी दे पाएंगे। ये बजट की कंट्राडिक्शन है, विसंगतियाँ हैं। इसके साथ लोन्स की बात करें, इसी बजट में जो मंत्री जी ने लिखा है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का लोन भारत पर है। और इस बजट में फिर एडिशनल 17 लाख करोड़ लोन लेने का और प्रावधान कर दिया। हम तो डेट के कालगृह में ही फंसते जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की। सर ये जो फ्री शब्द है, ये फ्री शब्द जो है हमारे लिए है या यूएसए के लिए? पहले जो भारत चीजें आया करती थी भारत में यूएसए से, जैसे वेजिटेबल ऑयल पे 45% टैरिफ था, ऑटोमोबाइल फ्लावर्स पर 60% था, नेचुरल रबड़ पर 70% था, कॉफ़ी पे 100% था, अल्कोहल पर 150% था। वो सर हमने जीरो कर दिया, फ्री कर दिया उनके लिए तो फ्री हो गया। हमारे लिए क्या हुआ सर? भारत के लिए क्या हुआ? भारत से जो एक्सपोर्ट होता था, तकरीबन सभी वस्तुओं पर जो एक्सपोर्ट होती थी ज़्यादातर पर 2% या 30% टैरिफ लगता था। ट्रंप साहब ने 50% कर दिया, अब उस कम को कम करके 18% कर दिया और बड़े हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर मुझे बचपन में एक मूवी देखी थी मैंने, आज का एमएलए राजेश खन्ना साहब की थी। उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, वो ब्रेड वाले उनके पास जाते हैं कि सर हमारा रेट बढ़ा दो। तो वो जैसे अंदाजे के तौर पे 2 रुपये था, उन्होंने कहा 3 रुपये करना है, उनकी डिमांड थी। तो राजेश खन्ना साहब मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने 4 रुपये कर दिया। पूरे प्रदेश में एजिटेशन हो गया, उन्होंने उसको बाद में कम करके 3 रुपये कर दिया, तो दोनों साइड खुश। तो सर वही हमारे साथ हो रहा है कि पहले उन्होंने 2 से 3% टैरिफ को 50% कर दिया, अब कम करके 18% कर दिया और हम खुश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए तो सर ये फ्री नहीं हुआ ना, ये तो उनके लिए हुआ। तो सर ये जो कंट्राडिक्शन है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको हमारा देश कैसे झेलेगा? सर तेल रूस से आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। जब माननीय एक्सटर्नल अफेयर मंत्री साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं माननीय वाणिज्य मंत्री बताएंगे। जब कल वाणिज्य मंत्री साहब से कल पूछा गया, वो कहते हैं माननीय विदेश मंत्री बताएंगे।
ये कौन बताएगा, ये बात नहीं समझ आ रही कि रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसको पासिंग द पार्सल खेल किया जा रहा है। सर 2025 में गुड्स इंपोर्ट $720 बिलियन का था और ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $94 बिलियन का था। और सर हमने उनको जीरो टैरिफ दे दिया, पूरा खोल दिया, और इंपोर्ट बढ़ जाएगी, भारत की इंडस्ट्री, भारत का किसान और ज़्यादा सफ़र करेगा। उसके लिए क्या प्रावधान किए गए वो नहीं समझ आ रहा। इतना बड़ा सर विरोधाभास है इसमें भी। सर अब मैं रुपए की कीमत की बात करूं, 10 साल पहले तकरीबन रुपया 60-62 रुपये के आसपास था, आज 90 रुपये पे हो गया। 50% राइज सर, 50% राइज। और पिछले 12 महीनों में मतलब एक साल में ही 3.2% फिर गिर गया रुपया। सर दक्षिणी अफ्रीका की करेंसी इस दौरान एक साल में 12 से 15% मजबूत हुई है डॉलर के मुकाबले। नाइजीरिया सर, नाइजीरिया जैसा देश की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले 11% सुधरी है। इजिप्ट की 6.7% सुधरी है। और सर दुख होता मुझे बात कहते हुए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की करेंसी भी तकरीबन 1% सुधरी है सर, और हम गिर रहे हैं। सर कैसी ये विसंगति है सर, कैसा पैराडॉक्स है। अर्थव्यवस्था मजबूत कह रहे हैं और करेंसी गिरती जा रही है। सर अब मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। एफपीआई सर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पिछले एक साल में सर 1,42,000 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया गया। यदि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उनको हम पर विश्वास क्यों नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और जब मैं नेट एफडीआई की बात करूं तो सर इसमें गिरावट आई है। $44 बिलियन का एफडीआई था हमारा 2021 में, 4-5 साल पहले 44 बिलियन, और नेट एफडीआई, अब वो नेट एफडीआई घट के सिर्फ मिलियन डॉलर $335 मिलियन रह गया सर। 96% की गिरावट, मतलब 100 में से सिर्फ 5% बच गए हैं हम सर। ये सर हमारी नेट एफडीआई की सिचुएशन है। यदि हम मजबूत हैं तो हमें क्यों नहीं हम पर विश्वास करें सर। अब सर मैं अपने कुछ किसान भाइयों की बात करूंगा। सर कृषि क्षेत्र जो कि 40% रोजगार देता है, उस जीडीपी में वो घटकर सिर्फ 16% उसका योगदान रह गया। मतलब हमारे किसान को जो देश की तरक्की का हिस्सा नहीं मिल रहा। किसान कार्ड क्रेडिट लोन जो 2021 में 58,000 करोड़ का नेगेटिव लोन था, जो देनदारी रह गई थी, वो 97,000 करोड़ की हो गई सर बैड लोन। इसका मतलब किसान दे नहीं पा रहा। सर 2015 से 23 के बीच में तकरीबन 1 लाख किसानों ने खुदकुशी की है सर। सर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में सर अभी बाढ़ आई, 5 लाख एकड़ हमारी फसल बर्बाद हो गई, 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 2,000 गांव प्रभावित हो गए सर। पर इस बजट में हम उम्मीद कर रहे थे कुछ दिया जाएगा। इस बजट में पंजाब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया सर। सर ऑपरेशन सिंदूर में सर हमारे डिफेंस ने बहुत बड़ा काम किया, और रक्षा जो समिति है हमारी, उसकी सिफारिश थी कि जीडीपी का 3% डिफेंस को एलोकेट किया जाए, लेकिन सर वो 2% ही है, और सिर्फ 30% बचता है आधुनिकीकरण के लिए सर। और हम कैसे सर मुकाबला करेंगे सर। इंडियन एयरफोर्स के 22 स्क्वाड्रन परमिटेड हैं, लेकिन है सिर्फ 31 सर। हम कैसे उनका बाहर का मुकाबला करेंगे सर। खेलें सर, खेलों के लिए कितना बजट है, 3200-3300 करोड़ का सर। सर ओलंपिक में 329 मेडल होते हैं, और यदि 3200 करोड़ को 329 मेडल से डिवाइड करें तो एक मेडल के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए एक साल के लिए दिया गया सर। वो आईपीएल के उनकी नीलामी 10-10 करोड़ की हो जाती है, और एक गेम के लिए 10 करोड़। इससे सर हम जीतेंगे ओलंपिक के मेडल। ये सर काइंडली देखना चाहिए हमें। समाप्त कीजिए सर। सिर्फ एक मिनट सर। सर शिक्षा बजट भी जीडीपी से घटा के 2.9 से 2.7% कर दिया गया सर। दक्षिण अफ्रीका में 6% है, ब्राजील में 5.6 है, चीन रूस में 4% है। सर हम कैसे करेंगे सर। स्कूल एजुकेशन में बच्चे कम होते जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। 22-23 में 25 करोड़ थे, जो 24-25 में रह के 24.69 करोड़ रह गए सर। ये कैसी शिक्षा है, कैसी ग्रोथ है हमारी, कैसी विकसित भारत है सर। धन्यवाद सर। हेल्थ बजट में सर
वो भी जीडीपी का 2.26 से घटाकर 2.07 कर दिया गया। कैसे हम लोगों को सर हेल्थ देंगे? बस सर एक आखिरी लाइन जी, मैं सर एक बस आखिरी कि जब ये सब बातें हम देखते हैं तो सर भारतीयों के दिल में क्या ख्याल आता है, वो 2 पंक्तियों में सर आप समाप्त कीजिए। अब तो दिल में कोई ख्वाब ही नहीं है, अब तो उम्मीद का सवाल ही नहीं है, अब तो नारों पर भी विश्वास ही नहीं है, अब तो अच्छे दिन आने का इंतजार ही नहीं है। निरंजन बीसी। धन्यवाद महोदय। केंद्रीय बजेट 26-27 आलोचना रे सुजोग देथिबारु आपन को धन्यवाद जनाउछि। महोदय, केंद्रीय बजेट 26-27 रे ओडिशा पाई नैराश्यजनक, कारण ओडिशार विकास पाई, पश्चिम ओडिशार विकास पाई तथा केबीके कलाहांडी बलांगीर कोरापुटर विकास पाई ओडिशा बजेट रे से भली व्यवस्था नहीं। दादन श्रमिक समस्यार समाधान पाई बजेट व्यवस्था होई नहीं। चाषी एवं चाष कृषि एवं कृषकर विकास पाई बजेट व्यवस्था नहीं। धानर एमएसपी डबल करबा पाई 3100 रु 6200 करबा पाई से व्यवस्था भी नहीं बजेट रे। एवं ग्रामांचल विकास पाई भी बजेट रे व्यवस्था नहीं। सेति पाई आमर जेहेतु ओडिशा मरुड़ी एवं बन्या बात्या मरुड़ी रे ओडिशा ध्वस्त विध्वस्त करुछि। आमर बीजेडी रो सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मान्यता देवा पाई से लड़ाई करी आसुछंती एवं स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज प्रदान करबा पाई ओडिशा रे विकास पाई आमर मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री दाबी करी आसुछंती। ता सत्वे ओडिशा को एई बजेट रे एडिशनल एलोकेशन दिया जाई नाही महोदय। शिक्षार विकास पाई महोदय 2% दिखाई बजेट व्यवस्था रे। भारत रे 93,000 सरकारी स्कूल बंद होईची एवं आमर ओडिशा रे 7,068 सरकारी स्कूल बंद होईची। सेटा पुनी आदिवासी अंचल रे, ग्रामांचल रे, आदिवासी गाँ पड़ा रे सर महोदय आदिवासी स्कूल बंद होईची। आदिवासी पिला माने एबे पाठ पढ़ारू वंचित। तो बिना आदिवासी पिला जदि पाठ पढ़ी पारिबे नहीं तेबे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास केमिति हेबो महोदय। स्वास्थ्य सेवा रे से अवस्था अछि 2% बजेट व्यवस्था एवं आमर बीएसके भलिया मागणा स्वास्थ्य सेवा ओडिशा रे मिली पारिबो नहीं। देशर 15 कोटी आदिवासी 15,422 कोटी बजेट व्यवस्था अच्छी जहाँकि 0.25% जो 0.29% एवं आमर शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी दिव्यांगजन 15,357 कोटी जहाँ मध्य 0.3%। ए भलिया बजेट रे बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर स्वप्न साकार हेबो नहीं कि धरती आबा बिरसा मुंडांकर लक्ष्य पूरण हेबो नहीं महोदय। ओडिशार टूरिज्म डेवलपमेंट पाई आमर श्री जगन्नाथ पुरी कोणार्क लिंगराज चिलिका समलेई मंदिर हरिशंकर नरसिंहनाथ गंधमार्दन पर्वत भलिया जेते अच्छी आमर टूरिज्म प्लेस पर्यटन स्थली तार विकास पाई तार सुविधा पाई मध्य बजेट रे व्यवस्था नहीं महोदय। ओडिशा पाई 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बजेट व्यवस्था नहीं। भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट बजेट रे नहीं। बलांगीर नुआपड़ा नुआ रेलवे लाइन निर्माण बजेट रे नहीं। केवल ओडिशार प्राकृतिक संपद ओडिशार मांगानीज बक्साइट क्रोमाइट कोयला आयरन ओर इतार उपरे बजेट है महोदय। आदिवासी मानकु विस्थापित करी आदिवासी मानकु तांकर जंगल जमीरु विस्थापित करी तांकु गाँव एभिक्शन करी सेठी खाली माइनिंग करदेले ओडिशा रे विकास हेबो नहीं महोदय। आमको जंगल दरकार आमको मंगल दरकार नहीं आमे भल विकास रे अछु। 7 PM मित्र 7 प्रधानमंत्री मेगा इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल रिजन सेटा भी बजेट रे नहीं महोदय। आमर ओडिशा पश्चिम ओडिशा रे बेस्ट क्वालिटी कॉटन कपा उत्पादन होउची किंतु सेठी जदि PM मित्र करा जीवो ताहेले ए जो दादन श्रमिक चालान होउची बेकारी समस्या होउची आमर युवक माने शिक्षित युवक माने नियुक्ति सुजोग पाइबे एम्प्लॉयमेंट वृद्धि हेबो ओडिशार विकास हेबो महोदय। तार परे बजेट रे ओडिशा पई AI डाटा सेंटर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रो व्यवस्था मध्य नाही एवं इतार संगे संगे आमर ओडिशा महोदय जड़ीबूटी औषध हार्बाल मेडिसिन हार्बाल प्लांट आयुर्वेद हब किंतु ओडिशा रे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हॉस्पिटल करिबार सेटा भी बजेट व्यवस्था नहीं। सेति पई महोदय ओडिशा पई एई बजेट समुद्र को संख्या पानी भलिया सेति पई ओडिशार लोक कहउचंती तुच्छाकू एते मुदी नहीं गोड़ कचाड़ू केते। धन्यवाद महोदय। जय बीजेडी जय बिरसा। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा।
not present. Dr. M. Dhanpal. Dr. Dhanpal will speak in Tamil. Okay, sir. Thank you, sir. Honorable Vice Chairman, sir, thank you for giving this opportunity to speak on the budget 2026-27. This is my maiden speech. Please give me more time to speak on this budget, sir. நான் என் உரையை துவங்குவதற்கு முன்பாக இந்த தேசத்திற்காக சுதந்திர போராட்டத்திற்காக மக்களை தூண்டி எழுப்பிய மகாகவி பாரதியார் பாடலை பாடி என் உரையை துவங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இந்நாடே, அதன் முந்தையர் 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இந்நாடே, அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே, இதை வந்தனை கூறி மனதில் இருத்தி என் வாயுர வாழ்த்தேனோ, இதை வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ. இந்த நேரத்தில் வந்தே மாதர பாடலை எழுதிய பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 150வது ஆண்டை நினைவு கூறுகின்ற வகையிலே நமது நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி தன்னுடைய உரையிலே சொல்லுகின்ற போது எனக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த பாடலை சொல்லி ஆரம்பிப்பது மிகவும் பொருத்தமாக நான் நினைக்கின்றேன். ஹானரபிள் வைஸ் சேர்மன் சார், திருக்குறள், திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறளில் படைகுடி கூழ் அமைச்சு நட்பரன் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறு, வீரமிக்க படை, நாட்டுப்பற்று மிக்க மக்கள், உணவு செல்வம், திறமையான அமைச்சர், நட்பு நாடு மற்றும் அரண் ஆகிய 6ம் சிறப்பாக உடையவன் அரசர்களுள் சிங்கம் போன்றவன் என்பது போல சிறப்பாக இன்றைக்கு பாரதத்தை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற, ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு மோடிஜி அவர்கள் அமைச்சரவையில் தமிழகத்தை சேர்ந்த நிதி அமைச்சராக 9வது முறை நிதிநிலை அறிக்கையை இந்த மாமன்றத்திலே தாக்கல் செய்திருப்பது உண்மையில் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது. வைஸ் சேர்மன் சார், தமிழ்நாட்டை சார்ந்த இந்த நாட்டினுடைய துணை ஜனாதிபதியாக இந்த மாநிலங்கள் அவையை நடத்துகின்ற ஒரு தலைவராக இங்கே எங்களுக்கு அமைந்திருப்பதும் எங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கிறது. இந்த அவையில் தமிழகத்திற்கு ஒரு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறது. புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தமிழ்நாட்டை 11 ஆண்டு காலம் நிரந்தரமாக இறக்கின்ற வரை தான் முதலமைச்சர் என்று ஆட்சி நடத்தி மறைந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் நான் ஈர்க்கப்பட்டு 69% இடஒதுக்கீட்டை இந்திய தேசத்திலேயே எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் 9வது அட்டவணையில் சேர்த்து சமூக நீதியை வித்திட்டிருக்கிற சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக மறைகின்ற வரை முதலமைச்சராக பணியாற்றி இருக்கிற மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அடையாளம் காட்டப்பட்டு இன்றைக்கு நீட் தேர்வு என்று சொன்னால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வேன் என்று தமிழ்நாட்டிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து இதுவரையில் அதை ரத்து செய்வதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத போது இதை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக கடந்த காலத்தில் 4½ ஆண்டு காலம் ஆட்சி நடத்தின புரட்சி தமிழர் மாண்புமிகு
எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் அதை பல நடவடிக்கைகள் பல கட்டத்திலே தனது ஆட்சி காலத்திலே எடுத்தும் இது முடியாது என்பதை உணர்ந்து தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கின்ற பிள்ளைகளை எல்லாம் மருத்துவர்களாக ஆக்குவதற்கு 7.5% இடஒதுக்கீட்டை தந்து தன்னுடைய திறமையால் அரசாணை வெளியிட்டு இன்றைக்கு ஆண்டுக்கு 600 மருத்துவர்களை உருவாக்கி இன்றைக்கு சமூக நீதியை வித்திட்டிருக்கிற அண்ணன் புரட்சி தமிழர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களால் இந்த அவைக்கு அடையாளம் காட்டப்பட்டு இந்த அவையில் இன்றைக்கு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மாண்புமிகு வைஸ் சேர்மன் சார், இந்த அவையில் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் பணியாற்றின இந்த அவை, பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பணியாற்றின இந்த அவை, இப்படிப்பட்ட பெரியவர்கள் எல்லாம் பணியாற்றின இந்த அவையில் எளியவனான தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்திருக்கிற என்னை இந்த ராஜ்யாக்கள் ஆளுகின்ற சபை என்று சொல்லுகின்ற ராஜ்ய சபாவில் அமர்ந்து பணியாற்றுவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்திருக்கிற அண்ணன் எடப்பாடி கே பழனிசாமி வருகிற 2026 முதலமைச்சராக வர இருக்கின்ற கடந்த 4.5 ஆண்டு காலம் இந்த தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி தந்த அண்ணன் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களுக்கு எனது நன்றியை இந்த நேரத்திலே காணிக்கையாக்குகிறேன். பொதுவாக இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி இன்றைக்கு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். பொதுவாக சொல்ல போனால் இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிற நிதிநிலை அறிக்கை மக்கள் மீது வரி சுமையை சுமத்தாத, வரியே போடாத ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை என்றுதான் சொல்ல முடியும். நான் வரவேற்கிறேன். எந்த ஒரு பொருளுக்கும் வரியை போடவில்லை, மாறாக ஜிஎஸ்டி என்று சொல்லுகின்ற வரி விதிப்பில் இருந்த 4 கட்டங்களை எல்லாம் மாற்றி ஏன் 18% வரை 17% வரை வரி செலுத்தியவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு 5% வரி செலுத்துகின்ற வகையில், கிட்டத்தட்ட 22% மேல் வரி செலுத்தியவர்கள் எல்லாம் 18% வரி செலுத்துகின்ற வகையில் 2 ஸ்லாப்களாக உருவாக்கப்பட்டு இன்றைக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் இந்த நேரத்திலே பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்திய அமெரிக்கா உறவுகளை குறித்து எல்லாம் பேசினார்கள். இன்றைக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படுகின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். 50% வரை இந்த இந்திய நாட்டிலே உற்பத்தி செய்கின்ற பொருள்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்ற பொருள்களுக்கெல்லாம் வரி உயர்வு இருந்ததை மாற்றி இன்றைக்கு அதனை 18% என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு குறைத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகின்ற நிலையை பார்க்கின்ற போது நான் உண்மையிலேயே மத்திய அரசாங்கத்தை, மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றி பேசினார்கள். இங்கே ஜிடிபி என்று சொல்லுகின்ற இந்திய பொருள் உற்பத்தி தேனிலே இருந்து கிட்டத்தட்ட 4.4%, ஜிடிபியில் 4.4% இன்றைக்கு இந்த நாடு பொருளாதார வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இதை நான் இந்த நேரத்திலே பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதே போன்று நிதிநிலை அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சிமார்ட்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற கிராமப்புறத்திலே இருக்கிற பெண்கள் சுய உதவி குழுக்களை ஆரம்பித்து அவர்கள் சுய உதவி குழுக்களின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பொருட்களுக்கு விலை கிடைக்காமல் திகைத்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் இது போன்ற சிமார்ட்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற வகையில் அவர்கள் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு எளிதாக இன்றைக்கு இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருப்பது வரவேற்கக்கூடிய ஒன்று. இதன் மூலம் நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் சுய உதவி குழுக்கள் தான் வங்கிகளிலே கடனை பெற்று பொருட்களை உற்பத்தி செய்து பொருட்களை சந்தைப்படுத்த முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் இது வழிவகை செய்ய வேண்டும். அந்த வகையிலே இதை மேன்மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும்,
விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று இந்த மாமன்றத்தில் நான் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோன்று ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் நிறைய திட்டங்கள் இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரயில்வே துறை மாண்புமிகு ரயில்வே துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே நல்ல திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார். மாண்புமிகு பேரவை துறை தலைவர் அவர்களே, இது மெய்டன் ஸ்பீச். This is my maiden speech. Please provide more time. If my time behind the limit of the time, allotted time, you can take the time from the treasury bench. Railway budget. இது 2026-27 ரயில்வே பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் 7,611 கோடி இன்றைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இது கடந்த ஆண்டை விட 14.9% அதிகம் என்று பார்க்கின்ற போது உண்மையிலேயே எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. போதவில்லை போதவில்லை என்று பலரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் இது எங்களுக்கு மிக பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது. இதிலே நான் சொல்வதெல்லாம் இங்கே புல்லட் ட்ரெயின், விரைவு ரயில், சென்னை டு ஹைதராபாத், பெங்களூர் டு ஹைதராபாத், சென்னை போன்ற 2 மிகப்பெரிய திட்டங்கள் எங்களுக்கு வந்திருப்பது பாராட்டுக்குரிய ஒன்று. தேவைகளை மட்டும் நான் சொல்லுகின்றேன். இங்கே ரயில்வே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். எங்களுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டிலே சென்னை டு கடலூர் புதிய ரயில் பாதை திட்டம் கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கும் அது நிலுவையில் இருக்கிறது. அந்த திட்டத்தை ரயில் பாதை திட்டம் ஈசிஆர் வழியாக கிழக்கு கடற்கரை சாலை மகாபலிபுரம் வழியாக அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோன்று செங்கல்பட்டிலே இருந்து மாமல்லபுரத்துக்கு ரயில் திட்டத்தை, புதிய ரயில் திட்டத்தை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மதுரை கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோன்று வந்தே பாரத் நாகர்கோவில் செல்கின்ற ரயில் தாம்பரத்திலே நின்றால் அடுத்து விழுப்புரத்திலே நிற்கிறது. அது செங்கல்பட்டு மிக முக்கியமான நகரம். அந்த நகரத்திலே நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போன்று ஸ்ரீபெரும்புதூர், கூடுவாஞ்சேரி, ஆவடி, கூடுவாஞ்சேரி போன்ற புதிய ரயில் திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இந்த நேரத்தில் மத்திய அரசுக்கு பங்கு The next speaker is Dr. Meenakshi Jain. அதே நேரத்தில் Time is up. She is speaking. Thank you, Speaker, sir. I rise to support the budget 2026 of Honorable Finance Minister. I am not an economist, but as a historian, I welcome certain features of the budget. The importance accorded to the cultural heritage of India is noteworthy. The selection of 15 archaeological sites which are to be developed as cultural destinations is an important step in reclaiming the cultural heritage of this land. No less significant is the attention given to the development of Buddhist sacred sites in the northeastern region. In addition to this tangible cultural heritage, I would like to draw attention of the Honorable Finance Minister to the equally important intangible heritage, which also needs protection and nurture. In particular, I would like to draw attention to the ancient Kshatriya tradition, the spirit of valor, which has existed alongside the notion of Brahma, the spirit of wisdom from ancient times. This ancient tradition survives in many forms even today. In Kerala, the Kalari is an ancient martial tradition believed to have originated around 300 BCE. According to tradition, 108 Kalaris were established throughout Kerala and 21 Kalari gurus were instructed in that art. Regular training was imparted in weapons, including spear, sword, shield, and bow and arrow. Several foreign travelers wrote about Kalari, including many Portuguese and Dutch. Barbosa, a Dutch explorer who visited Kerala in the 16th century, noted the extensive network of martial culture in Malabar. The practice began to decline in the 17th century when the use of guns and cannon became widespread. In 1804, the British banned the practice because of a rebellion that had taken place against them. Many Kerala Gurukuls, however, continue to teach in practice.
the practice of Kalari revived in the early 20th century. Besides Kerala, in Manipur, Thangathai, in Tamil Nadu, Silabam, the Sikh associated Gutka are some of the martial traditions that are deeply rooted in our history. They combine spiritual, physical, and cultural practices. In several parts of India, akhadas also represent a school of monastic thought and martial arts. This intangible heritage has survived through the ages despite the challenges of time. It is noteworthy that in December 2025, UNESCO recognized the festival of Diwali as an intangible cultural heritage. We need to expand the list of our intangible heritage. The finance minister is requested to note this aspect of our civilizational heritage that needs nurture and protection. As the government is giving great protection to the revival of our cultural inheritance, this intangible heritage also deserves its true place. Thank you, sir. Thank you. Dr. V. Shivdasan. Budget speech? Yes. Sir, for special budget speech? Yes, this is on budget. Sir, I will speak tomorrow, sir. Already I have... tomorrow I will. Okay, you will speak tomorrow. Then Ramjilal Suman. कल के लिए देर भी सर कर बोलेंगे सर कल कल All right. Sri Sajad Ahmad Kislo on budget. Special mention. स्पेशल मेंशन शुरू करेंगे ये तो बजट बोल रहा हूँ थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की तवज्जो जम्मू कश्मीर के मुतालिक चंद अहम मसाइल की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जिनका अजाला भी बहुत जल्द ज़रूरी है। जनाब आला, जम्मू व कश्मीर को इस वक्त संगीन माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुए बारिशों और क्लाउड बरस्ट से इंसानी जानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और हार्टिकल्चर सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई जो है बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इसके लिए हमें स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब आला GPF के तहत तकरीबन 3000 करोड़ रुपए और ठेकेदारों के भुगतान तकरीबन 400 करोड़ रुपया, मुलाजमों के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तकरीबन 1600 करोड़ रुपया अदा करना ज़रूरी है, जिससे तरक्याती अखराजात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी माली इमदाद फराम करने के लिए मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसकी तरफ ज़रूरी तवज्जो दें। जनाब आली, 16 फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियायत और इजाफी ग्रांट्स के साथ नाफिज किया जाए ताकि सेहत, तालीम, दही तरक्की के शोबों को तरजीह दी जाए। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत तरक्याती कामों में फंड्स न मिलने की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है। ठेकेदारों के बिल ज़ेर इल्तवा हैं और कई मंसूबे जो है तातुल के शिकार हैं। लिहाजा जल जीवन मिशन के फंड्स फौरी तौर रिलीज़ किए जाएँ। जनाब वाला,
मुख्तलिफ महकमाजात जैसे जंगलात, NHM, तालीम, PHE, सेहत, दही तरक्की, म्यूनसिपलिटी सपोर्ट्स और दीगर अदारों में आरजी और डेली रेटेड मुलाजमीन जो है अरसे दराज से अपनी बाकायदा तकर्री के लिए मुतालबा कर रहे हैं। NYC के हज़ारों रज़ाकारान 10 साल से भी ज़ायद अरसे से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर एक वेलफेयर यूटी है, हमारे रिसोर्सेज जो है बहुत कम हैं, लिहाजा इन मुलाजमीन की बाकायदा तकर्री के लिए खुसूसी इमदाद दी जाए ताकि इंसाफ और इंसानी हमदर्दी के तकाजे पूरे किए जाएँ। जनाब वाला, हाल ही में जम्मू कश्मीर के रेल के ज़रिए कश्मीर के साथ जोड़ा गया। इस रेल लिंक से लोगों को सफ़र करने में बहुत आसानी हुई है और ये खुश आइन बात है। मैं हाल ही में ऑनरेबल रेल मिनिस्टर ने राजौरी और पुंछ को रेल के साथ जोड़ने का ऐलान किया है। मेरी ऑनरेबल रेल मंत्री से यही गुजारिश है कि चनाब, जो कि 3 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल है, रामबन, डोडा और किश्तवाड़, इस खिते को रेल के साथ जो है जोड़ने का मंसूबा जो है तैयार किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल मिनिस्टर और ऑनरेबल रेल मिनिस्टर मेरी गुजारिश पर गौर फरमाकर जम्मू के कश्मीर के लिए माली इमदाद से धन्यवाद। श्रीमान कर्नाटपुर कायस्था, special mention. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to draw attention of the government regarding the resumption of Air India services to and from Silchar Airport in Assam. Sir, at present Silchar Airport is served by only a single private airline. This has led to acute shortage of seats, exorbitant airfares during peak periods, frequent overbooking and serious inconvenience to passengers. Silchar is not merely a district headquarters, it is the principal aviation gateway of the entire Barak Valley, serving 3 districts of southern Assam and also catering to passengers from Tripura, Mizoram, Manipur and southern Nagaland. With improved infrastructure, expanding educational and medical institutions and rising economic activity, air traffic demand from this region has increased steadily. The absence of Air India service has reduced competition, making connectivity to major metros such as Delhi, Bengaluru, Chennai, Kolkata and Guwahati both difficult and prohibitively expensive. Air India, as the national carrier, has historically played a vital role in the connecting remote and strategically important regions of the Northeast with the rest of the country. I therefore earnestly urge the government to consider the early resumption of Air India services to Silchar or alternatively the introduction of Air India or Air India Express flights under suitable route rationalization. Such a step will ease passenger hardship, enhance regional connectivity and advance the government's vision of inclusive development of the Northeast. Thank you, sir. Thank you. Honorable members, the special mention will may continue beyond 6 o'clock. Does the House has the permission to continue beyond 6? Dhanyavad. Dr. M. Tambudurai. Thank you, Vice Chairman, sir. I draw the attention of the government to a recent tragic and disturbing incident reported as society in Ghaziabad, Uttar Pradesh, where 3 minor sisters aged 16, 14 and 12 died by suicide. Preliminary reports indicate that online digital obsession they were unable to overcome. Police and media sources have indicated that the sisters were deeply involved in online task-based gaming application. Attempts by their parents to restrict mobile phone usage allegedly resulted in increased emotional distress among the minors. The heartbreaking incident recalls earlier dangerous online challenges which reportedly encouraged self-harm among
vulnerable adolescents. While investigations are going on, the tragedy exposes serious gaps in digital safety, parental awareness, and regulatory oversight. Sir, this is a national wake-up call. I urge the government of India to strengthen regulations, ensure age verification, promote digital literacy, expand mental health support, and integrate digital safety education in schools. The safety and mental well-being of our children must remain paramount. Thank you, sir. Thank you. Dr. Ashok Kumar Mittal, need for a central law to ensure accountability of public servants. धन्यवाद महोदय। मैं देश में बढ़ रही प्रशासनिक संवेदनहीनता के एक गंभीर मुद्दे को उठाना चाहता हूं। हाल में ही हमने देखा कि कैसे सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण आग लगती है और इंक्यूबेटर में रखे नवजात शिशुओं की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसी तरह शहरों में सिविक अथॉरिटीज की घोर लापरवाही के कारण कभी सड़कें धंस जाती हैं तो कभी बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्रों की डूबने से मौत हो जाती है। ऐसी हृदय विदारक घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, केवल उनका तबादला या निलंबन कर दिया जाता है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि वह पब्लिक सर्विस अकाउंटेबिलिटी एक्ट जैसा एक सख्त केंद्रीय कानून लाए। इस कानून के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और पीड़ितों को दिए जाने वाली मुआवजे की वसूली दोषी अधिकारियों के वेतन या संपत्ति से की जाए, जिससे व्यक्तिगत जवाबदेही बढ़ेगी और दंड का भय भी होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मोकारिया राम भाई, यू विल स्पीक इन गुजराती। यस सर, मैं गुजराती बोलूँगा। माननीय उपाध्यक्ष श्री, આજે હું આ ગૌરવપૂર્ણ મંચ પરથી અમારા શહેર પોરબંદરના વિકાસ સાથે જોડાયેલ એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર આપ સૌનું ધ્યાન દોરવા ઈચ્છું છું। પોરબંદર માત્ર ગુજરાતનું એક શહેર નથી, પરંતુ તે મહાત્મા ગાંધીજી અને અમારા સુદામાજીની જન્મભૂમિ છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવે છે। છતાં પણ આટલો ઐતિહાસિક અને મહત્વપૂર્ણ શહેર આજે પણ પૂરતી હવાઈ સેવાથી વંચિત છે, જે આપણા માટે દુઃખદ બાબત છે। મારી વિનંતી એ છે આપના માધ્યમથી કે પોરબંદરથી મુંબઈ અને દિલ્હી જેવા દેશના બે મુખ્ય અને મહત્વપૂર્ણ શહેરો માટે નિયમિત હવાઈ સેવા શરૂ કરવામાં આવે। મુંબઈ ભારતનો આર્થિક પાટનગર છે અને દિલ્હી દેશની રાજધાની છે। આ બંને શહેરો સાથે ડાયરેક્ટ હવાઈ જોડાણ પોરબંદરના વિકાસ માટે અનિવાર્ય છે। આજની પરિસ્થિતિમાં પોરબંદરના વેપારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, વિદ્યાર્થીઓ, નોકરિયાત વર્ગ તથા ગંભીર સારવારમાં મુસાફરી કરતા દર્દીઓ લાંબી અને મુશ્કેલ મુસાફરી કરવા મજબૂર છે। રોડ અને રેલ માર્ગે મુંબઈ કે દિલ્હી પહોંચવા માટે અનેક કલાકો ખર્ચવા પડે છે, જેના કારણે સમય, શક્તિ અને નાણાંનો મોટો વ્યય થાય છે। જે સીધી ફ્લાઇટ સેવા ઉપલબ્ધ થાય તો આ તમામ વર્ગોને નોંધપાત્ર રાહત મળે। આ સાથે સાથે પોરબંદર પર્યટનની દ્રષ્ટિએ પણ અત્યંત મહત્વ ધરાવે છે। મહાત્મા ગાંધીનું જન્મસ્થળ અને સુદામાજીની જન્મભૂમિ, સુંદર દરિયા કિનારો, પ્રાચીન મંદિરો અને ઐતિહાસિક ધરોહર અહીં આવેલ છે, પરંતુ યોગ્ય હવાઈ કનેક્ટિવિટી ન હોવાને કારણે અનેક દેશી વિદેશી પ્રવાસીઓને અહીં આવી શકતા નથી। મુંબઈ દિલ્હી સીધી ફ્લાઇટ સેવા શરૂ થવાથી પર્યટન ક્ષેત્રમાં વધારો થશે, સ્થાનિક વેપાર વિકાસ વધશે અને યુવાનો માટે રોજગારી નવો અવસર થશે। આજના યુગમાં હવાઈ સેવા કોઈ વૈભવ નથી, પરંતુ વિકાસની આવશ્યકતા છે। સરકાર ઉડાન યોજના જેવી પહેલ દ્વારા નાના શહેરોને હવાઈ નકશા પર લાવવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી ચૂકી છે, ત્યારે પોરબંદર જેવી ઐતિહાસિક અને વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિએ મહત્વની જગ્યા માટે આ યોજના અંતર્ગત ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરવીમાં સંપૂર્ણપણે યોગ્ય અને સમયોચિત નિર્ણય સાબિત થશે। હું ભારત સરકારને વિનમ્ર પરંતુ દૃઢ અપીલ કરું છું કે તેઓ પોરબંદરથી મુંબઈ અને પોરબંદર દિલ્હી વચ્ચે નિયમિત હવાઈ સેવાઓ વહેલી તકે શરૂ કરે। આ નિર્ણય માત્ર પોરબંદર વિકાસને નવી દિશા આપશે નહીં, પરંતુ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના આર્થિક, સામાજિક, પર્યટન વિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન થશે। કારણ કે પોરબંદરથી દ્વારકા અને સોમનાથ બંને ઉત્તર દક્ષિણ
100 કિલોમીટર છે. મને આશા છે કે સરકાર અમારી લાગણીને જરૂરિયાત સમજી અને યોગ્ય સહકાર હતાત્મક નિર્ણય લેશે એવી વિનંતી. આભાર. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ. શ્રીમતી સુલતા દેવ, concern over rising cyber fraud and fake call scams. Jai Sri Jagannath. Thank you, Honorable Vice Chairman sir, for giving me the permission to read out my special mention. My topic is rising cyber fraud and fake call scam affecting common people. Honorable sir, I wish to raise a serious matter of public importance regarding the growing problem of cyber fraud and fake call scams that are troubling peoples across the country and causing very financial losses. Sir, every day people are being cheated through fake bank and KYC call, fraudulent links, OTP scam, UPI and credit card frauds, and SIM swap frauds. A new and dangerous trend of so-called online arrest is also emerging, where fraudsters pose as police or investigating officers, threaten people through video calls and force them to transfer money. Many victims lost their lifetime savings within a minute. Senior citizens, women, students, and ordinary citizens with limited digital knowledge are the worst affected. Victims often face difficulty in registering complaints, delay in freezing bank accounts, and very little recover of their hard-earned money. Cyber criminals operate from different states and even outside of the country, making investigations difficult. Sir, while digital payments and online service have grown rapidly, cyber policing, trained manpower, and public awareness have not grown at the same pace. This has left common people vulnerable to fraud. I urge the government to strengthen cybercrime police units, ensure quick registration of complaints, improve coordinations with bank and telecom companies, and speed up the process of freezing fraudulent accounts. Large-scale awareness campaign in simple language are also urgently needed. Sir, digital progress should not become a source of fear. I seek urgent action to protect citizens from cyber fraud. Thank you so much, sir. Thank you. Dr. V. Sivdasan. Need to ensure social security to workers in the unorganized sector. Thank you, sir. My special mention. Need to ensure social security to workers in the unorganized sector. There is an urgent need to ensure comprehensive and enforceable social security for unorganized workers who constitute the backbone of India's economy. According to official estimate, nearly 90% of India's workforce, over 430 million workforce employed in unorganized sector, including construction workers, agriculture workers, domestic workers, street vendors, home-based workers, migrants, and gig workers. Despite their contribution of more than half of the national GDP, the vast majority remain outside any system of social protection. The periodic labor force survey and data indicate that less than 10% of unorganized workers have access to any form of social security benefit. The eShram portal, launched to create a national database, but registration has not translated into assured entitlements. Benefits such as health insurance, old age pension, maternity assistance, disability support, accident compensation, and unemployment protection remain stagnated. All allocations for social security remain insufficient. Migrant workers continue to face exclusion due to lack of portability as exposed during the COVID-19 pandemic. It is therefore imperative that the Union government should establish a right-based, adequately funded and time-bound social security framework. 12th of February, the workforce of the nation is going to organize a general strike. It should be a great success. There is a need to ensure that a strong social security network is built up so that every worker in the unorganized sector get sufficient state support for nutrition, healthcare, and shelter. Thank you, sir. Thank you for allowing me this. Thank you, Srimati Zebi Mather Isham. Thank you, Vice Chairman, sir, for the opportunity. My special mention is on the subject
need for environmental and forest clearances for the Atapadi irrigation project in Kerala. I rise to emphasize the urgent need to obtain environmental and forest clearances from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the Atapadi irrigation project in Kerala. This project was sanctioned under the Kaveri Water Dispute Tribunal Award and conclusively upheld by the Honorable Supreme Court in its judgment dated 16th February 2018. Under this settlement, Kerala was allocated 30 TMC Kaveri water, including 6 TMC for the Bhavani Basin, of which 2.87 TMC is specifically earmarked for Atapadi. This allocation constitutes a settled legal right, not a discretionary or negotiable claim. Despite this legal finality, the project continues to face procedural delays. A scientific environmental impact assessment is required for environmental clearance, which in turn necessitates the issuance of terms of reference by the ministry. Notably, the expert appraisal committee identified no technical or ecological impediments. However, the proposal was returned citing the need for interstate clearance. I urge the ministry for the prompt issuance of the terms of reference and statutory clearances, recognizing Kerala's legal mandate to utilize its allocated share from the Bhavani Basin, which is essential to ensure justice and development for the drought-prone, predominantly tribal region of Atapadi, while upholding environmental responsibility. Thank you. Thank you, Sri Chaudhry Muhammad Ramzan. I draw attention of the government to the need of preserving brotherhood, unity, and social harmony in our country. India's strength lies in its diversity and constitutional values of equality, fraternity, and justice. Any expression of hatred or discrimination against any section, caste, or community weakens our social fabric and must be firmly discouraged. I would also like to express concern with the reports of harassment faced by Kashmiri students, laborers, and traders in different parts of the country, which create fear and insecurity among innocent citizens. Such incidents are disturbing and go against the spirit of national unity. I urge the government to take appropriate steps to ensure their safety, promote harmony, and strengthen mutual respect and inclusiveness so that every citizen feels secure and equally valued in our great nation. Thank you. Dr. Fawzia Khan, concern over impact of air pollution on education. Thank you, Vice Chairman, sir. My special mention is on the concern over impact of air pollution on education. Sir, learning is impacted when the air children breathe harms their ability to think, remember, and concentrate. In our country, it is the lived reality of millions of children. Evidence is clear. Even a 1 microgram rise in PM 2.5 reduces mathematics performance by up to 16 percentage points and reading by nearly 9 points. Delhi's pollution levels are consistently far above safe limits, and air pollution steadily erodes learning outcomes. Humans do not develop an immunity to polluted air. Our bodies do not adapt. Lungs and brains suffer cumulative damage, causing poorer attention, memory, and school performance. Sir, cleaner air improves learning, proving this loss is preventable. Yet our policy remains fragmented. The national education policy fails to address how pollution and climate shocks disrupt schooling itself.
The National Action Plan on Climate Change does not treat education as a core pillar at all. Instead, we see reactive measures, school closures, early holidays, online classes without long-term planning. There is no robust data on learning losses, no continuity, plans for midday meals, and no serious investment in climate-resilient school infrastructure. Without institutional clarity and sustained investment, learning losses will continue to undermine national progress. Sir, I urge the government to look into it. Thank you, sir. Thank you, Siman. Mastan Rao Yadav Vida. Not present. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 10th February 2026. Chidambaram to rise the discussion. Sir, neither the cabinet minister nor the minister of state of finance is here, sir. Cabinet minister is sitting. Cabinet minister is sitting there, and MOS is there. MOS is there. Please continue. Where is the MOS finance? MOS finance is there. Not the Pankaj Chaudhary is not there. Pankaj Chaudhary is here. Yeah. You have to check your specs. Dekh liya. Chipet hai, sir, chipet. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'm honored that my party has asked me to start the debate on the budget. I want to first frame the scope of the debate. Under the rules and the tradition of this House, in a budget discussion, every subject, every ministry, every department for whom money is allocated and an appropriation is sought can be discussed. I think the House will agree with my framing of the scope of the debate. The first point I wish to make is the economic survey is prepared by the Economics Division of the Finance Ministry. A lot of people put on a lot of work and do a lot of research and analysis to prepare the survey. It runs to over 700 pages. The narration is about 450 pages, and the statistical appendix is about over 200 pages. I wonder whether the government and its key ministers read the economic survey. The most charitable view is that they don't care for the chief economic advisor. The uncharitable view is that while the chief economic advisor is bringing the government down to earth, what is happening around the country, I think the government and the ministers want to soar high and reach another planet as if we are not living on earth. There are a number of challenges listed in the economic survey. I'll take up only 4 challenges. Capital investment. For some years now, for almost 12 years, capital investment, gross
fixed capital formation is stuck at 30% of GDP. Net FDI in 2024-25 has collapsed to less than 0.09%. FPIs, foreign portfolio investors, are pulling out. Private investment, although companies are cash rich, is stuck at 22% of GDP. In this situation, where neither the public sector, nor the private sector, nor the foreign investor is investing in India, this government has cut capital expenditure. In the year that ended 25-26, they have cut capital expenditure by a whopping 1,44,376 crore. The centre has cut its capital expenditure by 25,335 crore, and what is worse is the state's capital expenditure, for which the centre gives advances, is cut by 1,19,041 crore. Should there not be an explanation? Why did you not give the money? Or did you impose conditions which the states can't fulfill? There must be a reason for that. No reason in the Honorable Finance Minister's speech. The second challenge is unemployment. All of us agree, all of us should agree, in our constituencies, the most number of requests is for job. Youth unemployment is 15%. Less than 25% of the workforce is in regular employment. There is a shift to self-employment, and more workers are in the agriculture sector than there were 4 or 5 years ago. Only in a country with 144 crore people, only 195 lakh, that is less than 2 crore, are employed in a factory. Manufacturing, which is largely factories, is stuck at 16% for many, many years. I'll give you an example. The PM internship scheme was touted. Last year, the finance minister made that statement. Corporate houses were persuaded to offer internship. 1,65,000 offers came. Only 33,000 were accepted. Are there no young men and women to accept an internship in big companies? Only 33,000 accepted. And of the 33,000 who accepted, 6,000 left the job. So what is wrong with the internship scheme? She touted it last year. She must explain why the scheme has totally failed this year. The third challenge is the slow growth rate. In paragraph 14 of the Honorable Finance Minister's budget speech, she said, and I'll quote that, the Reform Express is well